तो स्टूडेंट्स, अब मुझे बता दो, ऑल गुड? सुष्मिता, विनय, मनी। तो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आज पहले मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एससीएमपी का पेपर कैसा था आज का? बाय द टाइम अदर स्टूडेंट्स आल्सो जॉइंस अस इन दिस केस, जल्द से जल्द बताओ स्टूडेंट्स, आज का एससीएमपी का पेपर, फर्स्ट पेपर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस रिव्यू तो एवरेज का ही स्टूडेंट्स निकला है। तो अभी तक मुझे रिव्यूज थोड़े बहुत स्टूडेंट्स से जो मिले हुए हैं, तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी उसको जस्टिफाई किया होगा आज का पेपर को। अब स्टूडेंट्स अगला पेपर इलेक्टिव होगा, और इसी वजह से बिकॉज इट्स एन ओपन बुक पेपर और जनरली स्टूडेंट्स के टाइम बचते हैं उस इलेक्टिव पेपर को लेके, दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आज हम लोग एक पार्ट करने जा रहे हैं आपके जो एग्जामिनेशन डे का रिवीजन होगा, और दूसरा एक पार्ट मैं आपको इलेक्टिव पेपर का जो इवनिंग होगा उसमें करवा दूंगा। तो देयर विल बी टू पार्ट, सो दैट आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी की भी एक अच्छी खासी वो एक मोमेंटम मिल जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी ये होगा कि आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ पीजीबीपी के वो सारे सेक्टोरल डिडक्शंस, ऐसे देखा जाए तो ये जो नोट्स है मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, ताकि आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाए। और वो पूरी रिवीजन हम लोग सेक्टर बड़े प्रोविजन पीजीबीपी की कर लेंगे, प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। और फिर फाइनली स्टूडेंट्स वी विल देयर आफ्टर विल मूव टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग, वो पर्टिकुलर एरिया को, फिर अपना मैट और एएमटी का, एएमटी तो चलो ठीक है बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद मैट को करके ये आज के सेशन को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद
जो अगला सेशन स्टूडेंट्स होगा वो आपके ट्रस्ट टैक्सेशन, बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है, आपका टीडीएस टीसीएस असेसमेंट प्रोसीजर पेनाल्टी, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं अल्टीमेटली अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में ले लूंगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट अगर एक बार आपका हो जाए तो आप लोगों का एक बहुत बड़े लेवल का स्टूडेंट्स कवरेज हो जाएगा, एंड देन आई थिंक दैट यू विल बी ऑल कॉन्फिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। मैं स्टूडेंट्स इसके अंदर है तो थियोरेटिकली अब रिवाइज करेंगे, लेकिन अब मैं जो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो अब तक के एमसीक्यूज में होगा या क्वेश्चंस में जो होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे कि वो उसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो भी अभी तक के जितने भी एमसीक्यूज या भी जो क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल्स के, वो जल्द से जल्द डिस्कस करके हम लोग जल्दी से उसको ये करेंगे। ऑब्वियस बात होगा कि इस समय पे वो चीज़ को देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट नेवरदलेस विल ट्राई टू जस्टिफाई द सेम। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो कुछ सेक्शंस काफ़ी क्रिटिकल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो जल्द से जल्द मैं आप लोगों को एक बार करके चलेंगे, जल्दी से कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे। तो सेक्टोरल प्रोविजन स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो डिडक्शन ऑन डिपॉजिट, ये परसेंटेज ऑफ पीजीबीपी पे जो डिडक्शंस आपको मिलते हैं वो दो सेक्शन है आपके पास 33AB, मतलब कि एक पीजीबीपी को एक बेस बना के उस पर परसेंटेज लगा के उसकी डिडक्शन, दो सेक्शन है 33AB और दूसरा 3618, ये दो सेक्शन है स्टूडेंट्स। और जो अगला कैटेगरी हमारा है डिडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, जिसके अंदर ये तीन सेक्शंस लगे हुए हैं 3617A, ये बैंकिंग कंपनी का प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, फिर 44C एंड 44A, ये वाले कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप मार्क करके चलना कि नवंबर 22 के अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ये बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए सबसे पहला सेक्शन को जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अलाउंसेस स्टूडेंट्स 33AB में, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अलाउंसेस स्टूडेंट्स इन सेक्शन 33AB। अब अगर इस केस में अगर हम लोग देखें ध्यान से स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स ये टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अलाउंस में पहले क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान से देखना कि अगर तो एसएससी ने बहुत सारे टाइम पे एडजस्टमेंट के रूप में आपको बोला जाता है कि एसएससी क्या करता है कि अपनी चाय की बागान से वो क्या करता है, टी लीव्स को प्लक करता है और फिर उसको बेच देता है। तो बिना मैन्युफैक्चरिंग किए अगर डायरेक्टली वो क्या करता है, टी लीव्स को या कॉफी बीन्स को या इस तरीके से रबर प्लांट को अगर वो अपने अपने एग्रीकल्चरल जो उसका जितना भी उसका साइट है उससे अगर वो पिकअप करके उसको डायरेक्टली अगर बेच दे तो वो प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, जिसके वजह से सेक्शन 10(1) में एग्जाम्पशन दे दी जाएगी। 10(1) में एग्जाम्पशन स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा इनकम जो है दैट विल बी फुल्ली बी एग्जाम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। डू यू ऑल एग्री टू दिस वन? पूरी तरह से 100% एग्जाम्पशन स्टूडेंट्स ये मिल जाएगा। लेकिन जहां पर भी ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग का केस अगर होगा तो यहां पर स्टूडेंट्स मेन अल्टीमेटली गेम है, एंड देयर इन यू विल फाइंड दैट यहां पर मेन केस आएगा और यहीं पर वो सारे स्पेशल प्रोविजन स्टूडेंट्स आपके बैठने वाले हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना, दो हिस्सों में इसको बांटा गया। एक तो आपके असेसमेंट ईयर के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है, फिर असेसमेंट ईयर के अंदर विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बताइए क्या फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर उसको डिपॉजिट करना होगा अमाउंट को कहां पे, इन दी नाबार्ड। So within 6 months from the end of the previous year, he will have to deposit the amount where in the NABARD scheme. और एक बार वो पैसे को नाबार्ड में जमा कर देता है स्टूडेंट्स, तो फिर उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन होगी टोटल इनकम की, और उस कंप्यूटेशन में जब पीजीबीपी कंप्यूट किया जाएगा तो उसमें 33AB का डिडक्शन उसको मिलने वाला है। और 33AB की डिडक्शन के बाद आप लोगों को स्टूडेंट्स 33AB की डिडक्शन के बाद आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ पे आने वाला है आपका एक रूल नंबर 8। तो पहले देखो स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से बनेगा, कोई देखने के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करोगे स्टूडेंट्स। चांसेस है कि ये 33AB को लगा के वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल इनकम का क्वेश्चन बना के देंगे। मेंटली रेडी रहना, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स उसमें जरा भी। आप लोगों को करना क्या है, पहले ये 33AB की वो जो एडजस्टमेंट्स देंगे ना यहाँ पे, तो वो एक दो एडजस्टमेंट्स ही ज्यादा मिलने वाला आपको, एक दो एडजस्टमेंट आउट ऑफ से फॉर एग्जांपल 10 एडजस्टमेंट्स रहेंगे तो 2 एडजस्टमेंट्स इसको इसकी इंफॉर्मेशन होगी। आप लोगों को वो जो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स उसको देखना ही नहीं है स्टार्टिंग में, आपको एकदम एंड में उसको फोकस करना है। आपको स्टार्टिंग में सारे वो जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है उसको खत्म कर देना है। जैसे कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो डिसअलाउंसेस डेप्रिसिएशन का जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको करके ये आप नॉर्मल प्रोविजंस की तरफ फोकस करेंगे, और फिर एंड में जब आपका सारा वो कॉमन प्रोविजंस का इफेक्ट आप दे दोगे उसके बाद अब डिडक्शंस आपका बनेगा 33AB में
which is lower of the following two. And what is that amount, students? The amount which is deposited in NABARD, जो पैसा आपने within 6 months from the end of the previous year जो पैसा NABARD में आपने जमा किया है, वो पैसे को कंपेयर करोगे किसके साथ? with 40% of PGBP before the deduction under section 33AB. with 40% of PGBP before the deduction under section 33AB. इन दोनों को कंपेयर करके जो लोअर अमाउंट होगा स्टूडेंट्स, वो क्वालिफाई होगा एज ए डिडक्शन, और फिर उसके बाद आपको नेट अमाउंट को कंसिडर करना है, और उसको नेट अमाउंट जो भी आपका बन जाए उस नेट अमाउंट से फिर आपको रूल 8, रूल 7A और 7B को, ये जो रूल्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को वो स्प्लिट देनी है 60%, 65% और 75%। 60-40 का रेशियो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि ये आपका टी के लिए होगा, 65 और 35 का रेशियो जो होगा वो रबर के लिए, और कॉफी के लिए आपका 75-25। एक और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको कभी कभी प्रोसेस कॉफी के बारे में अगर वो बोल दें कि भाई उसके अंदर थोड़ा प्रोसेस कॉफी है अगर वाला केस अगर वो दे देंगे अगर आपको, तो उसमें 75-25 का स्प्लिट उस केस में नहीं होके उसमें 60-40 का स्प्लिट आपको करना होगा। तो प्रोसेस कॉफी का जो स्प्लिट होगा स्टूडेंट, दैट विल बी 60-40 इन दिस पर्टिकुलर केस। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द फीचर दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। एग्जामिनेशन में ये चीज ध्यान रखना। तो वो जो स्प्लिट हुआ है स्टूडेंट्स, वो आपका बन जाएगा दी एग्रीकल्चरल इनकम, और बैलेंस जो है 40%, 35% और 25% एज द केस में भी वो आपका टैक्सेबल पीजीबीपी हो जाता है। तो दैट विल बी योर टैक्सेबल पीजीबीपी इन दिस केस। अच्छा, अब उसमें से आपने वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एरिया है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का भी इंफॉर्मेशन आपको दे के रखेंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ देना पड़ेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैलेंस 40% या बैलेंस 35% या बैलेंस 25% से आप वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 72 का आप उसको सेट ऑफ करोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग उसका सेट ऑफ उसके साथ करोगे स्टूडेंट्स, और फिर एक बार सेट ऑफ हो जाए स्टूडेंट्स, उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपको अपनी फाइनल पीजीपी मिल गई है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि टोटल इनकम में ऐसी घुमाने वाले हैं। आप बोलोगे सर इसको बिफोर स्प्लिट ऑफ रूल 8 क्यों नहीं हम सेट ऑफ करते हैं? क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड जो होता है लॉसेस स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन को ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ही कैरी फॉरवर्ड होता है, और इस वजह से ही ये जो बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72 है स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली दैट रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग 35% और रिमेनिंग 25% को ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, और उसी का सेट ऑफ आप लेते हो स्टूडेंट्स। दैट एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स गोज इन फॉर। अदर हेड्स ऑफ इनकम जो होंगे वो आप कंसिडर कर लेना। उसके बाद आप सब टोटल लेके जीटीआई के बाद चैप्टर 6A, और चैप्टर 6A के बाद फाइनली स्टूडेंट्स टोटल इनकम। यहाँ पे अदर हेड्स के इनकम अगर जो हैं स्टूडेंट्स वो नाम मात्र ही होंगे स्टूडेंट्स, उसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो फार एज दी अदर हेड्स ऑफ इनकम इज कंसर्न, वो सिर्फ नाम मात्र होने वाले हैं। आपका मेन अल्टीमेटली यहीं पर गलती हो सकती है, तो इस पे बस फोकस करके चलना स्टूडेंट, इतना हिस्सा तक ही आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात, रूल 8 का जो स्प्लिट होगा वो डिडक्शन 33AB दे देने के बाद जो अल्टीमेटली बैलेंस अमाउंट आपका बनेगा, उस पर्टिकुलर बैलेंस अमाउंट से आपको ये फिर रूल 8 का स्प्लिट आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को ये 60, 65 और 75% को एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए उसको रिड्यूस करें, और बैलेंस जो आपका 40, 25 एंड 35% जो आपका बच गया है, वो बैलेंस अमाउंट को ही आपको कंसिडर करना है एज योर टैक्सेबल बिजनेस इनकम। As what students? As your taxable business income. Is that clear to all of you students? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। और वही जो बैलेंस अमाउंट होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि पिछले साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, तो वो उस बैलेंस 40%, 35 एंड 25% में से ही आपको वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को क्या करना है, एडजस्ट करना है, उसको सेट ऑफ देना है। क्लियर हो स्टूडेंट्स? इस बात को लेके कोई गलती नहीं होगी एग्जामिनेशन में। चलिए, तो जनरली ये लेवल तक का ही मुझे लगता है क्वेश्चंस बनना चाहिए अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर वो बनाते हैं तो। लेकिन कभी कभी सिर्फ 33AB स्पेसिफिक करके अगर कोई पॉइंट अगर बनेगा, तो उसमें स्टूडेंट्स ये भी आता है। क्या होगा 33AB का? एक पार्ट 2 भी है, उसकी और एक स्टोरी है 33AB की, वो पार्ट 2 के अंदर आ रहा है। और वो क्या है स्टोरी? वो है सब्सिक्वेंटली वो जो पैसा नाबार्ड में आपने जो जमा किया है, उसको सब्सिक्वेंटली आप विड्रॉ करोगे। अब विड्रॉ आपने अगर किया है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जिस साल आपने विड्रॉ किया है, अगर उस साल आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है या कम यूटिलाइज किया है, तो जो भी बैलेंस पोर्शन आपका अमाउंट है स्टूडेंट्स, वो आपका डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 33AB।
तो जो बैलेंस पोर्शन होगा, दैट बैलेंस पोर्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 33B, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो, बोलते हो कि नहीं सर हमने तो उसको यूटिलाइज किया, अच्छी बात है। तो अगर आपने उसको यूटिलाइज किया है तो देखो कि क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि ये यूटिलाइजेशन मिस यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और अगर मिस यूटिलाइजेशन का केस है स्टूडेंट्स, तो ये भी 33AB के अंदर ही इसको डीम्ड इनकम माना जाएगा। लेकिन जहां पर आपको ये बोले कि नहीं, वो नाबार्ड के पैसे से हमने उसको विड्रॉ करके हमने कुछ बिजनेस के एक्सपेंडिचर अगर हमने किए हैं, तो अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है बिजनेस के, उसके लिए अगर आपने वो पैसे को खर्च इस्तेमाल किया है, तो वो एक्सपेंडिचर पूरी तरह से डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको उसको डिसअलाउ करना है अंडर 33AB। ये डिसअलाउंस का कंसेप्ट इसके लिए डाला गया ताकि वो डबल डिडक्शन जब पैसे जमा किया था तब, और उसके बाद उसको विड्रॉ करके अल्टीमेटली वो उस रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर पे अप्लाई करता है, तो डबल डिडक्शन ना हो, इस वजह से क्या कर दिया उन्होंने, उसको डिसअलाउंस की तरफ बढ़ा दिया। एक ही तरीका है स्टूडेंट्स बचने का इसमें, और वो आपको पता ही है कि अगर लेकिन मैं वो पैसे को विड्रॉ करता हूं टू एक्वायर एन एसेट, तब जाकर अल्टीमेटली क्वेश्चन आपके सामने है, तो डिसअलाउंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो फिर किस बात के डिसअलाउंस। तो लेकिन इसमें एक टैक्स प्लानिंग वाला जो केस है स्टूडेंट, ध्यान में रखना कि वो जो एसेट हमने जो एक्वायर किया है उसका हमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या मिलता रहेगा, एंड आंसर इज यस। लेकिन इसके अपने कंडीशंस है, और वो कंडीशंस ये है स्टूडेंट्स कि 8 साल का लॉक इन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, वो उसकी 8 इयर्स की लॉक इन पीरियड होगी स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। और अगर विद इन दैट 8 इयर्स पीरियड अगर उसने उसको बेच दिया है, तो ऐसे हालात में जो डिडक्शंस आपका पहला जो बना था उतने वैल्यू का, वो डीम्ड इनकम बन जाएगी 33AB के अंदर। जो डिडक्शंस आपका पहले बना था स्टूडेंट्स, वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी अंडर सेक्शन 33AB। और उसके अलावा तो एक बार डीम्ड इनकम बन गई, तो जो डिडक्शन जितना बना था वो अब आपने उसको डीम्ड इनकम बना के वो नलीफाई कर दिया। पहले डिडक्शन मिला था, अब क्योंकि आपने वो डिफॉल्ट कर दिया, विद इन 8 इयर्स आपने वो एसेट को ट्रांसफर कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो नलीफाई हो गया एक तरीके से। और फिर हिसाब बराबर, और उसके बाद कैपिटल गेन्स की तरफ आप बढ़ोगे, क्योंकि एक एसेट की ट्रांसफर हुई है, पीजीबीपी को मैंने नलीफाई कर दिया है, जो पहले डिडक्शन दिया था उसको मैं डीम्ड इनकम बना के उसको नलीफाई करके, फिर अब वो एसेट ट्रांसफर पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयर वुड बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटल गेन्स, देयर वुड बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटल गेन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने एस्ट्रिक बना के रखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू आईसीए का पड़ा हुआ है, उसमें ध्यान रखेंगे, जहां जहां पर भी डीम्ड इनकम बना है ना 33AB में, डिफॉल्ट की वजह से जहां जहां पर भी ये डीम्ड इनकम बना है 33AB के अंदर, वहां वहां पे स्टूडेंट्स बताइए जनाब, क्या करोगे, उस डीम्ड इनकम पे आपने क्या करना है, वही 60-40, 65-35 और 75-25% का स्प्लिट लेके एग्रीकल्चरल कंपोनेंट को बाहर निकालना है, और उसके बाद जो बैलेंस पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो टैक्सेबल पोर्शन आपका माना जाएगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। द बैलेंस पोर्शन स्टूडेंट्स वुड बी द टैक्सेबल पोर्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। ये चीज ध्यान में रख के चलना। ऐसा क्यों है, बस आपको जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड के अंदर लॉजिक बताता हूं, क्योंकि प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स कि सबसे पहला हमने डिडक्शन दिया था फर्स्ट, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने उसको डिडक्शन पहले दिया था, मानते हो इसको, और डिडक्शन के बाद हमने स्प्लिट करना चालू किया था। इसका मतलब डिडक्शन भी एक तरीके से पूरा हमको तो मिला नहीं, क्योंकि डिडक्शन लेने के बाद ही मैंने रूल 8 को अप्लाई करके वो स्प्लिटिंग की है, और इसी वजह से डिडक्शन का भी कंपोनेंट में 60%, 65% या 75% क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम की तरफ बढ़ता है। और इसी वजह से जो टैक्सेबल पोर्शन है डिडक्शन का, जब आगे चल के वो डीम्ड इनकम बनेगा, तो टैक्सेबल पोर्शन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ओनली अप टू 40, 35 एंड 25% रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? सारे स्टूडेंट्स क्लियर इस बात को लेके? अगर क्लियर हो तो इसी को लेके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं अभी भी आपको मेंटली रेडी कर रहा हूं ताकि आप मेंटली रेडी रहें एग्जामिनेशन को लेके। पहला कि आपको एक टोटल इनकम का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ वो नाबार्ड में पैसा जमा किया है, ताकि उसको 33AB का इफेक्ट देने की वो बात रखेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरे एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, जहां पर ये जो पार्ट 2 हमने देखा कि सब्सिक्वेंटली पैसे को विड्रॉ करके उस पर कुछ डिफॉल्ट्स हुए हैं, तो वो डीम्ड इनकम या टैक्सेबल पोर्शन ऑफ डीम्ड इनकम कितना होगा,
ये आपसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, एंड दैट इज द ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी देयर सो फार एज दिस सेक्शन ऑफ 33AB इज कंसर्न। कोई डाउट हो स्टूडेंट तो पूछ लेना, तुरंत लाइव लेक्चर है इस वजह से, तो कोई क्वेरी अगर होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज देन आई विल नाउ प्रोसीड टू माय नेक्स्ट सेक्शन। ये 3618 का सेक्शन स्टूडेंट्स, ये आप लोग को पता होगा कि कोई फाइनेंशियल कंपनी या फिर एक बैंकिंग कंपनी अगर कंट्रीब्यूट करती है इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट, अगर स्पेशल रिजर्व में अगर वो कंट्रीब्यूट करती है स्टूडेंट्स, तो उस कंट्रीब्यूशन पे क्या होगा स्टूडेंट्स, उस कंट्रीब्यूशन पे वो डीम्ड इनकम की तरफ, सॉरी, वो कंट्रीब्यूशन पे उसको 3618 की डिडक्शन उसको दे दी जाएगी। कितना डिडक्शन मिलेगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3। अब इसमें से स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला 2 एलिमेंट है कंपैरिजन का वो सेम है एस 33AB, बस परसेंटेज का फर्क होगा, अदरवाइज सेम है। और वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया इन द स्पेशल रिजर्व ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये अमाउंट को कंपेयर करोगे किसके साथ, वहां पर हम कंपेयर करते थे विद 40% ऑफ पीजीबीपी के साथ, यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा स्टूडेंट्स वो किसके साथ होगा, 20% ऑफ पीजीबीपी उसके साथ कंपैरिजन होगा। तो बस ये चीज पर ध्यान रखना, वहां पे 40 हुआ करता था 33AB में, और यहाँ पे कंपैरिजन होगा विद 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर सेक्शन 3618। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट ही गेम है और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इस पर ही बनेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ये मान के चलो कि 3618 का क्वेश्चन हो सकता है कि एमसीक्यू लेवल पर ही रखें, और अगर एमसीक्यू लेवल पर रखेंगे तो कोशिश यहां पर होगी आईसीआई की इस लेवल पे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता के चलूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये कभी कभी बोलते हैं कि अमाउंट कितना उसने डिपॉजिट किया। एक क्वेश्चन आईसीआई का जो आया था एग्जामिनेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये आपको बोला था कि देखिए उसका जो नॉर्मल जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट का 50% वो स्पेशल रिजर्व में जमा करता है। तो कितना जमा करता है, उसके क्वेश्चंस के हिसाब से पैरामीटर लेके चलना आप लोग स्टूडेंट्स। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का 50% वो पैसा जमा कर लेता है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का 50% आप कैलकुलेट करके वो आपका पॉइंट नंबर 1 आपका मिल जाएगा वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल है पॉइंट नंबर 1 का, वो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरे केस में आपको ये दे सकते हैं, ये तो चलो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, आपको दे देंगे कि भाई पीजीबीपी उसकी इतनी थी बिफोर 3618 की डिडक्शन, तो उसका 20% आप ले लो, वो आपका सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा। और थर्ड वेरिएबल इज द रियल गेम। थर्ड वेरिएबल में नोटिस कर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स आपको लेना है। किसका आप 2 टाइम्स लोगे, पेड अप शेयर कैपिटल, जिस शेयर कैपिटल में प्लीज नोट करके चलना इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और प्लस जनरल रिजर्व। और ये डेटा जो आप लेंगे वो लिया जाएगा एज ऑन 31 ऑफ मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो डेटा स्टूडेंट्स लिया जाएगा, किस दिन का लिया जाएगा, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर का डेटा लिया जाएगा, और इन दोनों डेटा को जोड़ के जो भी 2 टाइम्स ये जो इसका अमाउंट बनेगा, उस 2 टाइम्स वाले अमाउंट को आप क्या करोगे, माइनस करोगे किसके साथ, विद द बैलेंस एज ऑन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चन आपको शायद पता होगा एग्जामिनेशन में कैसे डालते हैं, वो आपको स्पेशल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस का डेटा जो देंगे वो भी देंगे एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो डेटा आपको दिया जाएगा स्टूडेंट्स, वो डेटा भी दे सकते हैं एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर ऐसा डेटा दिया है आपको एज स्पेशल रिजर्व बैलेंस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उस लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का बैलेंस में से आपने क्या करना है, जो पैसा आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जमा किया है इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट, वो पैसे को आपको माइनस करना पड़ेगा विद द स्पेशल रिजर्व बैलेंस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। माइनस करके सीधा पहुंच जाओगे आप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, और वही डेटा आपको कंसिडर करना है हियर, और उसी को आपको फिर माइनस करना पड़ेगा विद दैट 2 टाइम्स ऑफ दैट शेयर कैपिटल एंड द जनरल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। बस इसको माइनस कर लें आप लोग, और उसको माइनस करके आपको अपना थर्ड वेरिएबल मिल जाएगा। तीनों में से कंपैरिजन करके जो लोअर ऑफ दी 3 रहेगा उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, वो थर्ड वेरिएबल को लेके ही वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रखने वाले हैं, आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यू में जो आपका बनेगा ना ऑप्शन, वो थर्ड वेरिएबल पर ही आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से वो क्वेश्चंस डालने वाले सो फार एज सेक्शन 36(1) इज कंसर्न। अब बैंकिंग कंपनी पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस पे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि इस पर चांसेस देखो ज्यादा हो सकता है कि टोटल इनकम के लेवल का क्वेश्चन बना के आपको सामने दे दें ऑन दी बैंकिंग कंपनी।
पहले मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि क्या बैंकिंग कंपनी को ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम का बेनिफिट मिलेगा। बैंकिंग कंपनी वेदर दे वुड बी सब्जेक्ट टू, कुछ स्पेशल पॉइंट ले लेते स्टूडेंट्स। क्या बैंकिंग कंपनी को, आप लोगों को क्या ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जगह मिलेगी? तो देखो 115 बी ए बी में तो मिलेगी नहीं, लेकिन क्या 115 बी डबल ए के अंदर क्या ये केस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और ऐसे केस में आपको तो पता ही है कि बैंकिंग कंपनी जो है वो ना तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन लेती है, ना कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट है यहाँ पे, तो वो तो वैसे ही नहीं ले, ना ही कोई अदर बिग डिडक्शंस का कोई केस है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्या बैंकिंग कंपनी अगर वो 115 बी डबल ए अगर जा रही है तो उसको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन अंडर सेक्शन 3617 ए, क्या वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन अंडर सेक्शन 3617 ए क्या वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 3617 ए को ब्लॉक नहीं किया गया, ब्लॉक आपके बड़े डिडक्शंस को किया गया, जैसे कि 35 एडी ब्लॉक्ड है, 35 ट्रिपल सी CCD वो ब्लॉक कर दिया है आपने, 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर वो ब्लॉक करके रख, सॉरी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में डोनेशन वाला एरिया को ब्लॉक किया हुआ है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने किया वो तो आपको मिलेगा इवन इफ यू आर फॉलोइंग द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम, लेकिन जो डोनेशन आप करते हो इन द वेरियस नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स, तो वो वाले केसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा इफ यू आर फॉलोइंग द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम। तो ये बड़े सेक्शंस जो है, और 33A भी वो भी नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाता है 115 बी डबल ए के अंदर, तो 33AB वाला भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने 33AB किया था, तो उसको भी आपको हाथ धोना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि डोनेशन जो नाबार्ड में पैसा जमा करते हो उस पैसे को जमा करने पे डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी स्टूडेंट्स अंडर द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलना। तो अगर आपको, मुझे बताइए, अगर आपको जो डोनेशन जो आपने किया है नाबार्ड में उस पे 33AB का डिडक्शन नहीं अगर दिया जाएगा, तो उस पैसे को जब सब्सिक्वेंटली आप अपने रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए अगर खर्चा करोगे, उस पैसे को अगर आप क्या कर रहे हो, अपने रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए अगर खर्चा कर रहे हो, तो उस समय पे क्या उसकी डिडक्शन दी जाएगी? द आंसर इज यस, क्योंकि डोनेशन के समय पे अंडर द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम 33AB की डिडक्शन मुझको नहीं मिली थी। तो फिर ऐसे केस में वो पैसे से अगर मैं कोई अपना रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर को इनकर करता हूं, तो मुझे उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स मिल जाएगी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है कि देखो आईसीआर घुमा सकती है आपको इस पर्टिकुलर केस में, कि आपको बोल दिया जाएगा कि जनाब ये बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम की तरफ जा रही है अंडर 115 बी डबल ए, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। तो बैंकिंग कंपनी के लिए यहाँ पर जो स्पेशल प्रोविजन अभी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसको ब्लॉक नहीं किया गया है एज फार एज व्हाट स्टूडेंट्स, एज फार एज द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम इज कंसर्न, उसको ब्लॉक नहीं किया गया एज फार एज द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम इज कंसर्न। तो क्या क्या केसेस हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग। 3617 ए ये आपका है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ्स। तो इनको जो डिडक्शन दी जाती है वो प्रोविजन के मुताबिक दी जाती है फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेथ्स। ये है आपका 3617 ए। अच्छा, अगर बैंकिंग कंपनी या फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर डिडक्शन अगर आप देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि क्या उनको फिर एक्चुअल बैड डेथ्स का डिडक्शन मिलेगा? तो दैट द आंसर इज नो, कि जब प्रोविजन के बेसिस पर अगर आपको डिडक्शन हमने अगर दिलवा दिया है तो फिर एक्चुअल बैड डेथ्स का डिडक्शन नहीं बनेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसका जो एक्चुअल बैड डेथ्स है, अगर उसका जो एक्चुअल बैड डेथ्स है इफ इट एक्सीड द टोटल प्रोविजन मेड सो फार, अब प्लीज नोट करके चलना, नीचे है वैसे आपको बता दूंगा, total provisions made so far, तो actual bad debts if it exceeded total provision made so far। अब total provision में क्या क्या कंसिडर करोगे? करंट ईयर के प्रोविजन को कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस जो अर्लियर ईयर का जो प्रोविजंस है उसको दोनों को जोड़ के आपको मिल जाएगा द टोटल प्रोविजंस व्हिच इज मेड सो फार। और फिर आपने ये एक्चुअल बैड डेट्स को कंपेयर कर देना है विद द टोटल प्रोविजन मेड सो फार, और अगर वो अमाउंट एक्सेस में अगर चला गया, इफ द अमाउंट गोज इन एक्सेस ऑफ दैट, तो वो जो एक्सेस पोर्शन होगा बैड डेट्स का वही डिडक्शंस आपको मिले।
तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में नोटिस करके चलना, आप लोगों को जानते हो क्या होगा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये बोला जाएगा कि जनाब इसको पिछले साल में हमने इतना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन दिया था अंडर 3617A। पिछले साल का आपको एक डेटा दिया जाएगा ऑफ दी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, कितना उसको प्रोविजन के आधार पर डिडक्शन दिया गया था, उसका आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन दे देंगे। वो इंफॉर्मेशन को आपको कंसिडर करना है और उसको आपको ऐड कर देना है। किसके साथ ऐड करोगे? विद द करंट ईयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसके साथ ऐड कर लेना। टोटल प्रोविजन आपका मिल गया, कंपेयर करेंगे उसको किसके साथ? विद द एक्चुअल बैड डेट्स, और दोनों में जो एक्सेस अभी होगा, ऑब्वियसली अगर बैड डेट्स अमाउंट अगर एक्सेस में अगर चला गया तो जितना एक्सेस पोर्शन है उस एक्सेस पोर्शन का ही डिडक्शन आपको 3617 में मिल जाएगा। तो 36, तो ये दोनों को पहले देखते हैं और उसके बाद जो दूसरे सेक्शंस हैं उसको कंसिडर करते हैं। तो पहले देखो सुनो, 3617A में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में बैंकिंग कंपनी को कितना डिडक्शन मिल रहा है और नॉन बैंकिंग कंपनी को कितना डिडक्शन मिल रहा है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। तो सो फार एज द बैंकिंग कंपनी इज कंसर्न, तो देखो यहाँ पे फॉरेन बैंक्स एंड अदर्स, फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेन बैंक्स 5% ऑफ द जीटीआई बिफोर 3617A, प्लीज नोट करके चलना, जीटीआई है ये 3617A में 5% किस पर आप अप्लाई करोगे? जीटीआई पे। इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस बात को लेके। क्वेश्चन के अंदर अगर उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट दो चीज को ध्यान रखना, दो चीज को ध्यान रखना। एक, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का कोई डेटा अगर होगा पिछले साल का, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के डेटा अगर होंगे पिछले साल के, आपको अदर हेड्स ऑफ इनकम का इंफॉर्मेशन दिया अगर जाएगा तो क्या करोगे उसको? तो मुझे जब डिडक्शंस निकालना है 3617A का, तो जो पीजीबीपी में कंप्यूट करूंगा, ऑब्वियसली जीटीआई तक मुझको लेकर आना है, और जो जीटीआई का 5%, तो फिर जीटीआई जब कंप्यूट करूंगा तो क्या पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को क्या मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या पिछले सालों का मुझको यूएडी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा जीटीआई लाने के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरे हेड्स के इनकम को भी कंसिडर करना पड़ेगा अपने जीटीआई लाने के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसको सबको कंसिडर करके जो मेरी जीटीआई बनेगी उसका 5%, अगर ये फॉरेन बैंक है या फिर ये वाला सेकेंड कैटेगरी है नॉन बैंकिंग कैटेगरी, इनके लिए 5% है। और अगर वो नॉर्मल बैंक्स है, बाकी जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर आपकी जो भी नेशनलाइज बैंक, अगर वो सब कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, तो उस पर आपको 8.5% का क्या है वो परसेंटेज अप्लाई करना ऑन दिस क्वालिफाइंग अमाउंट। क्या है क्वालिफाइंग अमाउंट आपका स्टूडेंट्स? जीटीआई बिफोर सेक्शन 3617A। तो उस जीटीआई बिफोर सेक्शन 3617A पे आपने वो 8.5% या 5% अप्लाई करके आपको अपनी डिडक्शंस की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक चीज रुक जाइएगा स्टूडेंट्स, इस पे 10% का एक एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक 10% का एक्स्ट्रा आपको एक एडिशनल डिडक्शन 3617A में मिलता है। वो दिया जाता है किसको? वो आपके नेशनलाइज बैंक को, जिनका अपना ब्रांच कहां पर होगा स्टूडेंट्स? इन द रूरल एरियाज। तो जो भी उन्होंने एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस जो अपने रूरल ब्रांच से जो उन्होंने दिए होंगे, जो भी एग्रीगेट एवरेज रूरल एडवांसेस जो उन्होंने उस ब्रांच से जो दिए होंगे, उसका 10% आपको कंसिडर करना। तो 10% उसका, 8.5% जीटीआई बिफोर 3617A का, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, मिल जाएगा स्टूडेंट्स क्या आपको? आपका 3617A का डिडक्शन। लेकिन प्लीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो 10% है सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियस बात है, फॉरेन बैंक्स में तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि उसका कोई रूरल ब्रांच हो, या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर होगा, या कोई एनबीएफसी होगा, उसके कोई रूरल ब्रांचेस होते ही नहीं है। तो इस वजह से उसके लिए ये डेटा इररिलेवेंट है। हमको सिर्फ और सिर्फ अदर देन फॉरेन बैंक एंड अदर देन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाकी केस में जो भी उनके अपने रूरल ब्रांचेस से जो एडवांसेस गए होंगे, उसके जो इंफॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर अबाउट व्हाट द एग्रीगेट एवरेज रूरल एडवांसेस, वो पर्टिकुलर डेटा पिकअप करना है टू गिव द एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 3617A। तो उस डेटा का 10% आपको लेना है स्टूडेंट्स, उस डेटा का 10% लेना है, वो आपका एडिशनल डिडक्शन बनेगा। और उसको किसके साथ ऐड करोगे आप? 8.5% ऑफ द जीटीआई बिफोर सेक्शन 3617।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बनेगा आपका द करंट ईयर डिडक्शन। ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आपका द करंट ईयर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 3617 है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, ये करंट ईयर के डिडक्शंस को आपने ऐड करना है विद द अर्लियर ईयर डिडक्शंस के साथ। करंट ईयर के डिडक्शंस को आपको ऐड करना विद द अर्लियर डिडक्शंस, और दोनों का कंबाइंड वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ फिर स्टूडेंट्स? विद द एक्चुअल बैड डेथ्स। और अगर वो एक्चुअल बैड डेथ्स अगर एक्सीड अगर कर जाए विद दिस कंबाइंड वैल्यू ऑफ द प्रोविजन, विद दिस कंबाइंड वैल्यू ऑफ द प्रोविजन, तो जितना भी एक्सेस पोर्शन है बैड डेथ्स का, उस एक्सेस पोर्शन ऑफ बैड डेथ्स का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअली आपने इसको समझ लिया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता के अल्टीमेटली इसको कंक्लूड करूंगा। वो छोटा पॉइंट क्या, पहले से एक बार ध्यान देना। एक और देखो, पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन स्टिकी लोन्स। ये स्टिकी लोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको बोल सकते हैं कि एक कोई ऐसा एनपीए कैटेगरी का कोई लोन है जिस पर अल्टीमेटली इंटरेस्ट इनकम अक्रू हो रहा है, तो प्लीज नोट करके चलना, जो भी ऐसे एनपीए कैटेगरी के अगर कोई लोन अगर होंगे, जो भी एनपीए कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर कोई लोन होंगे, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोन पे इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इंटरेस्ट इनकम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। 43D बोलता है उस इंटरेस्ट को हम इनकम मानेंगे किस प्रीवियस ईयर में, इन विच पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इट विल बी कंसिडर्ड एन इनकम, अर्लियर ऑफ द टू। और वो दो क्या है, जिस साल आपको वो पैसा मिला इंटरेस्ट का, उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? द ईयर इन विच द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच एवर इज अर्लियर। तो ये दो को कंपेयर करना है, किसको किसके साथ? ईयर ऑफ रिसीट, जब आपको वो इंटरेस्ट इनकम मिला है आपको, उसको आप कंपेयर करोगे द ईयर इन विच दिस इंटरेस्ट इनकम इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? दोनों में से कोई भी इवेंट अगर पहला हो जाए, उन दोनों में से कोई भी अगर ये इवेंट अगर पहला हो जाए, तो उस साल ही उसको इनकम मानी जाएगी, अदर देन दैट नो। तो आपको क्वेश्चन पे बस ध्यान दे के चलना है कि क्या ने क्रेडिट किया है उस इंटरेस्ट को, या क्या वो इंटरेस्ट इनकम उसको मिला है। अगर क्रेडिट किया होगा या उसको ये अमाउंट मिला होगा, तो फिर तब तो चलो कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो इनकम मान के उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बोला गया है कि ना तो उसको पैसे मिले और ना ही ये उसने क्रेडिट किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस ये अक्रू हो गया है उसको। तो ऐसे केस में उस इंटरेस्ट अमाउंट जो कि अक्रू हुआ है ऑन द एनपीए कैटेगरी ऑफ योर लोन, इंटरेस्ट अमाउंट जो कि अक्रू हुआ है ऑन द एनपीए कैटेगरी ऑफ द लोन, उस इंटरेस्ट अमाउंट को हम इनकम नहीं कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? दैट इज योर पॉइंट नंबर 3 इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। चौथे पॉइंट पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बैंकिंग कंपनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि ये इनको क्या करना पड़ता है, इनकी जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग जो है ना, ये बहुत ज्यादा होने की वजह से एक अलग से ये कैटेगरी बनाते हैं अपने बुक्स में, और दैट कैटेगरी इज द सिक्योरिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सिक्योरिटीज पे खरीदना बेचना बहुत ज्यादा लगा रहता है, इस वजह से स्टूडेंट्स ये कैटेगरी के सिक्योरिटी को वो अलग से क्लासिफाई करते हैं एज द सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। और अगर इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है दैट दिस इज अ सिक्योरिटी विच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो ऑब्वियस बात है कि वो सिक्योरिटी बन जाएगा आपका द स्टॉक इन ट्रेड। और अगर ये स्टॉक इन ट्रेड आपका बना है स्टूडेंट, तो फिर उस केस में भी आपको पता है कि स्टॉक इन ट्रेड की अब वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के मुताबिक अल्टीमेटली इसकी वैल्यूएशन ली जाएगी, और ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। आखिरी पॉइंट, अब ये आईसीडीएस 8 की तरफ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आईसीडीएस 8 पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 टाइम तो आईसीआई ने पूछा ही है इस पर। तो आईसीडीएस 8 बताता है आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी किस तरीके से किया जाएगा। किस सिक्योरिटी की बात हो रही है? वो सिक्योरिटी की बात हो रही है विच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, मीनिंग देयर बाय जिसको हम मानते हैं एज अ स्टॉक एंड ट्रेड। तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो प्लीज नोट करके चलना, यहाँ पे पार्ट ए ये जो है, it deals with what students? It deals with security held as stock and trade। तो ये जो सिक्योरिटी ICDS 8 उसी सिक्योरिटी को टारगेट करता है जो कि सिक्योरिटी आपने होल्ड किया है एज अ स्टॉक एंड ट्रेड।
उसके बाद इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड द शेयर ऑफ अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। प्लीज नोट करके चलना, इसका मतलब कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी को भी अगर आपने होल्ड किया है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो उस पे भी वैल्यूएशन जो बनेगा वो बनेगा एज पर ICDS नंबर 8। बट इट डज नॉट अप्लाई टू, ये किसको एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा अंडर ICDS 8, तो उसके अंदर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपके म्यूचुअल फंड कंपनी को बाहर कर दिया गया, उनके लिए ये पार्ट ए ऑफ ICDS 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, इस पे जुड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, उसको मैं एंड में क्लैरिफाई कर दूंगा आपको कि भाई बैंकिंग कंपनी के लिए फिर पोजीशन हमें क्या लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। वैल्यूएशन लेकिन देखना इस पर कैसे करोगे वैल्यूएशन एज पर ICDS 8। तो जो जब आप ऐसे सिक्योरिटी को जो कि आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जब आप इनिशियली एक्वायर जब आप करते हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसको तो एक्चुअल कॉस्ट पे आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट पे कंसिडर करना पड़ेगा। या फिर अगर वो सिक्योरिटी को अगर आपने लिया है अगेंस्ट एन एसेट, अगेंस्ट एन एसेट अगर आपने क्या किया है, वो सिक्योरिटी को एक्वायर किया है, तो उस सिक्योरिटी का जो फेयर वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू, ना कि वो एसेट जो दिया है उसकी वैल्यू, नहीं, जो सिक्योरिटी जो आपको मिला है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो बनेगा वो सिक्योरिटी का द एक्चुअल कॉस्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो ये एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो क्या वैल्यू पे बैठेगा आपके बुक्स में, वो आपको बताया गया। और फिर बाद में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन स्टूडेंट्स आपको बोला है ICDS 8 में, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होगा 31 ऑफ मार्च, और उसमें वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो यही एक्चुअल कॉस्ट को फिर आपको 31 मार्च में जो इसकी NRV बनेगी, दोनों को कंपेयर करना है, एंड देन इन दैट केस विच एवर अमाउंट इज द लोअर ऑफ द टू, वो अमाउंट फाइनली स्टूडेंट्स आपका बन जाएगा द फाइनल वैल्यूएशन अंडर ICDS 8, लोअर ऑफ द टू। अब आप बोलोगे कि लोअर ऑफ द टू में सर इसमें एक पॉइंट आने वाला, चलो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं, लेकिन ये जो आपने एक्चुअल कॉस्ट और जो NRV 31 मार्च को जो कंपेयर करना है ना स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, और 4 कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखेंगे आप लोग। वो 4 कैटेगरीज कौन सा होगा, पहले कैटेगरी में शेयर्स आता है, शेयर्स में दोनों ही एक कैटेगरी मानी जाएगी, दोनों का मतलब क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड अनलिस्टेड, सब को आप एक ही कैटेगरी मानोगे, और उन सारे कैटेगरी का आप ऐड करोगे द टोटल कॉस्ट, और उन सारे कैटेगरी का आपको NRV एज ऑन 31 ऑफ मार्च को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट बेसिस पर उनकी पूरी कॉस्ट और एग्रीगेट बेसिस पे उनकी पूरी NRV को कंपेयर करके दोनों में से जो लोअर होगा वो बनेगा फाइनली द वैल्यूएशन ऑफ दिस। उसके बाद आपके पास डेट सिक्योरिटीज भी है, डिबेंचर्स क्लासिक एग्जांपल है, तो वो एक अलग कैटेगरी बनने वाला। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो तीसरा कैटेगरी अलग है। तो अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में अगर आपको मान के चलो कि डिबेंचर्स अगर कन्वर्टेबल है, तो वो आप सेकंड कैटेगरी के साथ मिक्स नहीं करोगे, उसको एक अलग कैटेगरी को कंसिडर करके उसको उसकी टोटल जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो कंपेयर किया जाएगा विद इट्स टोटल NRV। तो कन्वर्टेबल को एक अलग कैटेगरी मान के उसकी फिर टोटल कॉस्ट और उसकी फिर टोटल NRV को कंपेयर करके जो भी लोअर अमाउंट होगा वो ले लेंगे इन पॉइंट नंबर 3, और फाइनली जो एनी अदर सिक्योरिटीज जो होंगे वो चौथे कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन भाई अभी जो आपने ऊपर हमें जो बैंकिंग कंपनी का बताया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने हमें बताई थी पॉइंट नंबर 4, उसमें भी तो वैल्यूएशन ऐसी तो बताया था आपने, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। और ICDS 8 में अगर हम जाते हैं जिसमें बैंक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, थर्ड देखो बताया गया नॉट अप्लाई, तो बैंक को तो एक्सक्लूड किया गया। तो एक्सक्लूड करके फायदा क्या हुआ कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं ICDS 8 के मुताबिक एज ऑन 31 ऑफ मार्च, 31 ऑफ मार्च पे, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही तो किया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं विद दी NRV व्हिचएवर इज लोअर ले लेते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क दोनों में यही है स्टूडेंट्स कि ICDS 8 जिसको एप्लीकेबल होगा वो कैटेगरी बेस पे वो क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा, कैटेगरी के बेसिस पर वैल्यूएशन करेगा, ये ICDS 8 का मैंडेट है। वर्सेस व्हाट स्टूडेंट्स, वर्सेस आपका जो ऊपर वाला जो था बैंकिंग कंपनी जिसको ICDS 8 का पार्ट ए एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको फिर कैटेगरी बेसिस पे वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, उनको आप इंडिविजुअल लेवल पर ही एक्चुअल कॉस्ट और उसकी एक्चुअल NRV एट द इंडिविजुअल लेवल ऑफ द सिक्योरिटी
तो कंपेयर करके उसका लोअर अमाउंट को आपको आगे लेकर जाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, so that I will be very quickly will like try to explain you on that and then let's move on to the next one. अब इसका एक चीज ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी का कंसेप्ट तो आप सभी लोगों ने तो समझ लिया है, लेकिन जो दिक्कत असली में आने वाली है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका बन जाए और टोटल इनकम कंप्यूट अगर करना पड़े तो वहां पर हो सकता है कि आप चूक जाओ स्टूडेंट। तो प्लीज नोट करके चलना, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने कुछ स्टेप्स बता के रखे हैं आप लोगों को, बस ये स्टेप्स को ही बस ध्यान में रखिएगा, आपका पूरा केस फिट हो जाएगा। स्टेप्स क्या है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी वही करना। पहले तो देखो, पहले जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है तो पहले लाइन में बोलता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी इज दिस मच फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसी फॉर्मेट बनेगा। और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर आपको बोलेंगे कि भैया टोटल इनकम कंप्यूट करो। और फिर टोटल इनकम के बाद आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसका अगर ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम अंडर 115BAA के अंदर लेकर अगर आपको जाना है तो वहां पर शायद आपको फिर टैक्स लायबिलिटी के टाइम पर आपको वो देखना होगा। लेकिन प्लीज एक चीज ध्यान में रखना है, मैं आपको लास्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। पहले टोटल इनकम में मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि टोटल इनकम का क्वेश्चन पूरा मत पढ़ना। आपने सबसे पहले टोटल इनकम में क्या करना है स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन पढ़ के चलना है। और ये लास्ट लाइन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल इनकम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर कहीं पे गलती से भी ये ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम बोल देंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने का जो अंदाज है वो एकदम बदल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर आपके दिमाग में वो ब्लॉक डिडक्शन घूमते रहेंगे और वो आप उसको फिर देखोगे कि भाई वो ब्लॉक डिडक्शन है तो उसको हमें एड बैक शायद करना पड़ सकता है अगर उसको पहले से डेबिट कर दिया है तो इन द नेट प्रॉफिट। तो वो इस वजह से टोटल इनकम के क्वेश्चन में क्या समझदारी होगी कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपने सीधा सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना है क्वेश्चन का कि पूछा क्या गया, उसके आधार पे आप जाओगे और फिर बाद में आप पूरा टोटल इनकम का पूरा पेज पढ़ोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स? तो अब जब हम लोग टोटल इनकम में करेंगे स्टूडेंट तो मेन तो पीजीबीपी का ही खेल है, वो तो आपको पता ही है बैंकिंग कंपनी वालों को। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि दूसरे हेड्स की जो इनकम है उसको आप प्लीज बाहर निकाल दो। जैसे कि आईएफओ की कोई इनकम होगी या कैपिटल गेन्स का कोई अगर कोई केस होगा तो वो जो नेट प्रॉफिट में जो दूसरे हेड के जो इनकम अगर बैठे हुए हैं तो उसको पहले से आप बाहर निकाल दीजिए। तो पहला पॉइंट जो एडजस्टमेंट देखो क्या मैंने लिखवाया आप लोगों को यहाँ पे, ये लिखवाया है कि एड एंड लेस अदर ऑल अदर कॉमन एडजस्टमेंट अदर देन दो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बैंक्स। तो यहाँ पर जो होगा सॉरी, यहाँ पर पहले तो दूसरे हेड के कोई अगर होंगे तो पहले आप उसको बाहर निकाल दीजिए। और उसको निकालने के बाद ये दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहिए, इसको पहला पॉइंट लिखा है लेकिन ये एक्चुअली होना चाहिए दूसरा पॉइंट। तो पहले तो आप दूसरे हेड के इनकम को बाहर निकाल दो नेट प्रॉफिट से, उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले तो हम पीजीबीपी पे फोकस करेंगे। उसके बाद जब पीजीबीपी की जब बारी आएगी तो उस पीजीबीपी के अंदर में भी हमने पहले बैंकिंग वाला जो एडजस्टमेंट जो भी बैंकिंग कंपनी को लग के जो उन्होंने बुक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको दी होगी उसको शुरुआत में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको इग्नोर करके चलना है। तो यू विल ऑल बी इग्नोरिंग दैट इनिशियली, ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलें, यू विल ऑल बी इग्नोरिंग दोज पर्टिकुलर डेटा इनिशियली। और इग्नोर करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग, यू विल बी देन बी ओनली फोकसिंग ऑन द कॉमन एडजस्टमेंट, जैसे कि डेप्रिसिएशन 43B 40A ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उसको पहले आप खत्म कर लो ताकि आपका पीजीबीपी 65% कंप्लीट हो जाएगा ये सारे कॉमन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद। और फिर आइए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो कि बैंकिंग कंपनी को टारगेट किया गया है, उसमें आपको स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये बैंक ने बैड डेट्स डेबिट किया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि भाई जो बैंक्स है उसको जो बैड डेट्स डेबिट किया गया उसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर तो मिलेगा तो वो मिलेगा ओनली दी एक्सेस पोर्शन ऑफ बैड डेट्स। और उस एक्सेस पोर्शन को कैसे आप डिटरमाइन करोगे, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल बैड डेट्स विद द टोटल प्रोविजन मेड सो फार। और उस टोटल प्रोविजन के अंदर करंट ईयर प्रोविजन जो होगा वो और लास्ट ईयर अर्ली ईयर के जो प्रोविजन होंगे उन दोनों को ऐड करके फिर आपने कंपेयर कर देना विद द एक्चुअल बैड डेट्स। और अगर वो एक्चुअल बैड डेट्स अगर एक्सेस में अगर चला गया तो उस एक्सेस पोर्शन का ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो इस वजह से इनिशियली जो डेबिट किया गया है पहले से ही नेट प्रॉफिट के अंदर जो बैड डेट्स का अमाउंट डेबिट किया गया उसको आप प्लीज ऐड बैक करके चलना इनिशियली।
फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर बैंकिंग कंपनी भी अपने तरीके से क्या करती है स्टूडेंट्स की प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है ना उनका, उसके आधार पे वो क्या करती है, बुक्स के अंदर वो क्या करती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का वो डिडक्शन ले लेती है एज पर द बुक्स, एज पर द बुक स्टूडेंट्स। तो आरबीआई के अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, उस प्रूडेंशियल नॉर्म्स के आधार पे वो क्या करता है, वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का डेबिट ले लेता है। तो वो जो भी आपके आरबीआई नॉर्म्स के आधार पे जो प्रोविजंस जो आपने किए हैं ऑन दी बैड एंड डॉटफुल डेट, तो वो बुक्स के मुताबिक आपने वो डिडक्शन लिया, तो उसको आप पहले ऐड कर लें, क्योंकि हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑफ दी प्रोविजन एज पर 3617A, जो कि एक परसेंटेज है ऑन द जीटीआई, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा प्रोविजन एज पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज पर द बुक्स आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के मुताबिक अगर कोई ऐड हुआ रहेगा तो उसको आप लोग उसको ऐड कर लें। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द बुक्स अगर कुछ ऐसा है तो उसको भी आप ऐड करके चले। उसके बाद जो माइनस होगा स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, यहाँ पे देखो माइनस जो हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 3617A, ये जो माइनस किया गया वो क्या है स्टूडेंट्स, 8.5% या 5% ऑफ द जीटीआई बिफोर सेक्शन 3617A। उसको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स किसके साथ, उसको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, सॉरी 8.5% या 5% ऑफ द जीटीआई, 5% किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉरेन बैंक के लिए होगा। और ये आपका जो दूसरा कैटेगरी है आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे विच ऑल्सो इंक्लूड एनबीएफसी है, प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स। एनबीएफसी वालों को भी एट द एंड ऑफ द डे 3617A में ही आना पड़ेगा, एनबीएफसी वालों को भी 3617A में आना पड़ेगा। अब वो 3617A में प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स की डिडक्शन उनको भी दे दी जाती है। दैट इज वन पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इज दैट क्लियर? लेकिन कितना मिलेगा एनबीएफसी को, 5%। तो 5% में फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, कौन कौन लोग हैं, फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। उसको छोड़ के बाकी जो नॉर्मल बैंक है उसको 8.5% है। ये जो 8.5% है या फिर ये जो 5% का जो परसेंटेज है, ये आप अप्लाई किस पे करोगे, ऑन द जीटीआई बिफोर द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 3617 है, जीटीआई बिफोर द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 3617 है, ठीक है। लेकिन जिसको 8.5% आप देते हो उस कैटेगरी के लिए एक एडिशनल डिडक्शन प्रोविजन का आपको दिया जाता है विच इज 10%, और उस 10% को आपको अप्लाई करना है नॉट ऑन द जीटीआई, बट दैट 10% हैज टू बी अप्लाइड ऑन व्हाट, on the aggregate average rural advances, on the aggregate average rural advances, उस पर आपने 10% को अप्लाई करना है एज अ एडिशनल प्रोविजन, और वो एडिशनल प्रोविजन को आपको नॉर्मल प्रोविजन के साथ ऐड करके आपको अल्टीमेटली करंट ईयर की प्रोविजन मिल जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द बैंक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका मिल गया है प्रोविजन का अमाउंट, दिस इज व्हाट यू ऑल गेट द प्रोविजन अमाउंट। और उसके बाद देखो नीचे प्रोविजन हो जाने के बाद नीचे देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, उसके बाद अगर ये देखिएगा यहाँ पे बैड डेट्स अंडर सेक्शन 3617, देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, तो ये क्या पूरा बैड डेट्स का डिडक्शन आपको मिलेगा, नहीं। मैंने बताया था कि इनकम टैक्स में बैड डेट्स का जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा एग्रीगेट बैड डेट्स माइनस द एग्रीगेट प्रोविजन मेड सो फार, और इस वजह से ये एग्रीगेट प्रोविजन में क्या आ जाएगा, करंट ईयर प्रोविजन एंड द अर्लियर ईयर प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन एंड दी अर्लियर ईयर प्रोविजन दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर वो बैड डेट्स अमाउंट अगर वो एक्सीड अगर कर गया तो ये जो अमाउंट दिख रहा है ना जो लास्ट में कॉलम में है वो एक्सेस अमाउंट ही वो कंसिडर किया जाएगा एज अ डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स अंडर सेक्शन 3617। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा उस बैलेंस अमाउंट में से आपने करना क्या है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(2) उसको रिड्यूस करेंगे आप, और फिर यूएडी अंडर सेक्शन 32(2) जो होगा वो भी अमाउंट को रिड्यूस करके फाइनली आपको अपनी पीजीबीपी मिल जाएगी। ये जो मैंने बताया था ना कि क्योंकि पैरा ये जो होगा ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(2) एंड यूएडी अंडर 32(2) ये पूरा करके पीजीपी लेकर आओ। अदर हेड्स ऑफ इनकम जो कि स्टार्टिंग में आपने इसको बाहर निकाल दिए थे, जो अदर हेड्स ऑफ इनकम थे जो कि स्टार्टिंग में आपने उसको बाहर निकाल दिए थे, अब उसको सेपरेटली कंसिडर कर लो, जीटीआई मिल जाएगी, जीटीआई मिल गई आपको। उसके बाद चैप्टर 6A के बारे में थोड़ा देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे चैप्टर 6A में बैंकिंग कंपनी के लिए क्या आ सकता है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स जो बैंकिंग कंपनी का जो मेन पॉइंट है ना यहाँ पे ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी को चैप्टर 6A में 80JJAA
का पॉइंट बन सकता है। बैंकिंग कंपनी को 80JJAA का क्या पॉइंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बैंकिंग कंपनी को 80M का भी डिडक्शन बन सकता है, जो डिविडेंड उन्होंने अपने शेयर होल्डर को दिया प्राइमरी अप टू 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, वो डिविडेंड का डिडक्शन वो ले सकते हैं। सॉरी वो तो अपर लिमिट होगा, दैट इज अपर लिमिट। वो उसको जो उनको डिविडेंड मिला है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ड्यूरिंग द ईयर उनको डिविडेंड मिला है उसका डिडक्शन उनको मिलेगा अंडर ATM, जिसको कंपेयर उसको किसके साथ करना पड़ेगा? जो ये बैंकिंग कंपनी ने खुद जो पेमेंट किया होगा, बैंकिंग कंपनी ने जो खुद जो पेमेंट किया होगा स्टूडेंट्स, द पेमेंट विच द बैंकिंग कंपनी वुड हैव डन प्राइमरी अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब 30 सितंबर तक। तो वो अमाउंट अल्टीमेटली वो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द डिविडेंड दैट इट हैज रिसीव फ्रॉम द अदर कंपनीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये 80JJAA के डिडक्शन स्टूडेंट्स इसके बन जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। सॉरी, ATM के डिडक्शन बनेंगे। तो जो दो नोटेबल चैप्टर 6 से के जो डिडक्शंस बैंकिंग कंपनी को बन सकती है, जिसके लिए आप मेंटली रेडी रहना, वो एक होगा आपका 80JJAA और दूसरा होगा स्टूडेंट आपका ATM। और देन फाइनली टोटल इनकम इसकी बन गई एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर देयर। बस इस पे एक चीज लास्ट में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, और वो यही चीज है स्टूडेंट्स की, ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम अगर बैंकिंग कंपनी पे अगर आ गया, अगर तो आ गया, तो वो 115BAA के अंदर जाएगा। और 115BAA के अगर अंदर जा रहा है तो फिर आप लोग प्लीज नोट करके चलना कि स्पेशल इनकम जो होगा उस टोटल इनकम में विच इज कंप्यूटेड एज पर 115BAA, वो स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट, और जो बैलेंस इनकम होगा उस पर 22% प्लस फ्लैट सरचार्ज आपको लगवा देना है, और वो HEC जो है वो लगवा के फाइनली आपकी अपनी लायबिलिटी आ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सिचुएशन बस आपने ध्यान में रखना, दैट इज ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट विच आई थॉट जस्ट टू पुटिंग अक्रॉस टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम सेक्शन 44C की तरफ। और ये 44C का ये जो प्रोविजन है वो किसको लेकर है स्टूडेंट्स? डिडक्शन ऑफ HO एक्सपेंडिचर फॉर द नॉन रेसिडेंट। इसको अभी मैंने MCQ में स्टूडेंट्स ये सब चीज देखे जा रहे हैं। तो दिस इज नाउ यू विल बी गेटिंग इट इन MCQ। एक जमाना था जब इसको एक उन्होंने 6 से 7 मार्क का प्रैक्टिकल डाल दिया था, अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन MCQ की चांसेस इसकी ज्यादा है। व्हाट एग्जैक्टली इज 44C? तो डिडक्शन ऑफ HO एक्सपेंडिचर फॉर द नॉन रेसिडेंट। तो आपने ये चीज में पहले आपको क्वेश्चन पूछना है, ये आया था एग्जामिनेशन में कि इनको देखो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से कि क्या ये जो इनकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है स्टूडेंट्स, वॉट एवर इज द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ, ये जो इनकी जो अपनी ब्रांच की जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगी, क्या वो लॉस में आ रही है? क्या ये इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम लॉस में आ रही है या नहीं? अगर आप बोलोगे नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है लॉस में, मतलब कि प्रॉफिट है, एडजस्टेड टोटल इनकम इज अ पॉजिटिव फिगर, तो ऐसे केस में अगर ब्रांच की अपनी आप बोलोगे एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, वो मैं बता दूंगा, पहले ध्यान से देखना कि अगर वो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर उस केस में ये 44C में जो HO जो क्या करता है, एलोकेट करता है अपने ब्रांच को, HO जो एलोकेट करता है अपने ब्रांच को, उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स बनेगी विच इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। एंड विच इज द फॉलोइंग टू स्टूडेंट्स? इस केस में हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर जो कि अपोर्शन किया गया है ब्रांच को, वो आपने कंपैरिजन कर देना है विद व्हाट, विद द 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम के साथ, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो बन जाएगा आपका दी क्वालिफाइंग अमाउंट, जो 44C में आपको डिडक्शन देना होगा टू दी ब्रांच फॉर दी HO एक्सपेंडिचर जो कि अपोर्शन किया गया। ये इस तरीके से इसकी डिडक्शन तैयार करोगे। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, आप उसको इस तरीके से याद रखना, GTI before the brought forward losses and the UAD before 44C। GTI, तो GTI बिफोर दी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो वो आपका बन जाएगा दी एडजस्टेड टोटल इनकम। So that is one thing that you should always keep in mind in this particular context. Is that clear students to all of you? अच्छा, अगर आप कहोगे कि नहीं सर, हमारा ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स, एक लॉस है, करंट ईयर में इसका आपको लॉस मिला है,
तो इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम इज अ लॉस वैल्यू स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसे केस में जो एचओ एक्सपेंडिचर जो अपोर्शन किया गया उसको कंपेयर करोगे अब किसके साथ, विथ 5% ऑफ द एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। और ये जो एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम जो आपको लेना है वो आपको 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का जो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा उन 3 साल का आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना है। और वो 3 इयर्स का एवरेज जो आप लोगे ऑफ द लास्ट 3 इयर्स ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका आपने 5% लेना है। उस एवरेज का, उस एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, उसका आपने एवरेज लेना है। और उसी एवरेज का 5% अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, दी ये बनेगा आपका दी क्वालिफाइंग अमाउंट। ये 5% बनेगा दी क्वालिफाइंग अमाउंट, और अकॉर्डिंगली ये अमाउंट आपका रिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 44C। म्यूचुअल कंसर्न स्टूडेंट, अगला पर्टिकुलर एरिया है म्यूचुअल कंसर्न का। म्यूचुअल कंसर्न भी इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी टाइम तक नहीं आया था, लेकिन इसको मैं मानता हूँ कि इसको एमसीक्यू लेवल पर पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन। अब ये क्या है, म्यूचुअलिटी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस थियरी लेवल पर भी आईसीआई ने पास्ट में पूछा हुआ है, तो वो भी एक्सपेक्ट करना कि म्यूचुअलिटी क्या है। और कुछ कुछ तो प्रैक्टिकल आपको नंबर्स के साथ डाल देंगे, तो आपको उस हिसाब से आपको 44A का डिडक्शन आपको फिर कंप्यूट करना पड़ सकता है। कैसे करोगे 44A का डिडक्शन कंप्यूट, वो मैं आपको बताऊँ। पहले तो ध्यान रखना कि म्यूचुअलिटी को लेके छोटा छोटा सा एक थियरी सुन लेना फ्रेंड्स, कि जो मेंबर का जो कॉमन कंट्रीब्यूशन जो होता है, उस कंट्रीब्यूशन में से अगर कोई सरप्लस अगर निकला, मेंबर के कंट्रीब्यूशन, कॉमन कंट्रीब्यूशन में से अगर कोई सरप्लस निकलता है, तो वो सरप्लस अपने आप में स्टूडेंट्स इनकम नहीं माने जाते हैं। दैट सरप्लस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इनकम। तो वो सरप्लस अपने आप में इनकम नहीं है। हो सकता है कि वो सरप्लस ना हो, वो डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी कैसे होगा, जब वो कॉमन पूल के एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा है विद द कॉमन पूल ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर। वो जो कॉमन पूल का जो एक्सपेंडिचर है, इफ इट इज मोर देन व्हाट स्टूडेंट्स, मोर देन द इनकम फ्रॉम दैट कॉमन पूल, तो वो जो एक्सेस जो एक्सपेंडिचर है आपका स्टूडेंट्स, वॉट एवर इज द एक्सेस एक्सपेंडिचर, वो बोला जाएगा एज अ डेफिशिएंसी। क्या उस डेफिशिएंसी की डिडक्शन मिलेगी, आंसर इज यस। और ये डिडक्शन 44A में दिया जाता है। तो 44A में स्टूडेंट नोटिस करके चलना डिडक्शन देने का तरीका क्या है। ये राइट हैंड साइड में देखो, तो अभी डेटा मैंने क्या दिया है कि म्यूचुअल कंसर्न का कौन सा टुकड़ा इनकम माना जाता है फॉर टैक्सेशन पर्पस। कौन सा है वो टुकड़ा एक म्यूचुअल कंसर्न का जिसको हम इनकम मानते हैं फॉर टैक्स पर्पस। तो टुकड़ा है आपका कि अगर कोई ये म्यूचुअल कंसर्न कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्विस अगर वो दिलवाती है, इफ दिस म्यूचुअल कंसर्न इज प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, if this mutual concern is providing any specific service to its members, तो ये कॉमन वाला पूल का नहीं है केस, ये किसी मेंबर ने एक स्पेसिफिक सर्विसेज चाहा है उस म्यूचुअल कंसर्न से, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा, दैट कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम। और फिर उसके साथ साथ जो भी म्यूचुअल कंसर्न आउटसाइड में वो क्या करते हैं, दूसरों को, थर्ड पार्टी को वो उसको चार्ज करते हैं, जिसके लिए वो कंसिडरेशन अमाउंट को चार्ज करेंगे, तो वो भी एक अमाउंट टैक्सेबल पोर्शन का हिस्सा बनेगा। इवन दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल पोर्शन। ठीक है, अच्छा, तो स्पेसिफिक सर्विस का जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो, उसके साथ साथ जो आउटसाइडर्स को जो उन्होंने कुछ अमाउंट चार्ज किया होगा वो लेना है। वो दोनों टैक्सेबल कैटेगरी है। उसके अगेंस्ट पे कोई एक्सपेंडिचर अगर होगा, उसके अगेंस्ट पे कोई अगर एक्सपेंडिचर होगा, तो वो एक्सपेंडिचर को आपको रिड्यूस करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द इनकम। वो एक्सपेंडिचर को आपको रिड्यूस करना है स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द इनकम। और ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको द सरप्लस अमाउंट। ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको द सरप्लस अमाउंट। और वो सरप्लस अमाउंट को फिर आप उस पे डिडक्शन दोगे। किसका डिडक्शन दोगे, डेफिशिएंसी का डिडक्शन दोगे अंडर सेक्शन 44A। कितना डिडक्शन मिलेगा 44A में डेफिशिएंसी का, तो डिडक्शन जो बनेगा 44A में वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। अब ये फॉलोइंग टू क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर तो जो ऊपर डेफिशिएंसी का अमाउंट आया है वो उसको कंपेयर कर देना विथ व्हाट, 50% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A। 50% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A। तो ये 44A जो डेफिशिएंसी का डिडक्शन दोगे, उसके पहले जो टोटल इनकम उसका बना है,
वो उसका 50% लेना आपने, और वो 50% को कंपेयर कर देना विद द डेफिशिएंसी अमाउंट। उन दोनों को कंपेयर करके जो लोअर अमाउंट बनेगा, वो लोअर अमाउंट का स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन इसका मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग द डिडक्शन ऑफ दैट लोअर अमाउंट। और डिडक्शन एक बार मिल जाए तो पीजीपी आ गई आपकी, पीजीपी के बाद अदर हेड्स ऑफ इनकम, फिर जीटीआई, जीटीआई के बाद चैप्टर 6 से टोटल इनकम। इस तरीके से म्यूचुअल कंसर्न अपनी क्या करती है स्टूडेंट्स, ये टोटल इनकम निकालती है। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे, इफ द डेफिशिएंसी इज नॉट फुल्ली एडजस्टेड देन द बैलेंस अमाउंट शैल बी लैप्स्ड। मतलब मान के चलो स्टूडेंट्स कि ये डेफिशिएंसी जो है दैट इज ₹15 ₹15 है स्टूडेंट्स डेफिशिएंसी का, ये जो है अमाउंट है। और जो आपका 50% ऑफ टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A, ये टोटल इनकम 50% ऑफ टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A जो है वो आपका है स्टूडेंट्स, मान के चलो 10 रुपए। तो 15 है और ये 10 है, तो 15 एंड 10 ये दोनों को कंपेयर करना है आपने। ऑब्वियसली 10 का डिडक्शन ही मिलेगा, 50% ऑफ टोटल इनकम ये कम है, 10 ही है, तो इसी 10 का डिडक्शन मिलेगा। तो जो डेफिशिएंसी का जो एक्सेस 5 है, क्या अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? कुछ नहीं होगा। एक तो ये डिडक्शन हम आपको अलग से दिलवा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये डेफिशिएंसी वो उस कैटेगरी का है जो कि वो टैक्सेबल है ही नहीं एक्चुअली, हम आपको अलग से इसका डिडक्शन दे रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आप अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ये उसी समय पे ही ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, ये चीज डिडक्शन 35D का कैलकुलेशन के लेवल पे ध्यान रखना। इस केस में पहले तो ध्यान रखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में अदर रेसिडेंट पर्सन, ये राइट हैंड साइड में देखना, राइट हैंड साइड में इंडियन कंपनी बाद में, तो अदर रेसिडेंट पर्सन मतलब कि रेसिडेंट पर्सन, मतलब मान के चलो कि हो सकता है कि आप लोगों को बोला जाए कि पार्टनरशिप फर्म ने ऐसा कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर उसने इनकर किया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में क्या आपको इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लीगल चार्जेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके, ये एग्जाम्पल नहीं, यही आइटम्स है, 4 आइटम्स ध्यान रखना। फॉर अदर रेसिडेंट पर्सन, ये अदर क्यों मैं बोल रहा हूँ, अदर देन द कंपनी, कंपनी को छोड़ के। तो अदर देन द कंपनी जो भी बैलेंस जो रेसिडेंट पर्सन होंगे उनके लिए ये 4 कैटेगरी के एक्सपेंडिचर जो होंगे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन की एलिजिबिलिटी वो रखते हैं। ये 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई आप बोलोगे सर इसके अलावा कोई अगर होगा तो इग्नोर करके चलना, सिर्फ ये 4। फिर से मेरे साथ रिपीट करना स्टूडेंट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस एंड द लीगल चार्जेस। तो ये 4 आइटम्स है स्टूडेंट जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब क्या करोगे इस 4 आइटम को स्टूडेंट्स, इस 4 आइटम जो है आपका स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इसको कंपेयर करना किसके साथ, विद 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कंपेयर करके चलना है स्टूडेंट्स विद द 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो बनेगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट, और उस क्वालिफाइंग अमाउंट का आपको 1/5 अल्टीमेटली लेना पड़ेगा एज द एलिजिबल डिडक्शन इन दिस केस। उस क्वालिफाइंग अमाउंट का 1/5 लेके चलना स्टूडेंट्स एज द एलिजिबल डिडक्शन इन दिस केस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये होगा अदर रेसिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी। अच्छा, कंपनी की तरफ आ जाओ, इंडियन कंपनी अगर होगी, वो फॉरेन कंपनी का इसका मतलब ये है कि एक नॉन रेसिडेंट हो या फिर एक फॉरेन कंपनी हो, क्या उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 35D में मिलेगा? एंड द आंसर इज नो। तो एक इंडियन कंपनी अगर है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए डिडक्शन किस तरीके से 35D में दिया जाएगा, तो उनके लिए 2 लेवल का कंपैरिजन आपको करना है। कंपैरिजन नंबर 1, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे विद 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है विद 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और प्लीज नोट करके चलना, इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसमें जो शेयर कैपिटल है वो लेंगे आप, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। डिबेंचर होगा वो लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जितने भी आपने की है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वो लेना है। यहां पर आपको केयरफुल रहना है स्टूडेंट्स, इस केस में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेके एक पॉइंट को लेके केयरफुल रहना आपने। और वो पॉइंट क्या है कि बिजनेस उसकी कमेंट्स इस प्रीवियस ईयर में 21-22 में हुई है, मान के चलो कि अक्टूबर मंथ में हुई है, और उसने एक नया बोरोइंग लिया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 के दिसंबर में उसने एक नई बोरोइंग ली है। बिजनेस कमेंट्स उसकी लेकिन हो चुकी है इसी साल में,
तो क्या वो नए बोरोइंग को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड? एंड द आंसर इज यस। एंड द आंसर इज यस। तो जैसे बोला गया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तक के डेटा को आपको कंसिडर करना है, तो फिर इस वजह से आपको वो भी अमाउंट को कंसिडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लीज नोट करना, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका आएगा शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और इसी पे बर्जर पेंट का केस लो आपको पता है कि शेयर कैपिटल में आपने शेयर प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। शेयर कैपिटल के अंदर स्टूडेंट्स, विल यू बी कंसिडरिंग द शेयर प्रीमियम? टू दैट द आंसर इज नो। नहीं कंसिडर करोगे आप शेयर प्रीमियम, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? शेयर प्रीमियम विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस केस। फाइन, ये बर्जर पेंट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। आइए, तो ये आपने 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करना विद द 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें से जो भी हायर अमाउंट बनेगा वो अब आपका स्टेप 2 की तरफ जाएगा, और उस स्टेप 2 में ये हायर अमाउंट को आप कंपेयर करोगे विद द स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। और ये स्पेसिफाइड कितना है? वो 4 जो था पहले का वो तो था ही है। 4 क्या है स्टूडेंट्स पहले का? फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड द लीगल चार्जेस। उसके अलावा कंपनी लेवल पे और 3 नए एक्सपेंडिचर जो कि सिर्फ कंपनी लेवल पे होंगे एट दैट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। वो 3 नए एक्सपेंडिचर कंपनी के लेवल पे हो सकते हैं, और वो क्या है आपका? आरओसी चार्जेस, जो आरओसी की फीस होगी वो, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द लीगल चार्जेस, जो आपको अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को एनहांस करने के लिए जो लीगल चार्जेस आपने पे किए होंगे उसे भी आपको कंसिडर करके चलना है। अब इसमें रमा मल्टीटेक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्लीज नोट करके चलना आप लोग। रमा मल्टीटेक का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टूडेंट ध्यान में रख के चलेंगे आप लोग। और वो क्या है जजमेंट? कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो उनको कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी को उनको एक एस्क्रो में क्या करना पड़ता है? पैसे को जमा करके रखना पड़ता है जब तक कि वो शेयर अलॉट नहीं कर देता है तब तक। तो वो एस्क्रो में अमाउंट चला गया। अब उस एस्क्रो से अल्टीमेटली जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट अक्रू जो हो रहा है, एस्क्रो से स्टूडेंट्स जो भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट जो अक्रू हो रहा है, ऑन दैट इंटरेस्ट वो अक्रू, वो उसकी इनकम तो मानी जाती है, लेकिन इनकम कब मानी जाएगी स्टूडेंट्स? जब वो अलॉटमेंट करेगा तब। और उस इनकम को आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाएगा? इनकम मानोगे? हाँ मानोगे, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? उसको एज एन आईएफओएस के अंदर उसको टैक्स नहीं करना है। आपने करना क्या होगा? ये जो भी आपके जो 4+3 जो आपके जो स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो आपके हैं, उसी में से आपको ये इंसिडेंटल इनकम को माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस केस। ये है आपका स्टूडेंट्स रमा मल्टीटेक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ध्यान रखना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कंपनी लेवल पे 4+3 ये जो आपका बना है ऑफ योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, उस 4+3 में से आपने जो इनको इंटरेस्ट अमाउंट अक्रू हुआ है ऑन द डिपॉजिट ऑफ द शेयर एप्लीकेशन मनी, ये अमाउंट को आपको रिड्यूस करके अल्टीमेटली आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स? ये ऊपर वाले अमाउंट को अल्टीमेटली इसको इसके साथ रिड्यूस कर लेना आप, और अकॉर्डिंगली ये इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है ऑन द शेयर एप्लीकेशन मनी, जब आपने उसको अलॉट कर दिया होगा तो वो अमाउंट उसको आपको माइनस करना पड़ेगा विद दैट 4+3। और ये नेट अमाउंट आपका जो है, वो नेट अमाउंट जो है आपका वो माना जाएगा एज अ स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जिसको आप कंपेयर करोगे विद द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 1। और इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो फाइनली आगे चला जाएगा डिडक्शन पर्पज के लिए। और डिडक्शन बताओ कितना मिलेगा? 1/5। डिडक्शन बताओ कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1/5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात को लेके? बताइए जनाब। फाइन स्टूडेंट्स। और अब स्टूडेंट्स 35 में, जैसे कि आपको पता है इस केस में 35 की बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो डोनेशन को लेके। मैंने वैसे ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में आपको चीजें तो बता ही दी थी कि भाई डोनेशन जो है ऑफ 35 इंस्टीट्यूट, उस पर अगर एलसीसी अगर ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम की तरफ अगर चला जाता है तो उन डोनेशन का डिडक्शन उसको नहीं दिया जाएगा। उन डोनेशंस का डिडक्शन स्टूडेंट्स उसको नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो नो डिडक्शंस विल बी गिवन इन दिस रिगार्ड।
अगर वो अल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाता है तो, नहीं जाता है तो ले लो डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा अगर वो नहीं जाता है तो? 100%। अब कोई वेटेड एवरेज डिडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऑल द डिडक्शन इज एट 100% इटसेल्फ। फाइन, तो ये 100% तक की डिडक्शन उसकी बनेगी। दूसरा पॉइंट, अगर वो डोनेशन नहीं करता और वो खुद साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर को अगर वो करता है, तो अब वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी उसको 100% ही मिलेगा। वेटेड एवरेज अब नहीं है तो अब 100% ही डिडक्शन बनेगा स्टूडेंट्स। इस पर एक चीज बस ध्यान रखना कि जो लैंड है स्टूडेंट्स, लैंड लैंड पे कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। नो डिडक्शन विल बी गिवन टू यू ऑन द लैंड। ठीक है, बाकी आपका बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो, ये सबका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है उस पर 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फाइन, इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि, अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने किया होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलेगा आपको। तो दोनों का मिलेगा, रेवेन्यू एज वेल एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाते हो 115BAB या फिर 115BAA को अगर आप ऑप्ट करते हो, तो ये क्या दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा इवन इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम अंडर 115BAA एंड BAB? एंड द आंसर इज यस। अब इस पे एक बस खास पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि है ये जो आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है फॉर बाय एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया बाय एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट, वो एसेट को आपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए आपने उसको एक्वायर किया था, उसी साल में आपने उसकी रिडक्शन 35 में ले ली, उसी साल में आपने उसकी रिडक्शन ले ली सेक्शन 35 में। सब्सिक्वेंटली दो चीजें ही हो सकती है उसके साथ। क्या बाय द वे कोई लॉक इन पीरियड है कि इतने साल तक आपको उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है? कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आपने अगर आज लिया, थोड़े समय के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया, डिडक्शन आपने 35 में ले ली, और सब्सिक्वेंटली बताइए क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है, या तो मैं उसको एसेट को बेच दूं, या तो मैं उस एसेट को बेच दूं। तो अगर मैंने उसको बेच दिया है एसेट को डायरेक्टली, बिना कुछ और किए, उस एसेट को मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसको आगे निकाल दिया, तो फिर ऐसे केस में जितने तक का डिडक्शन जो आपने पहले क्लेम किया होगा अंडर सेक्शन 35, उतने तक की जो रिकवरी हुई है बाय सेलिंग दैट साइंटिफिक रिसर्च एसेट, उतने तक की रिकवरी को मानोगे एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(3). उतने तक की रिकवरी को डीम्ड इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 41(3) स्टूडेंट्स। और एनी रिकवरी विच इज गोइंग बियॉन्ड दिस अमाउंट, एनी रिकवरी विच इज गोइंग बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर अमाउंट स्टूडेंट्स, तो वो किस हेड की तरफ चला जाएगा? अंडर द हेड कैपिटल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल गेन्स की तरफ फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। अच्छा, अगर आप वो एसेट को ट्रांसफर कर देते हो इन द बिजनेस डिविजन, अगर तो आप उस एसेट को क्या करते हो कि उसको बेचते नहीं हो, लेकिन उसको ट्रांसफर कर देते हो इन द बिजनेस डिविजन, तो फिर उस केस में आपकी जो WDV होगी उस एसेट की ब्लॉक के अंदर, वो नील मान ली जाएगी। दैट ब्लॉक वैल्यू ऑफ दैट एसेट विल बिकम नील। ठीक है, तो वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो एसेट एंटर तो करेगा ब्लॉक में लेकिन एट नील वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना। क्यों नील वैल्यू पे होगा? क्योंकि भाई पूरी डिडक्शन मिल गई, पूरी डिडक्शन मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, क्या हमने इसको हम बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या इसकी डिडक्शन को रिवोक किया हमने? डिड वी रिवोक द डिडक्शन? नो, कोई लॉकिंग पीरियड तो था नहीं। तो अगर आप सब्सिक्वेंटली उस एसेट को जिस पर आपने 35 का डिडक्शन पहले ले लिया है, उस एसेट को अगर आपने बाद में बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने इस्तेमाल भी अगर आपने किया है, जिसके लिए आप उसको बिजनेस डिवीजन में ट्रांसफर कर देते हो, आपने सीधा वो एसेट को ब्लॉक के अंदर लेके जाना है एट द नील वैल्यू। कोई भी आप उसके डिडक्शन को रिवोक नहीं करोगे। यू विल नॉट रिवोक दिस पर्टिकुलर डिडक्शन एट ऑल। ये मैं क्यों एम्फेसिस दे रहा हूँ कि अब आ रहा है आपका 35AD, नीचे आ रहा 35AD। 35AD में आपको पता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस जिसमें आपने एसेट को अक्वायर किया, उस पर आपने 35AD की डिडक्शन ली, और 8 साल के अंदर अगर आप उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेते हो, तो जो 35AD की डिडक्शन आपने पहले दी थी वो अब आपको रिवोक करनी पड़ेगी। 35AD की जो डिडक्शन आपने पहले दी थी, तो क्या अब आपको रिवोक करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये 35AD के अंदर होगा।
अच्छा, मुझे बताओ कि क्या ये भी मुमकिन है कि वो जो 35AD का जो एसेट है, जिसपे आपने 35AD का डिडक्शन आपने लिया था, हो सकता है कि मैं उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में इस्तेमाल करने के बजाय मैं वो एसेट को अगर बेच दूं तो क्या होगा ऐसे केस में? उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में मैं इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, उसको मैंने क्या किया, सीधे सीधे मैंने उसको बेच दिया है। तो अगर आपने वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में इस्तेमाल करने के बजाय उसको सीधे अगर आपने उसको बेच दिया है, तो चाहे आपने जब भी बेचा हो या कितने में भी बेचा हो, दो चीजों को ध्यान रख के चलना स्टूडेंट्स। वो स्पेसिफाइड एसेट जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में इस्तेमाल किया है, जिसपे आपने 35AD का डिडक्शन ले लिया है, उसको अगर आप सब्सिक्वेंटली क्या करते हो, बेच देते हो, तो दो चीजें मैंने बोली है। क्या बोली है? जब भी आप उसे बेचो, और दूसरा क्या है, जितने में भी आप उसे बेचो, दोनों ही केस में जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, जो भी अमाउंट आपको मिला है उसको बेच के वो अमाउंट को पूरी तरह से आपने चार्ज करना है। वो अमाउंट को स्टूडेंट्स आपने पूरी तरह से चार्ज करना है। कहां पे चार्ज करोगे? अंडर दैट पीजीपी। ये देखो 28(7), देखो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, बस ऊपर देखना, ये सेल का केस है स्टूडेंट्स, ये सेल का केस है। तो सेल का केस आ रहा है, तो ये सेल का केस हुआ स्टूडेंट्स। मैंने 100 रुपीज का क्या किया, एसेट खरीदा। मैंने देखो यहाँ पे 100 रुपीज का एसेट खरीदा, और वो 100 रुपीज का एसेट को खरीद के मैंने उसकी डिडक्शन पूरी ले ली। मैंने उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स पूरी की पूरी ले ली। अब सब्सिक्वेंटली मैं उसको 80 में बेचूं या 120 में बेचूं, कोई भी अमाउंट में बेचूं, या फिर मैं उसको 2 साल में निकाल दूं, बेच दूं, या 8 साल के बाद बेचूं। मैंने आपको क्या बोला? दो चीजें आपको बोली। जब भी आप बेचो या जितने में भी आप बेचो, अंजाम 28(7) के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा। और 28(7) क्या बोल रहा है? दैट एनी सम रिसीव्ड शैल बी चार्ज ओनली अंडर द हेड पीजीबीपी। जो भी पैसा आपको मिला है स्टूडेंट्स, उसकी चार्जेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी में होगी। तो कितना पैसा मिला है? 80 रुपए या 120। नहीं तो 35 में अगर ये होता, अगर यही केस 35 में होता, जानते हो क्या होता? 100 की डिडक्शन मैंने 35 में ली। अगर 80 रुपए अगर मैं क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ, तो 80 रुपए डीम्ड इनकम 41 में बनेगा। और जहां पे 120 रुपए को अगर मैं रिकवर करता हूँ, तो उस 120 में से 100 रुपीज, उस 120 में से 100 रुपीज को मैं क्या करूंगा, 35 का अगर केस अगर होता, तो 100 रुपीज को मैं डीम्ड इनकम बनाता 41 में, और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो कैपिटल गेन्स की तरफ। लेकिन 35AD की अगर हम बात करें, तो मैंने क्या बताया, दो चीजें। जब भी बेचो या जितने में भी बेचो, सारा ही अमाउंट कहाँ पे जाएगा? अंडर द हेड पीजीबी। तो इसी वजह से 80 रुपीज एंड 120 रुपीज एंटायरली इट विल बी चार्ज अंडर 28(7). ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पार्ट। तो बेचा अगर हमने, या मुझे इस पे इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन अगर कोई पैसा मुझे मिला है, वो सब अमाउंट को आपने सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी के हेड के अंदर ही अंडर सेक्शन 28(7) चार्ज करना है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर हमने बेचा नहीं है, हमने उसको हमारे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तब आपको क्वेश्चन पूछना है। देखो 35 में तो ये पॉइंट बना ही नहीं। 35 में तो हम लोगों ने बोला है कि आपने जब भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट खरीदे थे, जिसपे 35 की डिडक्शन आपने ले ली थी, उसको सब्सिक्वेंटली जब भी सब्सिक्वेंटली अगर आपने उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो वहां पर मैंने आपको यही चीज बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने 35 की डिडक्शन पहले ली थी वो रिवोक नहीं होगी। और क्योंकि कोई आपकी डिडक्शन को रिवोक ही नहीं किया गया, इस वजह से ये क्या है स्टूडेंट्स, इस वजह से ये डीम्ड इनकम का कोई केस बना ही नहीं है आपके लिए। और यही रीजन था कि वो ब्लॉक में एंटर करेगा दैट साइंटिफिक रिसर्च एसेट, जो कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ब्लॉक में एंटर करेगा एट निल वैल्यू। लेकिन 35AD का अगर ये केस है, और आपने वो क्या किया है, वो स्पेसिफाइड एसेट जिसपे 35AD का डिडक्शन आपने ले लिया है, और सब्सिक्वेंटली अब आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, तो फिर आफ्टर 8 ईयर्स किया है, तो डिफॉल्ट का केस नहीं माना जाएगा। अगर ये डिफॉल्ट का केस नहीं माना जाएगा, तो जो पहले आपने जो डिडक्शन लिया था 35AD,
वो डीम्ड इनकम आपकी नहीं बनेगी। और अगर वो डीम्ड इनकम नहीं बनी तो वो एसेट बताइए जनाब अब आपके ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी एट व्हाट वैल्यू, एट निल वैल्यू, जस्ट लाइक 35। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट ही नहीं है। तो डिफॉल्ट ही नहीं है तो हमने कोई भी चीज को रिवोक नहीं की, हमने कोई भी डीम्ड इनकम नहीं बना। तो सीधे सीधे स्टूडेंट्स ये केस में क्या हुआ है, ये सीधे सीधे ये अमाउंट ब्लॉक के अंदर एंटर किया है एट निल वैल्यू, क्योंकि कोई भी मेरा ये डीम्ड इनकम नहीं हुआ है, इस वजह से ये एसेट मेरे ब्लॉक के अंदर जाता है एट निल वैल्यू। लेकिन अगर 8 साल के अंदर, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है आपको आफ्टर 2 इयर्स, 8 साल के अंदर ही आपने इसको क्या कर दिया है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपने उसे इस्तेमाल करने के लिए लगा दिया है, तो ये डिफॉल्ट का केस होगा। अब तो इसका मतलब होगा पहले डीम्ड इनकम, मतलब जो डिडक्शन आपने पहले ली थी वो रिवोक करोगे, तो ऐसे केस में डीम्ड इनकम बनेगा। डीम्ड इनकम कितना होगा स्टूडेंट्स, जितना आपने डिडक्शन पहले 35AD में लिया है वो, उसमें से आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, नोशनल डेप्रिसिएशन जो कि आपको मिलता इस एसेट को ये स्पेसिफाइड बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, जो नोशनल डेप्रिसिएशन अगर आपको मिलता अगर आपने 35AD नहीं लिया हुआ, अगर आपने 35AD पहले अगर नहीं लिया हुआ होता तो कितना नोशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाता, वो अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। देयरफॉर उसके बाद जो रिड्यूस करने के बाद जो नेट इनकम आपका जो हो, नेट अमाउंट जो आएगा वही नेट अमाउंट बनेगा आपका द डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 35AD, द डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 35AD। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद उसको मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की तरफ मैंने उसको बढ़ा दिया। तो वो 2 साल के मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो पहले साल का 15, उसके बाद मेरी WDV बन गई 85 की, और दूसरे साल पे 85 पे 15%, तो 12.75। तो ये 2 साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट कर दिया गया स्टूडेंट्स, और फिर मेरी डीम्ड इनकम कितनी बनी है, 72.25, 72.25। अब यही डीम्ड इनकम 72.25 ही मेरा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जो डिडक्शन था वो रिवोक कर दिया, और मेरी कितनी डीम्ड इनकम बनी है 72.25 की, तो यही 72.25 विल बिकम व्हाट, माय एक्चुअल कॉस्ट। तो ये, लेकिन जब मैं एक्चुअल कॉस्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट्स इस केस में, तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करके चलना, एक्चुअल कॉस्ट जो होगा यहाँ पे 100 का है, यहाँ पे जो 100 रुपए का एक्चुअल कॉस्ट है, और उसी एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस आप करोगे क्या, नोशनल डेप्रिसिएशन इफ दी सेड एसेट्स वाज यूज्ड इन कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। मतलब कि इससे जानते हो क्या किया यहाँ पे, प्लीज नोट करके चलना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना। यहाँ पे जब हम एक्चुअल कॉस्ट जब आप निकालोगे, क्योंकि अब निल नहीं होगा एक्चुअल कॉस्ट, ब्लॉक के अंदर जाएगा ना एसेट, तो इट विल नॉट बी निल वैल्यू, ये चीज प्लीज केयरफुल रहना। एक्चुअल कॉस्ट जब हम निकालेंगे एट द वैल्यू एट विच इट विल एंटर इनटू द ब्लॉक, तो उसमें से कौन सा नोशनल डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो नोशनल डेप्रिसिएशन आपको वो रिड्यूस करना पड़ेगा जो आपको मिलता, जो आपको मिलता अगर ये एसेट आप इस्तेमाल नहीं करते। कहां पे, अगर ये एसेट आप इस्तेमाल नहीं कर, सॉरी, नोशनल डेप्रिसिएशन वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, विच डेप्रिसिएशन जो आपको मिलता जो डेप्रिसिएशन आपको मिलता अगर ये एसेट को आप इस्तेमाल करते। कहां पे, इन द बिजनेस इन विच द एसेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब कि यही जो बिजनेस जिसमें आपने ट्रांसफर किया है, उसको उस बिजनेस में अगर पहले से ही अगर आप उस एसेट को इस्तेमाल करते तो अब तक कितना डेप्रिसिएशन आप ले लेते, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। प्लीज नोट करके चलना, यहाँ का नोशनल डेप्रिसिएशन और ऊपर के नोशनल डेप्रिसिएशन में फर्क है। ऊपर का जो नोशनल डेप्रिसिएशन जो डीम्ड इनकम बनाने के लिए हमने जो रिड्यूस किया था, वो नोशनल डेप्रिसिएशन किसके लिए था, नोशनल डेप्रिसिएशन जो कि हम रिड्यूस करते अगर तो वो एसेट को हम इस्तेमाल नहीं करते, अगर तो वो एसेट को हम इस्तेमाल, सॉरी, अगर तो वो एसेट को हम 30, अगर उस एसेट पे हम अगर 35AD डिडक्शन नहीं लेते तो कितना अभी तक का नोशनल डेप्रिसिएशन हमको मिल जाता इन दिस स्पेसिफाइड बिजनेस। तो इस स्पेसिफाइड बिजनेस की बात हो रही है। तो डीम्ड इनकम जब बना रहे हैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस की तरफ नजर होनी चाहिए उस नोशनल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। और एक्चुअल कॉस्ट जब हम 35AD का बनाते हैं तो नोशनल डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में बताइए नजर किस पे होनी चाहिए, जिस बिजनेस पे आपने एसेट को ट्रांसफर किया है
उस बिजनेस से अब तक मेरा नोशनल डेप्रिसिएशन कितना बन जाता। तो इसी वजह से अगर आप नोटिस करना, ये यहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आ जाता है, क्योंकि ये जो बिजनेस जिसमें मैंने एसेट को ट्रांसफर किया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन और जो स्पेसिफाइड बिजनेस था वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग था, लाइक हॉस्पिटल पकड़ लो, होटल पकड़ लो। तो उस स्पेसिफाइड बिजनेस में जब नोशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया गया था तो उसमें कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं था, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग का केस था नहीं, इसलिए नोशनल डेप्रिसिएशन में कोई भी हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे नीचे नीचे क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन अब रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नोशनल डेप्रिसिएशन जब आप एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करोगे तो वो नोशनल डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा जो कि आपको मिलता अगर तो ये एसेट को हम इस्तेमाल करते किसमें, इन दिस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो अमाउंट नोशनल डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट्स रिड्यूस करना पड़ता था, और इसी वजह से देख रहे हो स्टूडेंट्स ईयर वन में देख रहे हो डेप्रिसिएशन दो वैल्यू की रिड्यूस हुई है, और वो है आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन और दूसरा स्टूडेंट्स एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों वैल्यू रिड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स। दैट एक्जैक्टली द पॉइंट। कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स तो बता दीजिए जरा, जल्दी बताएं इस केस में। आइए स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस की तरफ। लेट्स कम टू प्रॉफिट लिंक डिडक्शन स्टूडेंट्स। इस पे एक केस लॉ बैठा हुआ है, वो चीज़ आप लोग ध्यान में रख के चलना। मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था इन माय सुपर 50 लेक्चर ऑल्सो, लेकिन अभी एक बार फिर से लास्टली कंक्लूड कर लूंगा। प्रॉफिट लिंक डिडक्शन में आप लोग नोटिस करके चलना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10AA वाला केस भी बन सकता है क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन के केस में 10AA का केस भी बन सकता है, और दूसरा बन सकता है अदर देन 10AA। तो देख रहे हो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है टोटल इनकम फॉर अदर प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। ये अदर में ATI भी, वो सारी कैटेगरी, और पहला वाला है 10AA। अगर 10AA अगर होगा तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उसकी कंपटीशन पे एक बार बस नजर घुमा लेते हैं ताकि कंपटीशन भी पता रहे। तो PGBP में SEZ यूनिट का जो होगा वो उसको अलग से कंप्यूट करें आप लोग। अगर अलग से कंप्यूट करना आपको पड़े क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको अलग से कंप्यूट करके चलना PGP को फ्रॉम द SEZ यूनिट। उसी तरीके से नॉन SEZ यूनिट को भी आपने अलग से कंप्यूट करना है। फिर अदर हेड्स ऑफ इनकम जो होंगे वो ऐड कर लो, GTI मिल गया चैप्टर 6 से, और फिर आपको अपनी टोटल इनकम मिल जाएगी बिफोर 10AA का डिडक्शन, बिफोर 10AA का डिडक्शन। और फिर ये टोटल इनकम जो है आपका बिफोर 10AA का डिडक्शन, उसमें से अब आप 10AA का डिडक्शन को रिड्यूस करोगे, उस पर कौन सा अमाउंट आप लगाओगे स्टूडेंट्स। तो देखो एक फॉर्मूला आ रहा है 100% और 50%। फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन प्लीज नोट करके चलना है। वो SEZ का जो है वो कितने साल पे, करंट ईयर जो आपका 21-22 है, 21-22 का जो करंट ईयर है वो कितने साल का पीरियड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलना कि ये विद इन दैट 5 ईयर्स पीरियड के अंदर का केस है। लेकिन अगर ये 5 ईयर्स का केस, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली दे दिया है, मान के चलो कि वो बोलते कि 2014 में इसने अपनी SEZ की बिजनेस स्टार्ट की थी, तो ये मोर देन 5 ईयर्स हो गया है इन द प्रीवियस 21-22। तो ऐसे हालात में इफ इट इज मोर देन 5 ईयर्स तो फिर 50% ही आपको मिलेगा डिडक्शन किसका, ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट। अभी क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। ब्रैकेट के एलिमेंट के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब ये एक्सपोर्ट टर्नओवर को डिकोड करो और टोटल टर्नओवर को डिकोड करो। एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर क्या क्या है, अमाउंट रियलाइज इन द फॉरेन करेंसी बाय द SEZ यूनिट। तो जो भी फॉरेन करेंसी में उसको पैसे मिले हैं उसको आप माइनस करोगे, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू ली जाती है, फॉरेन करेंसी में जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो ली जाती है, और उसमें से उस रियलाइज्ड वैल्यू में से आप रिड्यूस करोगे, क्या रिड्यूस करोगे, द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द टेलीकॉम चार्जेस। द रियलाइज्ड वैल्यू उस एक्सपोर्ट टर्नओवर का जो रियलाइज किया है, क्या उस रियलाइज वैल्यू के अंदर कोई रियलाइज पोर्शन ऑफ फ्रेट का है, क्या कोई रियलाइज पोर्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस का है, क्या कोई रियलाइज पोर्शन है उसके अंदर ऑफ इंश्योरेंस, क्या कोई रियलाइज अमाउंट है उसके अंदर अबाउट दी टेक्निकल सर्विसेज जो कि आपने इंडिया के बाहर प्रोवाइड किया। अगर वो भी आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर के रियलाइज्ड वैल्यू का हिस्सा अगर बने हुए हैं तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, तो वो आप माइनस करोगे, और फिर जाके आपको अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल के लाना है। फिर जाके आपको अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल के लाना है स्टूडेंट्स, और अब उस एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंपेयर करोगे किसके साथ, विद द टोटल टर्नओवर।
अब टोटल टर्नओवर, लेकिन टोटल टर्नओवर रियलाइज बेसिस पे लेंगे नहीं आप, डेटा आईसीआईसी देगा आपको कि टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर दोनों को कंसिडर करना आपने। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा स्टूडेंट्स, वो अक्रूड पोर्शन होगा, ना कि द रियलाइज पोर्शन। यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा वो अक्रूड पोर्शन होगा, ना कि रियलाइज पोर्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उस अक्रूड पोर्शन में अगर अक्रूड पोर्शन ऑफ फ्रेट, टेलीकॉम चार्जेस, इंश्योरेंस या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, अगर इस एक्सपोर्ट टर्नओवर जो कि अक्रूड अमाउंट है, इसके अंदर ये सारे भी टुकड़े मौजूद हैं ऑन अक्रूअल बेसिस, तो वो आप उसको बाहर निकाल लें। तो वो चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ लास्ट में देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस को क्यों बाहर निकालते हो? क्योंकि न्यूमरेटर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, एक्सपोर्ट टर्नओवर में कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं होती है। डिनोमिनेटर में आपका टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर में आपका डोमेस्टिक टर्नओवर भी है, डोमेस्टिक टर्नओवर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो सकती है। तो आपने उस डोमेस्टिक टर्नओवर को लाना है विदाउट द ड्यूटीज एंड टैक्सेस एलिमेंट, विदाउट द ड्यूटीज एंड टैक्सेस एलिमेंट। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो आप लोग का जो प्रो रेट अप्रोच बनेगा स्टूडेंट्स, वो ये होगा कि प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एससी ड्यूरेट, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एससी ड्यूरेट इनटू द एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय द टोटल टर्नओवर। तो ये प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर को लगवा देना है ऑन द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एससी ड्यूरेट। और उस पे जो भी क्वालिफाइंग अमाउंट आपका बनेगा, अब उस पे या तो 100% अगर ये 5 ईयर्स के अंदर का केस है तो, या फिर 50% इफ इट गोज बियॉन्ड 5 ईयर्स। तो ये बन जाएगा आपका डिडक्शन ऑफ 10AA। अच्छा, अब अगर आप अदर देन 10AA है तो उस पर ये एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर का कोई केस आएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक फ्रेज कॉमन है, और वो फ्रेज है स्टूडेंट्स, द प्रॉफिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। देख रहे हो यहाँ पे, प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। तो ये जो प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस है, ये दोनों ही सेगमेंट में कॉमन अल्टीमेटली आपको मिल रहे हैं। दोनों ही सेगमेंट में स्टूडेंट्स आपको कॉमन चीज मिल रही है। क्या मिल रही है कॉमन चीज? द प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो ये फ्रेज कोई तोड़ के रखा हुआ है स्टूडेंट इस केस में, प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। तो ये 10AA में भी पाया जाता है सेम फ्रेज, और उसी पे आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर का प्रोपोर्शन लगवा देना है, जिस पर फाइनली आपको 100% या 50% आपको रिडक्शन मिल जाएगा। या फिर ये प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस, आपको एटीआई, ये एटीआई भी, एटीआई एसी वहां पर आपको मिलने वाला। तो ये जो वर्ड डिराइव्ड स्टूडेंट्स, इस पे आप फोकस करके चलना। ये वाला केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। इस पर क्या क्या है ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग स्टूडेंट्स। इस पर स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान से ये चीज देखना, बैंक डिपॉजिट अगर आपने दी होगी एज अ गारंटी, जिस पर बाद में आपको इंटरेस्ट इनकम आपके बन जाते हैं, तो बैंक गारंटी आपने फर्निश करनी थी, तो उसके लिए आपने डिपॉजिट पैसा बैंक में जमा किया, और उस अब डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट इनकम आपका बन रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो उसकी चार्जेबिलिटी पीजीबीपी में जाएगी, केएन को दिल्ली हाई कोर्ट पीजीबीपी में जाएगी। तो सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये पीजीबीपी में जाएगी, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इट विल गो अंडर दी हेड पीजीबीपी। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स इस केस में, अब अगर आप स्टूडेंट्स ये देखोगे इस केस में स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो पीजीबीपी चला गया, पीजीबीपी चला गया, लेकिन क्या ये प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस का हिस्सा होगा? दैट द आंसर इज नो। ये प्रॉफिट डिराइव का ये हिस्सा नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस? वजह सुन लीजिए आप लोग, वजह सुन लीजिए। क्योंकि प्रॉफिट डिराइव्ड में आपने किस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके किस पॉइंट ऑफ टाइम तक के ही अमाउंट को कंसिडर करना है, फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द टाइम जब आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया होगा टिल द टाइम ऑफ सेल और एक्सपोर्ट। बस वहीं तक, वहीं से लेके वहीं तक के जो एलिमेंट्स जो बने होंगे अमाउंट के, उन्हीं अमाउंट को कंसिडर करके आपको अपनी प्रॉफिट डिराइव को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। उसी
एलिमेंट्स के मुताबिक ही आपको अपने प्रॉफिट डिराइव्ड को क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा। और इसी वजह से स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट रिसीव, और उसके आधार पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, मिला है, और उसके आधार पे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स आपकी चालू हो गई है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, और उसी ट्रांसपोर्ट के इवेंट पे गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी दे दी है। अब ये ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी ये पीजीबीपी के हेड में जाएगी, पीजीपी के हेड में जाएगी। लेकिन अब बताएं क्या वो प्रॉफिट डिराइव का भी हिस्सा माना जाएगा? मैंने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कहाँ तक, सेल या एक्सपोर्ट तक, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के इवेंट के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स के अमाउंट को आपने कंसिडर करना है इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या ऑक्ट्रॉय सब्सिडी या फ्रेट सब्सिडी अगर आपको अगर दी जाती है तो वो प्रॉफिट डिराइव का हिस्सा होगा। अच्छा, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर दिया, हाँ कर दिया, सेल कर दिया, कर दिया। सेल या एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल सकती है, और वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मैंने एग्जांपल के रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक बोला है। तो ये तो सेल्स या एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ही ये इंसेंटिव क्या करती है, ये अपने एग्जिस्टेंस में आती है, और इस वजह से ये पोस्ट सेल या पोस्ट एक्सपोर्ट का ये अमाउंट माना जाएगा। और क्योंकि ये पोस्ट सेल या पोस्ट एक्सपोर्ट का अमाउंट है, तो इस वजह से क्या ये पीजीबीपी के हेड के अंदर चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जब डिडक्शन जब हम डिटरमाइन करेंगे अंडर दिस प्रॉफिट लिंक डिडक्शन सेक्शन, और उसके लिए जब हम प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस को कंप्यूट करेंगे, तो उस डिराइव्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज इट इज पोस्ट सेल और पोस्ट एक्सपोर्टेशन अमाउंट। तो ये पहला वर्ड आ गया स्टूडेंट डिराइव को लेके, पहला अमाउंट है डिराइव को लेके। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये है प्रॉफिट पे। दिस इज फॉर द टर्म प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। सो फॉर एज द प्रॉफिट इज कंसर्न, 2A, B and C स्टूडेंट्स ध्यान रखें। पहले पॉइंट पे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन इज द कंप्यूटेड प्रॉफिट। डिडक्शन पर्पस के लिए जो प्रॉफिट हम कंसिडर करेंगे वो है कंप्यूटेड प्रॉफिट। और इसी वजह से बताइए जनाब, अगर कोई डिसअलाउंस अगर होता है असेसमेंट के टाइम पे, जिसके वजह से मेरे ये एलिजिबल बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो क्या वो एनहांस प्रॉफिट को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन? एंड द आंसर इज ये, मुझे एनहांस प्रॉफिट को कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन स्टूडेंट्स, बिकॉज द प्रॉफिट टू बी कंसिडर्ड इज द कंप्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन विद नॉन एलिजिबल यूनिट और द क्लोज एसोसिएट्स के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन किसके साथ, नॉन एलिजिबल यूनिट विद द क्लोज एसोसिएट्स के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपने फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पे ही डिटरमाइन करना है। उस ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट्स आपने फेयर मार्केट वैल्यू के ही आधार पे डिटरमाइन करना है। दैट इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर बी। जहां तक पॉइंट नंबर सी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंसेप्ट ऑफ लीगल फिक्शन स्टूडेंट्स। प्लीज नोट करके चलना, इस पर ये आईसीआई का लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बैठा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को करवा भी दिया था इन सुपर 50 क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो यहां पर स्टूडेंट जो पॉइंट आया था वो क्या था, लीगल। ये जब हम लोग कंप्यूट करते हैं ना डिडक्शन स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन के टाइम पे जब ये प्रॉफिट कंप्यूट की जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस अपने आप में एक लौता बिजनेस है। और क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में एक लौता बिजनेस है, इस वजह से क्या, जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, जो भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस अगर होंगे, जो भी नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस होंगे, तो डिडक्शन पर्पस के लिए जब मैं प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा, डिडक्शन पर्पस के लिए जब मैं प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा, तो जो लॉस है ऑफ द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो क्या उसको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, एंड द आंसर इज नो। ये एक मैंने आपको सुपर 50 के टाइम पर भी ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया था स्टूडेंट्स, जिसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट बनी थी कि ध्यान रखना
कि अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जाम्पल लेना कि ये एग्जाम्पल वापस आ जाएगा, तो मैं वो एग्जाम्पल सीधा आपके सामने बोल रहा हूँ। आपका 80 रुपीज है स्टूडेंट्स, क्या है आपका एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट। आपका नॉन एलिजिबल बिजनेस का जो लॉस है वो है 20 रुपीज। आपका IFOS है 30 रुपीज का। तो एलिजिबल बिजनेस 80, नॉन एलिजिबल बिजनेस 20, IFOS कितना है 30 का। GTI आपकी कितनी हुई है, तो 80 माइनस 20 प्लस 30, तो GTI आपकी हो गई है स्टूडेंट्स 90 की। अच्छा, अब जब प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, जब चैप्टर 6 में प्रॉफिट ली डिडक्शन दोगे जिसके लिए आपको कंप्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, तो वो प्रॉफिट पे बताइए जरा आप कितना अमाउंट का डिडक्शन आपका बनेगा, 80 या फिर 60। 80 या फिर 60, आपका GTI 90 का है, ठीक है। 80 होगा या 60 होगा, बिल्कुल सही। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 80 तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस डिडक्शन विल गेट रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू ₹80। 60 नहीं बोलेंगे आप, मैंने बताया ना कि लीगल फिक्शन अप्लाई करना है, और लीगल फिक्शन बोलता है कि डिडक्शन पर्पस के लिए हमें ये नॉन एलिजिबल बिजनेस के जो अपने लॉस होंगे वो कंसिडर नहीं करना है इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। In determining the profit for the purpose of deduction, students, is that clear to all of you? Fine. अब आखिरी में स्टूडेंट्स ये देखोगे आप सभी लोग, ये वाला पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ये चार बड़े सेक्शन स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये चार बड़े सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। लॉस ऑफ वन पर्सन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ बाय अनदर पर्सन। ये चार, ये केस में ध्यान रखना। ये तो बात सही है कि एक पर्सन का जो लॉस है वो दूसरा पर्सन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ये सारे लोग मानते हैं इस बात को। एक पर्सन का जो लॉस है दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय अनदर पर्सन, ऑल ऑफ यू एग्री। जिसका लॉस है बस वही कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन क्या इसके अपने कोई स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। दो केस में, दो केस में आपको इसके स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन मिलेंगे स्टूडेंट्स, और वो है आपका एक 72A, जहाँ पे लॉस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन द हैंड्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी। उसी के साथ साथ द लॉस ऑफ द प्रेडेसेसर जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इन द हैंड्स ऑफ द सक्सेसर। प्रेडेसेसर फर्म जो होगी वो उसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कौन कर सकता है, सक्सेसर कंपनी। उसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पहले थी और वो उसकी लॉस अगर है, वो कैरी फॉरवर्ड कौन कर सकता है, बाय द LLP। जो LLP बना है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और जो कैरी फॉरवर्ड वो जो करेगा स्टूडेंट्स, वो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा, फॉर अनदर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। फॉर अनदर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स तक का वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अभी कैरी फॉरवर्ड में वो क्या करेगा, प्लीज नोट करके चलना। कैरी फॉरवर्ड में दो चीजें ध्यान रखेंगे आप। पहला है आपका दी बिजनेस लॉस अदर देन अ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस अदर देन अ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और अगर मान के चलो कि अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, अमालगमेटिंग कंपनी क्या है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD वाली थी, और उसका होटल बिजनेस मान के चलो जो कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर वो होटल बिजनेस से उसको लॉस है और वो फिर बाद में अमालगमेट होता है दूसरे किसी होटल के कंपनी के साथ, अगर वो अमालगमेट हो जाता है, तो इसकी जो लॉस होगी वो 73A के अंदर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है क्या, कि क्या ये जो बिजनेस लॉस है जिसको 73A में कैरी फॉरवर्ड किया गया, क्या ये अपने आप में एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस माना जाएगा? द आंसर इज नो। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस का कैटेगरी नहीं है, और इसी वजह से ये लॉस को आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करवा दोगे किसके हाथ में, इन हैंड्स ऑफ दी अमालगमेटेड कंपनी। सेकंड पॉइंट, प्रेडेसेसर का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इन द हैंड्स ऑफ दी अमालगमेटेड और सक्सेसर कंपनी। प्रेडेसेसर का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इन द हैंड्स ऑफ दी अमालगमेटेड और सक्सेसर कंपनी, ठीक है। अच्छा, अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि क्या प्रेडेसेसर का आप अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च या अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी फैमिली प्लानिंग, क्या ये दोनों अमाउंट को भी आप आगे कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो? द आंसर इज यस, बिकॉज दे आर ट्रीटेड विद ए, बिल्कुल सही, दे आर ट्रीटेड एट पार विद दैट ऑफ UAD।
they are treated, students, at par with that of what? With that of the unabsorbed depreciation, students. With that of the unabsorbed depreciation, students. Is that clear to all of you? ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उसको यूएडी का दर्जा दिया गया है इस वजह से अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग एंड द अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों को भी आप क्या कर सकते हो, आगे कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। तो ये है 72A। बस स्पेकुलेटिव बिजनेस पे ध्यान देना कि अगर कोई स्पेकुलेटिव लॉस अगर होगा तो वो आगे अमालगमेटेड कंपनी या सक्सेसर वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। अब 78(2) 78(2) में और एक केस में प्रेडेसेसर का लॉस को सक्सेसर क्या कर सकता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन वो सक्सेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की वजह से अगर ये सक्सेशन हुआ है, इनहेरिटेंस की वजह से स्टूडेंट्स अगर ये सक्सेशन हुआ तो फिर क्या कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? द आंसर इज यस। क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा वो एक मधुकांत एम मेहता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर शायद बनेगा स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान देना आप लोग। उसपे फादर का डेथ होता है और वो फादर का जो अपना बिजनेस है वो उसकी जो सन है, दो बेटे हैं उनके, दोनों पार्टनरशिप फर्म बना के वो आगे वो सेम बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर परस्यू करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो फादर है विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जो फादर है विच इज द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, उसका लॉस, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म जो विच कंप्राइजेस ऑफ बोथ दी सन, तो क्या वो ये लॉस को ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ये बिजनेस माना जाएगा, ये दोनों बच्चों ने क्या किया इनहेरिटेंस पे, ये क्या है इनको विरासत में मिली है। तो एक बार उनको विरासत में मिली है, हाँ मिली है, तो अब वो किस फॉर्म से वो बिजनेस करना चाहेंगे वो उन पर निर्भर करता है। तो द फॉर्म कैन बी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, सो बे इट डजंट मैटर, द फॉर्म कैन बी स्टूडेंट्स एनीथिंग, डजंट मैटर इन दिस। लेकिन क्या ये इनहेरिटेंस का ये केस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। So this would be considered as a case of an inheritance, and therefore this partnership firm, which comprises of both the brothers, can definitely carry forward the losses of the predecessor, which is the individual. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि ये दो भाई है, इसके अलावा एक थर्ड पार्टी को भी उन्होंने कंसिडर किया है एज अ पार्टनर और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, तो बताइए जरा आप, क्या अब इनहेरिटेंस का कोई केस लग रहा है आपको? अब ये स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस का केस नहीं है, बच के रहना इस बात को लेके। फाइन। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे प्रोविजन टू चेक द अब्यूज ऑफ द अबव प्रोविजन, तो ऊपर वाले प्रोविजन का अब्यूज ना हो, मतलब कि क्या होता है कि जैसे ऊपर वाला प्रोविजन क्या बोल रहा है कि जिस पर्सन का लॉस है वही उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसके हमने दो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अभी देखे थे, 72A एंड 78(2), ये दो उसके स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। लेकिन ये जो जनरल प्रिंसिपल जो बताया है आपको, उसको बचाने के लिए दो प्रोविजंस को लाया गया है स्टूडेंट्स, और वो दो प्रोविजंस क्या है वो ध्यान रखना है, 78(1) और दूसरा है 79। 78(1) जो है स्टूडेंट्स वो किसके लिए डाला गया? पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो क्या बोला जाएगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि जितना भी दो चीज यहाँ पे, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म में क्या देखा जाता है स्टूडेंट्स कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, वो आउटगोइंग पार्टनर स्टूडेंट्स अपना टुकड़ा जो लॉस का है, अपना जो टुकड़ा है स्टूडेंट्स लॉस का, उतना तक का टुकड़ा क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। दैट मच पोर्शन ऑफ द लॉस व्हिच इज attributable to the outgoing partner as on the date of his retirement or death if it is a change in the constitution, उतना टुकड़ा लॉस का फर्म के हाथ में लैप्स हो जाए। प्लीज नोट करना कि ये जो लॉस हो रहा है बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं, का मतलब ये हुआ कि अगर फर्म का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो दैट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कंटिन्यू टू बी अलाउड to be deducted without any portion of UAD being lapsed. Without any portion of UAD being lapsed, पूरा UAD will be continued for the purpose of deduction. Is that clear? तो ये हो गया 78(1) और उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहा है आपका सेक्शन 79।
79 क्या बोल रहा है? लॉस ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी, लॉस ऑफ होम, लॉस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी की लॉस। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना स्टूडेंट, एक स्टार्टअप का भी केस है, ध्यान रखना इस केस में स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर मैं अभी इसको कंप्लीट करूंगा कि आई थिंक मेरी स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ अभी मैसेज भी डाला था कि सर जैसे इलेक्टिव कंप्लीट होगा आप उसके बाद आप बैलेंस कंटिन्यू कर लेना, तो मैं चलो मान रखता हूँ, वो बैलेंस मैं उसी के हिसाब से फिर कंटिन्यू आगे करता हूँ। इफ दैट इज क्लियर टू, इट्स ओके टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बैलेंस में जैसे कि मैंने कहा फिर एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग ये हो जाएगा, और फिर आपकी टीडीएस, टीसीएस, ट्रस्ट टैक्सेशन, पैट एंड ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में डिविडेंड टैक्सेशन। तो ये वाले जो होगा उसको मैं कंसिडर कर लूंगा ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। इलेक्टिव का पेपर जैसे कंप्लीट हो जाता है तो उस दिन शाम को 6 बजे अभी हम लोग ये सारे टॉपिक को गो थ्रू कर लेंगे। ये लंबा जाएगा, रात तक होगा, सो भी डजेंट मैटर, कंप्लीट दिस फॉर नाउ। फाइव स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए 4 पे से स्टूडेंट्स, यहाँ पे 78 1 एंड 7, यहाँ पे 79 में। तो लॉस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है आपकी स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देख रहा है स्टूडेंट्स की वो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी, जिस साल का लॉस हुआ है और उसके अगले साल जो कॉमन शेयर होल्डर है, जिस साल का लॉस है एट द नेक्स्ट ईयर, उसमें कॉमन शेयर होल्डर मोर देन 50% दोनों सालों के होने चाहिए। अगर दोनों सालों के मोर देन 50% का ये केस, तो वो बिजनेस लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मोर देन 50% उन दोनों सालों के लिए अगर नहीं है तो वो लॉस उसी साल लैप्स हो जाएगा। तो वो लॉस उसी साल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लैप्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्राइटेरिया है। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस पॉइंट प्रोविजन में भी यूएडी पे कोई आंच नहीं आएगी, तो भले ही वो नेक्स्ट ईयर में 50% से कम हो जाए कॉमन शेयर होल्डर्स, तब भी यूएडी पूरी तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यूएडी पूरी तरीके से आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट इज द पॉइंट। दूसरा अगर आप देखोगे 79B, दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स वो है 79B का। 79B क्या है? वो सिर्फ स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप क्या बोलता है? स्टार्टअप वालों के लिए दो कंडीशंस देखें, दो चीजें देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। तो अगर स्टार्टअप कंपनी को दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई अगर हो जाएगा, स्टार्टअप कंपनी जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो स्टार्टअप कंपनी अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो फिर उसका बिजनेस लॉस क्या हो जाएगा? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वो दो में से कोई भी एक उसको सेटिस्फाई करना है। तो दो में से कौन सा है? पहला तो आपको बोल ही दिया मैंने। क्या पहले बोल दिया? कि जिस साल लॉस हुआ है और उसके अगले साल कॉमन शेयर होल्डर दोनों सालों में मोर देन 50% होने चाहिए, या तो ये सेटिस्फाई कर दे तो जाके लॉस वाला जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या फिर उसका और एक कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या स्टूडेंट्स? या फिर सेकेंड कंडीशन उसके लिए ये है कि जिस साल अल्टीमेटली उसका लॉस हुआ है उसमें तो चलो सारे शेयर होल्डर कौन है अपने को पता है, लेकिन अगले साल हो सकता है कि शेयर होल्डर 50% से कम हो, कॉमन शेयर होल्डर 50% से कम हो जाए, तब भी वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा इन द नेक्स्ट ईयर। इफ व्हाट? इफ द शेयर होल्डर जो थे इन द ईयर ऑफ लॉस और अगले साल में दोनों की नंबर ऑफ शेयर सेम अगर है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर दोनों सालों में अगर उनका सेम अगर है स्टूडेंट्स, तो फिर वो क्या कर सकता है? लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? नंबर ऑफ शेयर सेम है और इसके 50% से कम हो चुका है। पॉसिबल है ना, उन्होंने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा के नए शेयर होल्डर को इंट्रोड्यूस किया होगा। ऑथराइज शेयर होल्डर को बढ़ा के नए शेयर होल्डर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो नए शेयर होल्डर आए हैं उसके वजह से ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका रेशो 50% से कम हो चुका है, लेकिन वो अभी भी उतने ही शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं जितने की वो पिछले सालों में करते थे। तो उसकी वजह से उनका नंबर ऑफ शेयर सेम है बट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो गया। क्या तब भी ये लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा? तो दैट द आंसर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब ये कंप्लीट मैंने कर दिया आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से, और एक बेहतरीन अब मैं इम्पैक्टफुल फाइनल अपना आप लोगों के लिए रिवीजन डलवा दूंगा स्टूडेंट्स। कहाँ पे? ऑन द डे ऑफ द इलेक्टिव पेपर 6 बजे हम शुरू करेंगे
और एक बेहतरीन फाइनल रिवीजन ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन ट्रांसफर प्लानिंग आपका है दी टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस, और उसके बाद आपका ये जो दूसरे टॉपिक है ट्रस्ट टैक्सेशन, वो मैं आप लोगों को फाइनल डे पे डिविडेंड टैक्सेशन, ऑल्टर टैक्स रेजिम और मैट, तो ये टॉपिक्स को मैं फाइनल डे पे अल्टीमेटली इलेक्टिव पेपर के शाम को 6 बजे स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करवा दूंगा। इसके बाद में ये जैसे रिवाइज हो जाए ना स्टूडेंट्स, आप मुझे अगर 1 घंटा उसके बाद अगर एक्स्ट्रा दोगे तो मैं डेप्रिसिएशन और आईसीडीएस 1 घंटा और एक्स्ट्रा उसके बाद दोगे तो मैं डेप्रिसिएशन और आईसीडीएस उड़ा दूंगा आप लोग के लिए स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन और आईसीडीएस तो वो सबसे लास्ट में मैं वो कंप्लीट करवा के ये चीज कंप्लीट कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? बताइए जनाब, अगर सारी जनता रेडी है बता दो, या इसके अलावा कुछ चाहिए तो मुझे अभी आप बता सकते हो, तो मैं वो कंसिडर करते हुए आप लोगों तक पहुंचूंगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब आप लोग को पता ही है जिस तरीके से आपने ये दोस्तों को स्टूडेंट्स पहुंचा दीजिएगा बात, मई 23 नवंबर 23 को एट इनक्रेडिबल लो प्राइस, विदाउट बुक्स या विद बुक्स, विदाउट बुक्स में पीडीएफ दे दी जाती है या विद बुक्स एज द केस में भी, एट अ वेरी इनक्रेडिबल लो प्राइस स्टूडेंट्स। मई 23 नवंबर 23 वालों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच 250 आवर्स का अनअकैडमी के अंदर स्टूडेंट्स ये अब आ चुका है स्टूडेंट्स। ये हिंदी में अभी और 100% इंग्लिश में 18 नवंबर, हिंदी में तो आपको अब तुरंत मिल जाएगा इसके अंदर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूँ, आप अपने दोस्तों तक स्टूडेंट्स प्लीज ये पहुंचा दीजिएगा, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जिनका आइटम मई 23 और नवंबर 23 में होगा। 250 आवर्स में 5 मॉड्यूल का ये पूरा कवरेज जिसके अंदर सारे प्रैक्टिकल्स स्टडी मैट के आपके पास्ट एमटीपीज आरटीपीज प्लस जो भी आपके एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, मोर देन 500 क्वेश्चन इस पूरे 5 मॉड्यूल के अंदर कवर किया गया। तो कंसेप्ट के साथ साथ बहुत जबरदस्त क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स इस रिकॉर्ड सेशन के अंदर। ये प्लीज आप अपने दोस्तों तक बात पहुंचा दीजिएगा ताकि वो इसका लाभ ले पाए, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको सीधा एग्जामिनेशन डे इलेक्टिव पेपर जैसे कंप्लीट हो जाए 6 बजे आइएगा, और उसमें एक बहुत बेहतरीन रिवीजन विद मैं सारे प्रैक्टिकल्स को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल्स अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? मतलब कि वो मेरे डिस्कशन का एक हिस्सा बन जाएगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। कि सुपर 50 में तो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल किया था, अब एग्जामिनेशन डे के रिवीजन में उसी के बारीक पॉइंट एक एक करके जो आते हैं वो मैं उसको सुपर इम्पोज कर करके अल्टीमेटली आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, और इस तरीके से कार्रवाई को कंप्लीट की जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स मुलाकात करते हैं अब ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एक मैराथन कितने घंटे का होगा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो वो कम से कम पकड़ के चलो 6 से 12 तो बच जाएंगे, उतना टाइम तो देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मानते हो इस बात को? चलिए विद दैट स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्टिव पेपर, अच्छे से कर कर आओ। मुलाकात करेंगे स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट। Hello students, how is this all students visible herein? Please confirm once. Students, now then, we'll start on this particular aspect. Just very quickly, I'll just make this announcement so that other students, just there was a technical snag earlier. So students, before the others can join, just a very quick announcement. Students, now we have got a subject-wise offering for the direct tax paper as well. So subject-wise, students can take up the subscription at an incredible price, and that you can see here in our recorded lectures in English would be made available from 18th of November, students. So from 18th of November
100% English recorded lectures, studio recorded lectures would be available at an incredible price. So there is a 6 months, for the 6 months period, for those students appearing for May 23, November 23, they can buy the lectures. Iconic subscription students 8499, and the plus which comes with the textbook primary, sorry, Iconic which comes with the textbook comes at 8499, and if you put the code CADS, there is a 10% discount on the same. And thereafter the plus subscription which is given is for 5299, and again in that also, if you put the code CADS, then you get again a 10% discount. So this is precisely what this particular feature is all about in this context, students. Now we will start, students, with the discussion which has been there over here. So students, entire planning now in this context, we are going to deal with it. First, students, today's session I'm going to take across the big provision of PGBP. The big provision of PGBP, students, which is very time consuming in this context. So therefore, I will be doing the big provision of the PGBP. Yesterday I did in Hindi, and I am right now doing it in English. So very quickly, the next 2 hours, students, the next 2 hours, we will try to finish it off this particular area of your PGBP provisions. So coming on the first, the deduction on the deposit, which is as a percentage of the PGBP, the deduction on the deposit, which is as a percentage of the PGBP, section 33AB, and then thereafter there is section 36(1)(a). So this deduction primarily that we are going to discuss would be in respect of a percentage of a PGBP. So there would be a percentage applied on the profit and gains from the business and profession of that particular SSE, and on that the deduction would be computed. Two sections are there for that matter, 33AB and 36(1)(8). Let's look upon to this one by one. First one, students, is the tea, coffee, rubber development allowances, 33AB. Now here, if you all see in this context, in this question, students, I expect in your examination can be either in the form of a total income question, or it could be in the form of a separate, students, it could be either in the form of a total income question, or it could be also be in the case of an MCQ. There could be a two possibilities so far as this particular area of your question is concerned. Students, in the total income question, if there is a very one popular adjustment that they give in the examination, one very popular adjustment that they all give it in the examination, and that adjustment is in respect of growing of the tea leaves. So if there are tea leaves that have been grown in your field, in your tea field, and that tea leaves is directly sold in the market, so you grow the tea leaves and that is directly sold in the market, then on that the sale you get a full exemption under section 10(1). On that particular sale amount you get a full exemption under section 10(1), and that is the first particular point. So if it is only about the growing of the tea leaves, coffee bean, or the rubber plant, and directly that has been sold without using them for the manufacturing process, then a full exemption under section 10(1) is available. But the other activity which is there is about the growing plus the manufacturing, both the growing plus the manufacturing. Now so far as the growing plus the manufacturing is concerned, students, in this particular context there is a deduction of 33AB that will come into picture, plus there is this rule number 8 of splitting up between the agricultural and the non-agricultural component also will come into play. So what you need to do in this regard, students, this is what you all need to do. Just have a look over here in this context, students, in this scenario. So if you see over here the assessment year, within 6 months from the end of the previous year, the deposit, you need to make a deposit in the NABARD account. Within that 6 months from the end of that particular previous year, students, you will have to make a deposit in the NABARD account. So if your previous year 21-22, so end of 31st March 2022 plus 6 months you get up to 30th of September 2022. So within that particular period, if you deposit the money in the NABARD account, you get the deduction under section 33AB, and the deduction that you can see over here, students, in this context is the deduction which is lower of what? The lower of the two amounts, and that is about the amount which you deposit in the NABARD would be compared with 40% of PGBP before giving the deduction under section 33AB. The amount that you have deposited in the NABARD account, you will compare this with 40% of PGBP before deduction under section 33AB, and that is the kind of the amount that will get qualified in this regard. Okay, so this is how the deduction will have to be operated. So you compute your PGBP normally. Now students, you have to be very careful in this case. If this question comes in the total income particularly,
So I'm repeating this particular point again, and this you just be very careful about this one. If this question comes in the total income, the first thing, this information about the SSC depositing the money in the NABARD, that they will give you as an additional information. And what you need to do, what is the approach in this kind of a question, is that the first and the foremost thing that you need to do is that you compute your PGBP normally. All of you will ensure to compute your PGBP normally. So do compute a PGBP normally. That is the first thing that you will all do. And once you have computed the PGBP normally, means, when I say normally, means you first take into account all the common adjustment. First take into account, students, all the common adjustment, compute a PGBP normally, and once that has been done, the PGBP has been computed in the normal manner. Thereafter, students, thereafter what? Thereafter, primarily then go and take up the deduction of 33AB, because the deduction of 33AB will require you to first compute your PGBP normally, because the deduction percentage of 40% has to be applied on the PGBP before giving the deduction of section 33AB. So that is the reason why you will have to do very carefully this particular total income question, where you will first deal with all the common adjustments and deal with that first, and thereafter come up at the last particular adjustment of 33AB, and on that adjustment of 33AB, whatever is the profit and gains that you have computed up till now, apply 40%, and that 40% will then be compared with the amount that you have actually deposited in the NABARD account. The amount that you have actually deposited in the NABARD account. So this is the set of the comparison that you need to do, and the lower of the two amount is finally the amount of deduction. After taking the deduction, students, after taking the deduction, thereafter then comes your rule number 8, 7 and 7B, wherein the split between the agricultural and the non-agricultural particular point will appear in this case. Now if you see the agricultural component 60%, rubber it is 65%, and for the coffee, students, it is 75%. That is the kind of a percentage that has been provided to us, 60, 65 and 75% respectively. Now in this particular case, students, you have to be careful on the coffee part. Sometimes if it is a processed coffee, so coffee normal rate is 75% agricultural, 25% is the non-agricultural component. But if it is a processed coffee, then it is a split of 60-40 that you will have to take into account to decide how much of the portion will be considered as a non-agricultural income. So that is how you will have to deal with this particular proposition, students, in this particular context. Thereafter, students, the taxable portion is the balance 40%, 35% or 25% as the case may be. That is the taxable portion of the head PGBP. That is the taxable portion of the head PGBP, students. And thereafter, students, can you see this one? Less brought forward business loss from the taxable portion of 40, 35, 25. You will then reduce the brought forward loss under section 72. That is also that you need to keep in mind. From the taxable portion, students, you need to now reduce that brought forward business loss. Why? Because the losses of the earlier year which you have to carry forward, that carry forward of losses would only be in respect of the assessable portion, and the assessable portion happens to be 40, 35 and 25 respectively. So that is the reason why only from that 40, 35 and 25% of your current year taxable profit and gains, that you will reduce the brought forward business loss of under section 72, and that is what you do, and that will finally fetch you your PGBP. That will finally fetch you, students, your PGBP, and thereafter, students, the other heads of income needs to be added on this, and you will thereafter will get your GTI, and from your GTI, chapter 6A deduction will have to taken into consideration. Now, students, please be very careful in the chapter 6A over here, and also take a note of one important thing. Students, 33AB deduction, or I will tell you later on. A bit later on, I'll just put that remark. Chapter 6A deduction, the chapter 6A deduction that they could provide to you would be in respect of the two particular aspect. One happens to be ATJJAA and another happens to be ATM. So these are the two sections where your chapter 6A deduction will be considered. ATJJAA and another is, students, ATM. That deduction you are going to provide, and finally you will get what? You will finally get your total income in this case. So this is how you will determine your total income, students, and that is the question number 1 on the computation of total income, and this is what you all need to deal in this particular context. Now this is how I expect a total income question to be formulated considering 33AB deduction.
Now there is a second particular part which is about the MCQ based question that could be there, and that is what will happen about that amount that you have deposited in NABARD on which you have taken the deduction under 33AB. Thereafter what happens is that subsequently from that NABARD account you will withdraw the money. On the withdrawal, students, there would be a case of a non-utilization of the amount. Non-utilization would mean that whatever money that you have deposited in NABARD, you could not utilize it fully by the end of the previous year. Whatever money that you have deposited in the NABARD, you could not utilize this fully by the end of the previous year. So that will be a case of a non-utilization of the amount. Okay. That will be a case of a non-utilization of the amount. So whatever is the withdrawal that you have done during the year, and by the end of the year, the amount which could not be utilized for the purpose of the scheme, that portion of the non-utilization, would be considered as a deemed income under section 33AB. Will be considered as a deemed income, students, under section 33AB. Okay. Now there is another particular part, and that another particular part is the case of a misutilization. There is another particular part which is a case of a misutilization, students. Now misutilization would mean that they will tell you that this is not as per the scheme. That is not as per the scheme, students. So in this particular case, students, which has been there, in the case of a misutilization, students, misutilization would imply that if you see about misutilization, they will directly, it will not be as per the scheme. They will simply give you in the question that look, this amount that has been utilized is not as per the scheme. So if it is not as per the scheme and the money has been utilized, straight away it will be considered as what? As a deemed income under section 33AB. It will be considered, students, as a deemed income under section 33AB. But if you happen to utilize this particular amount as per the scheme, if you happen to, students, to utilize this particular amount as per the scheme, now there could be a two particular case that could be given in the question, and therefore you have to be careful about it. They can tell you that this particular amount has been utilized for the purpose of meeting up the revenue expenditures. This amount has been utilized for the purpose of what? For the purpose of meeting up of the revenue expenditure. And if the particular amount has been utilized for the purpose of meeting up of the expenditure, then in that particular case, that amount so utilized for the purpose of meeting up of the revenue expenditure will also be disallowed under section 33AB. Will also be disallowed, students, under section 33AB. This is what it would be considered in this regard. So the revenue expenditure, students, which has been utilized as per the scheme will also be subject to a disallowances under section 33AB. So they could tell you that from the amount which has been withdrawn in the NABARD, they have paid the salary. Disallowed. You'll say, why disallowed? Because already you have been given the deduction at the time of making the deposit in the NABARD. So again, from the withdrawal, if you incur these regular revenue expenditure for the purpose of your business, it will result into a double deduction, and that is the reason of the disallowance that is to be made. But there is one particular case of tax planning that you all are aware, that instead of that, if I withdraw the money and I am incurring a capital expenditure for acquiring an asset, then for incurring a capital expenditure, students, for acquiring the asset, I will be eligible for a depreciation allowance. So depreciation allowance would be made available to you in that regard, students, and that is what it is in this regard. However, for that particular asset, students, you should understand that here the condition that has to be fulfilled is that there has to be an 8 years period of lock-in. So therefore the asset that has been purchased should be held for a period of at least 8 years from the date of its acquisition, and which implies that if supposingly the asset has been transferred within the period of 8 years, so whatever deduction that you have claimed earlier on the deposit of the money in the NABARD to the extent of that particular fund which was used for the purpose of acquiring the asset, that particular amount will result into a deemed income under section 33AB. So therefore this gets nullified.
How it gets nullified? First, you got the deduction at the time of deposit. Now, the fact that you have transferred it within the period of 8 years, this will get squared up. It will get nullified. The deduction will get nullified. PGBP comes at the level. First, you got deduction. Thereafter, it became deemed income because of the default. So, the PGBP gets nullified. And thereafter, over and above that, there is a capital gains implication because PGBP, we have squared up this particular head by considering the default as a deemed income. So therefore that head is squared up, and thereafter students, on the transfer of the asset, there would be a case for a capital gains. There would be a case for what, students? For a capital gains, and that is what it is in this case. Now everywhere, students, wherever there is a deemed income which is given to you, students, wherever there is a deemed income which has been given to you, on that particular deemed income, students, you will do this particular percentage of 40/60, 35/65 and 25/75, because see, please understand, the deposit that you have done in the NABARD and that got to deduction of 33AB, after getting the deduction of 33AB, that you do rule number 8. After getting the deduction of 33AB, thereafter you are doing rule number 8, which therefore implies that students, even the deduction that you have got in 33AB is subject to a subsequent split of rule number 8 between 60% of the deduction would be considered as towards the agricultural income, or 65% or 75% would be considered as towards the agricultural income, and only the balance portion of the deduction of 40%, 35% and 25% would be considered towards the assessable portion. Will be considered towards the assessable portion, and therefore only to the extent of that assessable portion that it will result into a deemed income. Only to the extent of the assessable portion that it will be considered as what? As a deemed income, and that is what you need to always keep in mind. The taxable portion of deemed income. So therefore, whenever the money has been withdrawn from the NABARD and there is a case of non-utilization, or there is a case of a misutilization, or there is a case of a default within that period of 8 years when the asset has been transferred, the deemed income that will be considered as a taxable amount under 33AB will be restricted only up to how much, students? The deemed income that will be there in this case, students, would be, the taxable portion would be only up to 40%, 35% and 25% respectively. 40, 35 and 25% respectively, students. Just keep that particular point in mind, because the deduction that you have got finally in 33AB was only 40%, 35% or 25% being the non-agricultural portion, because the balance portion of deduction is 65 and 75 were towards the agricultural portion, and hence it is something which is not accessible. So whatever is accessible only finally will be considered as a deemed income, which is a taxable portion of the deemed income in this case. This particular case of the misutilization, non-utilization aspect, students, I expect those to be considered in the MCQ. But you just be very careful about this particular section, very likely for November 22 examination, and that is what it is. Coming on the next particular part of section 36(1)(8), this section also provides you the deduction as a percentage of PGBP. This section also provides you the deduction as a percentage of PGBP 36(1)(8). Now students, here is about the case of a contribution to the special reserve by, so there is special reserve in which the contribution is made by the financial institutions or the banking companies. Now on that also, if you see, there are 3 layers of comparison which you need to do in this case, and lower of the 3 layers is what will be the deduction that will be allowed to you. Now here, students, I expect also in the examination that they will give you, as far as 36(1)(8) is concerned. Earlier in the old attempts, this was like a full-fledged question that was being targeted, but I expect now that in the change times, you will be getting this particular 36(1)(8) in the form of an MCQ. So how much is the deduction that will be allowed in 36(1)(8)? Lower of the following 3. And the 3 layers of comparison that you need to do, first is whatever you have deposited the amount in the special reserve account, that is the first particular point. Whatever is the amount that you have deposited in the special reserve account, students, that is the first particular point. Thereafter, the second amount is 20% of PGBP under section 20% of PGBP before section 36(1)(8). So first and second layer of comparison that we do is more or less equivalent to what we discussed in 33AB.
There also amount deposited in NABARD is thereafter compared with 40% of PGP. Here also amount which you deposit in the special reserve account, that is compared with 20% of PGBP before section 3618. So more or less both of them resembles to be one and the same, except for the percentage which is earlier in the case of 40%, here it is a case of 20%. But the third particular comparison is where you will find your answer to your question that will be targeted. The third particular variable which you need to consider for the purpose of determining the quantum of deduction of 3618 is 2 times of the paid up share capital, which is equity plus the preference. 2 times of the paid up share capital, which is equity plus preference, plus the general reserve balance as on 31st of March of the previous year. General reserve as on 31st of March of the previous year. So in that particular context, if you see very carefully, the share capital is both equity as well as the preference. The share capital, students, is both the equity as well as the preference. And plus on that, there is a general reserve balance as on 31st of March of the previous year. So paid up share capital plus the general reserve balance as on 31st of March of the previous year, you do the total of the same. And of the total of the same, thereafter multiply it by 2. So thereafter on the total of the same, thereafter you multiply this with 2. And that is what would then be careful students, it is the balance as on the last day of the previous year. So general reserve balance as on the last day of the previous year is what you need to consider. Okay, and on that weighted amount of 2 times of this paid up share capital plus the general reserve as on the last day of the previous year, you will reduce the special reserve balance which is there as on the 1st of the April of the previous year. So whatever is the special reserve balance as on the first day of the previous year, that is what, students, you are going to reduce it. Is that clear to all of you? Is that particular point clear to all of you? Now here, if you have done some past questions, you would have realized that the special reserve balance information in the question would also be of the last day of the previous year. You would have realized by doing some of the questions, the information that they will provide to you would be of the special reserve balance as on the last day of the previous year. But we require, for the purpose of computing this particular variable, we require the special reserve balance as on the first day of the previous year. So how do you determine the special reserve balance as on the first day of the previous year? So from the last day balance, you need to reduce whatever is the amount that you have deposited during the current year. From the last day balance, students, you will have to then reduce whatever is the deposit that you have done in the special reserve account during the previous year, and after reducing it, then after you will get the special reserve balance as on the first day of the April of the previous year. As on the first day of the April of the previous year, and that is what this point number 3 is all about. Coming to the next one, students, which is in respect of the banking company. Banking company, students. Now this, students, banking company, again, this is again a most important section for your attempt. One of the most important section, students, and the checklist for the banking company has been given to all of you. A question that could be there for the total income that could be targeted over here. Now my point to all of you over here is that, students, you have to also be very flexible. Now since we have got the alternate tax regime, students, first of all, understand over here, I'll discuss on alternate tax regime also on this, but maybe towards the end we'll discuss on this alternate tax regime. Let's see what is a special provision which is available to the SSE who are engaged in the banking business. So students, in the case of an SSE in the banking business, they are getting the deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts. They are getting deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts. For all the other SSE students, for all the other SSE, the deduction that has been given to them is on the basis of the actual write-off of the bad debts in the books of accounts. So only when you do the actual write-off of the bad debts in the books of accounts, that you get the deduction for all the remaining SSE. But so far as the banking companies are concerned, they are getting the deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts. Now what is the deduction that you all get, students? The deduction that, students, you all get in this regard is, if you all see it very, very carefully. So for the foreign bank, primary, let's split the banking structure into two. There is a foreign bank, then there is a public, there are cases of the non-banking company like public financial institution,
the state financial corporation, or even the NBFC, like you have the, like, they can give you IDBI, IFSCI, they are the public financial institutions, or even the NBFC students. For all this category, the deduction that is given of the provision for bad and doubtful debts in respect of the PGBP computation is only up to 5% of the GTI. But students, be very careful on this one. This is a 5% on the GTI, which is before the deduction of section 36(1)(7)(a). So this, you get the deduction. The deduction is of 5%. That 5% is of the GTI, but the GTI before section 36(1)(7)(a). The GTI before section 36(1)(7)(a). So 5% of the GTI, but before section 36(1)(7)(a) is the amount of deduction that has to be considered over here. This is, I'm talking for the non-banking company. Okay. Now that is 5% of the GTI, but before the deduction of section 36(1)(7)(a). As far as the banking companies are concerned, students, as far as the banking companies are concerned, the banking companies could be split as a foreign bank. So far as the foreign bank is concerned, again they have got the same particular 5% of the GTI before the deduction of section 36(1)(7)(a). Before the deduction of section 36(1)(7)(a), students, that is what they get it, point number 1. And as far as the others are concerned, students, so far as the others are concerned, means other than the foreign bank, for all of them, students, in this case, you get what, students? You get herein for all the remaining other category, students, for all the remaining other category family, like your HDFC, ICICI or SBI, they get a deduction of the basis of provision for bad and doubtful debts of 8.5% of the GTI before the deduction of section 36(1)(7)(a). 8.5% of GTI, students, before section 36(1)(7)(a). That is the amount of deduction, students, that they all get it in this context. That is the amount of deduction, students, that they all get it, students, in this particular context. Now 8.5% of the GTI before the deduction of section 36(1)(7)(a). That is particularly point number 1 in this context. Now add to this 8.5%, there is another 10% of the aggregate average rural advances by the rural branches. Add to this, there is a 10% of the aggregate average rural advances by the rural branches. Now this 10% of the aggregate average, this is whatever from the rural branches they would have given the advances of that. Further, an additional provision of 10% is also been allowed as a deduction, but only in respect of the advance amount that they have given from that particular rural branches. So this is the combined deduction which is available for this other categories which is there. So this 10% is neither given to the foreign banks. This 10% is also not given to your PFI, that is public financial institution, or the state financial corporation, or the NBFC for that matter. This is exclusively meant for this particular category, which is the normal bank which is there. So for them, this 10% deduction is what has been given to them. Now students, the fact that the banking companies are given the deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts, the banking companies are being given the deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts. The next question that comes to our mind is whether, the next question, students, that comes to our mind in this case is that if the banking companies are given the deduction on the basis of the provision for bad and doubtful debts. So our next question, students, in this regard is this, that whether they are allowed the deduction of the actual bad debts. Whether they are allowed the deduction of the actual bad debts. So people will say the answer to be no. Many students will say, sir, why then they will be allowed the deduction of the actual bad debts? That's a very fair particular proposition. Because they are given the deduction on the basis of the provision, they will not be allowed the deduction of the bad debts. But if the actual bad debts, students, exceed the total provision which is made so far, please focus on the point which I'm putting across it. If the actual bad debt, students, exceed the total provision made so far. Now this total provision, students, will comprise of both the current year provision that you have already worked upon and the earlier year provision. So in the examination, in the question, as an additional information, they will give it to you
that the provision for bad and doubtful debt for say assessment year 2021 is say rupees say 10 lakhs. So that 10 lakhs plus the current year provision that you have calculated, take the combined value and then compare it with the actual bad debts which is there. And only if the actual bad debts exceed this combined amount, that the excess portion of bad debts, is what is allowed as deduction under this section 3617. The excess portion of the bad debts is what is allowed as deduction under section 3617, and that exactly is the point. This is what, students, this section 3617 is all about in this regard. Thereafter, students, there is section 43D. There is section 43D. So in the examination, students, one particular point which I just wanted to tell to all of you. In the examination, students, one particular point I just wanted to tell to all of you. They will give you that there is a debit of provision for there is a debit of bad debts which is made in the books of accounts. So what you will do of that debit, you will add it back. Why will you add it back? Because you will not give a full deduction of bad debts. First, you need to see whether the bad debts amount has it exceeded the total provision made up till now, which is current year provision plus the earlier year provision, and only when it has exceeded the total provision made so far, that the excess of the bad debts is what will qualify for the purpose of deduction. So therefore, you will add it back straight away. Similarly, students, in the examination, they will also give it to you that the accounting profit of that particular bank or the financial institution already have the debit of the provision for bad and doubtful debts, but this debit is as per the prudential norms of the RBI. This debit, students, is as per the prudential norms of the RBI. So already there is a debit which has been made, and this debit is as per the prudential norm of the RBI. In that particular case, students, you will have to add back those debit which is made as per the prudential norm of the RBI, because we get the deduction not as per what is the prudential norm of the RBI, but we get the debit as per, students, as per what? As per what is given to you in section 3617A, which is nothing but the percentage, which is 5% of the GTI before 3617A, or 8.5% of the GTI before section 3617A, and that 8.5% also has got the additional deduction in the form of this 10%, which is in respect of the aggregate average rural advances. So just keep that particular point also in mind, students. Is that clear to all of you? Now let's take across the next section, that is 43D, again applicable for a banking company. Let's take across, students, 43D. Now, students, again a very popular information that is given to you is this, that the banking company has got some NPA category of the loans. The banking company, students, has got some NPA category of the loan, non-performing asset. So on that NPA category of the loan amount, the interest would have been accrued. On that NPA category of the loan amount, the interest would have been accrued. So far as that interest is concerned, students, is concerned, you will not recognize that as your income for tax purpose, unless the amount has been either received by the SSC, or it has been credited in the books of accounts, whichever happens earlier. So on the basis of the receipt or on the basis of the credit, whichever is earlier, that is what will finally be, students, will finally be considered for the purpose of the chargeability of such interest income. So if they give you simply an information that has an additional information that this much of the interest has been accrued from the NPA category of the loan, but this has not been credited in the books of accounts. So if it has not been credited in the books of accounts and neither it has been received, so please don't charge this particular amount as your taxable income. So it will not be considered as a taxable income as per section 43D. So this is another particular part which is in respect of point number 3. Now point number 4, students, is in respect of the United Commercial Bank, and that is of the Supreme Court judgment. Now so far as the United Commercial Bank Supreme Court judgment, students, is concerned, this is in respect of the valuation of the securities which are held as stock in trade. The valuation of the securities, students, which is held as a stock in trade. So obviously the bank or the financial institution
which are holding the security and terming them as a stock in trade. So as on 31st of March, they will have to do the valuation of those security held as a stock in trade. And how a stock in trade is valued, as you all are aware, the stock in trade is valued on the basis of the cost or NRV, whichever is lower. The stock in trade, students, is valued on the basis of the cost or NRV, whichever is lower, and that exactly is the point. So lower of the cost or NRV is what you need to do the comparison in this case. And if the valuation which is done in the books is not in accordance with the lower of the cost or NRV, if the valuation, students, is not done as per the cost or NRV, then in that particular case, students, what you need to do? In that particular case, students, you will have to rectify and bring it back to the normal level. You need to rectify, students, and bring it back to the normal level. Is that point clear to all of you, students? Fine. Now comes to this particular point number 5, which is about the ICDS number 8, students, which is in respect of ICDS number 8, which is about the valuation of the securities. Now, as far as the ICDS number 8 is concerned for the valuation of the security, students, here if you see very carefully, this valuation of securities dealt by the ICDS 8, it has been targeted 2 times in the examination. By the way, I think all of you are aware. Students, just read this particular point herein. It deals with whom in this context? It deals with, includes, and does not apply to. These 3 points. Quickly. Now, if you see, students, over here, if you see ICDS 8 on the valuation of the securities, here what we all get, it deals with the securities which are held as a stock in trade, and it includes the shares of a company in which publics are not substantially interested. So again, this ICDS 8 is also dealing with the valuation of securities which are held as stock in trade. And also what they have mentioned is that, like for example, if you are holding any private company shares or a shares of an unlisted company, so even those particular shares of the private company or the shares of the unlisted company, will that also needs to be considered for the purpose of ICDS 8? To that the answer is yes. But students, it will not apply to the securities which are held by the mutual fund company, venture capitalist fund, bank, or the financial institution. Now, just now we did the valuation under, as per the Supreme Court judgment in the United Commercial Bank's case, which has said that the bank which are holding the securities as a stock in trade needs to do the valuation as per the cost or NRV, whichever is lower. Whereas over here right now, students, we are stating that ICDS 8 valuation on security which are held as stock in trade, their part A is not applicable to the following categories, which involves mutual fund, venture capitalist fund, bank, and the financial institutions, as the case may be. Now, if you see over here how the valuation has to be done so far as ICDS 8 is concerned, so the valuation, students, that has to be done for ICDS 8 is like this. Initial recognition, students, that will be undertaken would be on the basis of the actual cost or the fair value of security so acquired. So the initial recognition, students, that will be done, students, would be on the basis of the actual cost or the fair value of the security, which implies that when you acquire the securities, students, at that particular point of time of acquisition, you will be having it valued as per the actual cost. You will be having it valued as per what? As per the actual cost.
Okay, and thereafter subsequent recognition means as on 31st of March, it will be as per the actual cost or the NRV, whichever is lower. It will be as per the actual cost or the NRV, students, whichever is lower. So that is how the subsequent recognition, students, will be made in this regard. That is how the subsequent recognition, students, will be made in this regard. Okay, so actual cost or NRV, whichever is lower. Is that clear to all of you, students? Actual cost or NRV, whichever is lower. Now, below this, students, you will say, sir, but if I do the same thing, actual cost or NRV, it is just similar to what it was there earlier. For the bank also, it is the same thing. And here ICDS 8 Part A, which is not applicable to the bank, it also gives you the same method of valuation, which is cost or NRV, whichever is lower. So what is the difference between the two? Because this ICDS 8 Part A is not applicable to the banking company or financial institutions. But the method of valuation as per ICDS 8 Part A is the same. So in that particular case, how do we distinguish between the two? Students, in that particular case, ICDS 8 Part A valuation is undertaken on the basis of the category wise valuation. Can you see this one, students? On the basis of the category wise valuation. And this category wise valuation is the real game, students, in this case. Which is the category? Category will involve shares as a separate category. So the entire shares, which will involve both preference as well as equity shares, you will have to combine the entire value. So both equity as well as preference, please combine the entire value of all the equity and preference. Take the total cost of all this category, take the total NRV of this entire category, and then compare the total cost with the total NRV, and then you will see whichever is the lower amount is what will be finally be considered. Similarly, so far as the debt securities are concerned, like for example the debentures and all, so for that also there is a separate category which is to be considered, and of that category you will take the total cost and the total NRV, and then the total to total is to be compared, and the lower of the two is what would be considered as the valuation. But be careful on the convertible securities part, students. They can say to you like there is a convertible debentures or there is a convertible bonds. So those convertible debentures or the convertible bonds, please don't consider in the second category of the debt securities. They will be considered as a separate category altogether. And therefore on that convertible security, students, what we are going to say? We are going to say that on this particular convertible securities, we all will say that, students, that again the same total of the cost compared with the total of the NRV, whichever is lower is what will finally be considered for the purpose of the valuation. And finally, students, the last category is the others category. The last category, students, is the others category, means other than that, again this will be a separate category. Now students, just have a look to the format of the computation of total income, and now I will tell you the banking company, they will also target to all of you. They will target students in this case, like for example a foreign bank question, they will give it to you. Now if it is a foreign bank question, students, if it has been given to you, then my question to all of you is that whether the alternate tax regime of 115BAA will that be applicable in this case? And the answer is no. Whether it is 115BAB or 115BAA, both of them are to the domestic company. So foreign bank is ruled out completely in this case. Okay. If it is a cooperative bank, students, then in that particular case, the provision of section 115BAD would be made applicable. If it is a cooperative bank, students, then the provision of section 115BAD is what would be made applicable. BAD, students, be careful on that. Now, so far as section 115BAD is concerned, students, please tell me one thing. If the option of 115BAD has been exercised by the bank, so what the section that we have discussed up till now, will that section needs to be let go by the banking company? We need to forego, na? In the alternate tax regime, the big sections has to be foregone. So whether these sections will that needs to be foregone by the SSC, and the answer is no. Friends, the provision for bad and doubtful debts deduction under section 36(1)(7)(a) will continue to be made available
to the banking company even if they have opted for the alternate tax regime under 115 BAD. Absolutely, there is no impact on that. The impact, students, that you will be getting it, students, the impact that you are going to get it would be under the additional depreciation. The additional depreciation, there is the impact, isn't it? And the other big deductions like 35, the 35 and all. And thereafter, ATP deduction, ATP, the cooperative society, as you all are aware. So ATP deduction, which is available even to a banking company, on that ATP deduction, that also needs to be foregone by them. Even that needs to be foregone, students, by them in this regard. So these are the amount that needs to be foregone in this particular context in this regard. I hope that all of you are clear with this proposition in this particular context. So this is how the things has to be looked upon. Now coming on this particular part, the format of computation of total income for the banking company. See the particulars and thereafter the amount and amount. Net profit as per the books, whatever has been given to you. Okay, now please be very careful in this context. Actually, by the way, students, tell me one thing. What about 33AB deduction for T company if they have gone for the alternate tax regime? What about the 33AB deduction that we just discussed some time back? If I have opted for the alternate tax regime, then whether the 33AB deduction, will it be available to me? To that, students, the answer is no. The 33AB deduction, students, is not available to you at all. If you have opted for the deduction under section 115 BAB, is that clear to all of you, students? Is that clear to all of you? Even that 33AB deduction is not available. So on the deposit to the NABARD, you don't get deduction. But yes, if you are not getting the deduction on the deposit which is made in NABARD, where the SSE has opted for the alternate tax regime, then subsequently when the amount is withdrawn from the NABARD and from which you incur your business expenditure, then that business expenditure, will that be allowed as deduction? And the answer is yes, it will be. And the answer is yes. So therefore, students, just be very careful about this kind of an angle which could be there in your examination. Okay, just be very careful about this angle that could be there in this particular context. So therefore, this was a special point, and I thought just to quickly discuss this particular point with all of you. Now coming on the format of computation of total income for the banking company. So net profit as per the books, whatever is the amount. And thereafter, students, what you generally do, first of all, students, you will see that if there is any other income for the banks which could be classified in some other heads of income, chances are very high that they can give you some information in the total income computation, some information about the capital gains. The bank may have the land or any of the immovable property which the bank may have transferred during the previous year. So therefore, there could be some amount that will be reflected in their accounting profit, which is classified under the income tax law under the head capital gains. So therefore, those amount needs to be eliminated initially, because those data we will consider it separately in computing the income in that respective head, in computing the income in that particular respective head, students. Is that clear to all of you? So therefore, just do the first adjustment about the classification of the income in the respective head. After that, for the banking company also, students, this is the approach that you will follow. All of you will follow this particular approach, and the approach is you will ensure to undertake all the common adjustments, students. You will ensure to undertake, students, all the common adjustment other than those specifically related to the banks. So whatever are the common adjustment other than those specifically related to the banks, those adjustments need to be undertaken for students in this context. So that is what, students, you are going to discuss in this context. So like for example, depreciation allowance as per the books, less under section 32. Thereafter, any TDS bank have not deducted, then it will be a disallowances that will be applicable. 43B angle, which the bank, say for example, if they have to pay the tax to the government, GST for example, then in that case also, if the same has not been made the payment up to the due date of filing of the return of income, then again there would be a disallowance so far as 43B is concerned. So my point is that please do first the adjustment relating to all the common provision. And once all the adjustment relating to the common provision has been undertaken, thereafter, now you do the specific adjustment, students. Now you do the specific adjustment.
Now, specific adjustment, as I told you, just check this 43D, the interest on the NPA category of the loan amount. Whether that interest on the NPA category of the loan amount, that needs to be considered or not. Just keep that point in mind. The Supreme Court decision on the valuation of the securities which are held in stock and trade, whether the profit is in accordance with the Supreme Court decision in respect of the valuation of securities or not. If it is not, then do the adjustment. Thereafter, whatever is the provision for bad and doubtful debts as per the books, which I just now told you some time back, as per the books, whatever is the provision that you have done, which is generally as per the prudential norm of the RBI, please add back all those provisions which are as per the RBI norms, because the deduction on the basis of the provision we are going to give, but as per section 3617A. But as per section 3617A. Thereafter, students, the bad debts as a deduction. And as I told you, students, it is the bad debts which is actually written off in the books of accounts. It is the bad debt, students, which is written off in the books of accounts is what needs to be added back. The bad debts which is written off in the books of accounts, students, is what needs to be added back. Thereafter, students, you will find it over here. The provision for bad debts, bad and doubtful debts under section 3617A. The provision for bad and doubtful debts, students, under section 3617A, and there we get 8.5%. This is what you need to give. Why the bad debts is added back, students, earlier? The bad debts has been added back earlier for the simple reason that we give the deduction of the bad debts only on the basis of the comparison, and that comparison will do it last. Initially, we don't give the deduction of bad debts because we give the deduction on the basis of the provision. So kindly add back the bad debts which has been written off in the books, and thereafter the provision for bad and doubtful debts under section 3617A is what you will do, whatever you have discussed, 8.5% or 5% as the case may be. And in respect of 8.5% category, you will also be eligible for additional provision of 10% of the aggregate average rural advances. Now tell me one thing, students, one thing here. You take 8.5% of GTI. Please be careful. This is not the 8.5%, students, of your PGBP. Unlike in the case of 33AB, it was 40% of PGBP, and in the case of 3618, it was 20% of PGBP. But here it is taken, the percentage is taken of the GTI. Here, students, the percentage, students, is taken of what? Of the GTI. So my question therefore to all of you is this, that whether the GTI that needs to be considered for the purpose of calculating the amount under 3617A, this GTI, students, is it after the brought forward business loss and the UAD? This GTI, students, is it after the brought forward business loss and the UAD which has been given to you? Obviously, the answer is yes. This GTI definitely has to be after the brought forward business loss and the UAD. So the information that they may give it to you in the question, that this is the brought forward business loss and this is the UAD amount for the previous year. So please do ensure that these brought forward business loss and the UAD has been given the due effect of. And after giving the effect of the brought forward business loss and the UAD, students, thereafter what, students? Thereafter you get the qualifying amount on which you apply 8.5% or 5% as the case may be, and you get your provision for bad and doubtful debts deduction. Is that clear to all of you, students? That is what it is to be done. And once you get the deduction of 3617A, thereafter you give the bad debts check, bad debt deduction under 3617, and that will be available only if the bad debts exceed the total provision made so far. Exceed what? The total provision made so far. So only when the aggregate bad debts exceed the total provision made so far, that in respect of, this is the amount which is in respect of the excess and the total provision. Again, I am repeating, the current year provision which you have calculated just above, the current year provision which you have just calculated above, and the earlier year provision, students, and the earlier year provisions. So you do the total of the same and compare it with the actual bad debts, and therefore after comparing with the actual bad debts, the excess portion, students, is what will be eligible to you as a deduction in this regard. Is that clear to all of you, students? And thereafter, students, in this context, thereafter, students, you have the brought forward business loss under section 72(2). That is, now this is the actual, once you get the deduction of the provision for bad and doubtful debts, you get your PGBP. But if
in the question they have given you the information about the brought forward business loss and the UID. Please do give the effect of the same, and that will result into your finally your PGBP. That will result finally into your PGBP, students, and this is how the things has to be looked upon. And thereafter, students, you have your other heads of income which you have eliminated initially, the other heads of income. Now you can consider the other heads of income. From that you get your GTI chapter 6A also needs to be considered. Now please understand, for the banking company as well, 2 chapter 6A deduction they can target in the question in the examination. One could be ATJJAA, and the second one could be ATM. Students, by the way, both these sections, ATJJAA as well as ATM, both these sections, students, you get it even if the SSC has opted for the alternate tax regime. ATJJAA and ATM, even if the SSC has followed the alternate tax regime, both these deductions are available. By the way, what is this ATM deduction? This ATM deduction, students, is in respect of what? This ATM deduction, students, is in respect of, quickly, indeed, this ATM deduction, students, is in respect of the dividend which the company has received from the other companies. The dividend which the company has received from the other companies, this is what this ATM deduction is all about. And this dividend is then compared with what? The dividend that it has paid up to a month before the due date of filing of the return of income. The dividend that it has paid a month before what? Before the due date of filing of the return of income. Is that clear to all of you, students? All of you are clear with this proposition, and that exactly is the point. So this is what it is, students. Now the next one, students, if you see, is a deduction in respect of the HO expenditure. Now students, this could be a target for your MCQ, which I can see. So at the most they can target this section for the deduction of the MCQ of the head office expenditure under section 44C. This would be an MCQ based question. Now students, if you have got your branch in India, if the SSC has got what? The branch in India, then whatever is the HO expenditure which has been allocated to the branch, whatever is the HO expenditure, students, which is allocated to the branch, in respect of that allocation of the HO expenditure, students, please tell me in this case what you will do in this regard. The deduction of that allocation of the HO expenditure to the Indian branch is subject to the upper limit of 44C. And what is the upper limit of 44C? It is the 5% of the adjusted total income. The adjusted total income, students, is nothing but the GTI before giving the set off of the brought forward business loss or the UAD. Before giving the set off of the brought forward losses and the UAD. So therefore that is what becomes your the adjusted total income. So therefore whatever the HO expenditure which has been allocated to the Indian branch, you will compare this with the 5% of the adjusted total income, which I told you as GTI before the brought forward losses and the UAD. Do the comparison. And the lower of the two amount, students, is what will be eligible for the deduction under 44C. That is point number 1. The second particular point, students, in this particular case is what? That the second particular point, students, be careful in this regard. In respect of the second particular point, students, please be careful on this particular part. The HO expenditure which is apportioned to the Indian herein in the second particular part, students, if your adjusted total income of the current year, students, is a loss, if your adjusted total income in the current year, students, if that is a loss, then you will take the average adjusted total income. You will take what? The average adjusted total income, which is nothing but the adjusted total income of the last 3 years. The adjusted total income of the last 3 years, and do the average. So the average adjusted total income of the last 3 years, of that you take 5%.
This is the upper limit, which will be compared with the actual allocation that has been done to the Indian branch. Allocation of what? Allocation of the HO expenditure. Allocation of the HO expenditure, students. Is that clear to all of you students in this context? So this is what it is in this context, students. This is what it is in this context. Now thereafter, students, there is this taxability of mutuality, which we need to consider in this regard. The taxation of mutuality, students. Let's have a look, students, in this context. Mutual concern, students, again, this is a segment that they can target to you in the examination. This segment, students, is what could be targeted, students, to all of you in the due course. Be careful on this case. Now, what exactly is the taxation of mutuality, students? In the case of mutual concern, students, as you all are aware, in the case of a mutual concern, students, as you all are aware, in the case of a mutual concern, students, as you all are aware, be careful. What is the scenario for the mutual concern? Students, in the case of a mutual concern, over here, the whatever is a common contribution which is done by the members do the common contribution, and the common contribution which is done by the members, from that there is an expenditure which is incurred, and that expenditure, after that, whatever is a surplus amount, that surplus amount, students, is not considered as an income, and therefore it is not taxable. From the common contribution, whatever is the expenditure has been incurred, thereafter whatever is a surplus which is left, that surplus is not considered as an income, students. That is point number one. So there could also be the case of a deficiency, which implies that the expenditure students, exceed what? Exceed the total contributions. The expenditure, students, exceed the total contribution. So in that particular context, if that is the case, then the deficiency also is not accessible in that way, because as we say that the surplus is not an income, so should also be the case of deficiency. But 44A specifically allows the deduction of this deficiency. 44A specifically allows the deduction of this deficiency. And what is this amount of deduction, students, in this context? What is the amount of deduction, students, in this particular context, students? The amount of deduction of deficiency under section 44A, students, is following. So if you see on the right hand side over here, students, in this context, the consideration which is charged. Now please understand, for the mutual concern, the common contribution is not chargeable. It is not considered as an income. But if the mutual concern is specifically charging the amount to their members, if the mutual concern is specifically charging the amount to the member students, in that particular case, if the mutual concern is specifically charging the amount to the members, then in respect of that particular specific charge made to the members, will the mutual concern, will it be charged to tax? To that the answer is yes, because this is a specific charge. This is not a common amount, the common contributions. This is a specifically charge for a particular service given by the mutual concern to its member, and that is what will be chargeable. Apart from that, the concern may also provide some services to some outsiders. Even that amount will be chargeable, isn't it? So that amount will be also be chargeable. So these are the amount which are considered as the income. Against that, if there is any corresponding expenditure or allowance, whatever is the corresponding expenditure and allowance, that is what will be reduced. And thereafter, you will then give the deduction of what, students? Deduction of this deficiency amount. Thereafter, students, you will then give the deduction of this deficiency amount. And how much is the deduction of this deficiency amount, students, under section 44A? The deduction of the deficiency amount under section 44A is the lower of the following two. And the lower of the following two is the deficiency amount itself, which will be compared with 50% of the total income before section 44A, which will be compared with 50% of the total income before the provision of section 44A. Is that clear to all of you? So this is what you will be looking at in this context, 50% of the total income before the provision of section 44A, and that is what will result into the PGBP. That is what will be resulting into the PGBP. Is that clear, students? And from the PGBP, thereafter there is other heads of income.
and then you get your GTI after that chapter 6A, total income. Fine. So this is your tax. Okay, now this is an important point, students. Supposingly, students, the deficiency amount, I just put a number to it. So this is 10. And the 50% of the total income before 44A is say 8. 50% of total income before 44A, students say 8. So question to all of you is, how much will be allowed as deduction? 8. 8 is what will be allowed as deduction. So the balance amount of deficiency, which is 2, will that be allowed to be carry forward? And the answer is no. This is not like your normal particular losses, students. This is not like your normal particular amount of loss that will be allowed to be carry forward. Please be careful on that point. So this is not your normal particular losses that will be allowed to be carry forward, and therefore no such particular thing would be available to all of you in this context. I hope that all of you are clear with this one. Next one, students, is section 35D, which is in respect of the preliminary expenditure. 35D, students, which is in respect of the preliminary expenditure. Now, students, preliminary expenditure deduction, be careful. It is applicable only to the resident person or a domestic company, meaning thereby it is not applicable to a non-resident or a foreign company. The deduction of a preliminary expenditure is available only to a resident person or to a domestic company, not applicable to a foreign company. Now, so far as a resident person is concerned, students, family, other than a company, other than a domestic company, so far as the resident person is concerned, other than a domestic company, students, what we do in this regard, students, we take into account the 5% of the cost of project. The 5% of the cost of project, students, is what is compared with the specified preliminary expenditure. The 5% of the cost of project is compared with the specified preliminary expenditure. So this is what is compared, students, in this context. And the lower of the two, 5% of the cost of project compared with the specified preliminary expenditure, compare these two, and the qualifying amount that you get out of these two, of that qualifying amount, take 1/5. Of that qualifying amount, students, take 1/5, and that 1/5 is what will be allowed as deduction. And that 1/5, students, is what will be allowed to you as a deduction, students. Is that clear to all of you, students? Every one of you are clear with this one? So 5% of the cost of project is compared with the specified preliminary expenditure. Do make the comparison of the two, and whatever is the lower amount, that would become your qualifying amount, and of that qualifying amount, 1/5. Now please understand, the word is specified preliminary expenditure, and other than for a company, it is only 4 items. And which are those 4 items? Feasibility report, market survey, engineering services, and legal services. There can be a question in the MCQ specifically wherein apart from this 4 they can give you something else. Please don't take that. Only this 4 is eligible. I am talking about other than a domestic company. The associate, say for example a partnership firm which is commencing a new business, and before the commencement of new business they have incurred some preliminary expenditure. So therefore, in respect of those preliminary expenditure, students, they in respect of those preliminary expenditure, you need to filter out only this 4 which is eligible for deduction under 35D, and these 4 are feasibility report, market survey, engineering services, and the legal charges. Any other items will completely be ignored in this case. Is that clear to all of you? But if it is a company, then apart from this 4, another 3 is also to be considered. Apart from this 4, another 3 is also to be considered. Which is that another 3? I'll let you know. But before that, students, just again coming back to this point. So other than a company, a resident person is eligible for deduction under 35D, which is lower of the following two, which is 5% of the cost of project compared with the specified preliminary expenditure. Compared with the specified preliminary expenditure, compare these two, and the lower of the two is the qualifying amount, and of that qualifying amount, 1/5. Of that qualifying amount, 1/5. Now coming to the Indian company, students, so far as the Indian company is concerned, in that particular case, 1 and 2. 1 that they say here, it is 5% of the cost of project.
or 5% of the capital employed, 5% of the cost of project, or the 5% of the capital employed, and that is what has to be compared. Now in the capital employed, students, be careful what comprises of the capital employed, because there is a Supreme Court judgment in the Berger Paints case. There is a Supreme Court judgment, students, in the Berger Paint case, and in that capital employed, students, there is a issued share capital but will exclude the share premium. There is a issued share capital which will exclude the share premium. So issued share capital excluding the share premium, plus the debentures which has been there, plus the long-term borrowings as on the last day of the previous year in which the business of the company commences. Okay, so please understand one thing over here. The share capital, which will have both equity as well as preference, the information in the question, they will also provide you of the share premium. So when you calculate your capital employed, the share premium will be excluded. So you will take the share capital excluding the share premium. You will take the long-term borrowings as on the last day of the previous year, and also you will take up the long-term borrowings. One point I just want to tell to all of you, and maybe the students will get confused in the examination. Students, supposingly they will give you in the exam that the business has commenced on, say, 31st of January 2022. So previous year is 21-22. So the business has commenced on 31st of January 2022, and on 15th of February 2022 they have undertaken some new borrowings. On 15th of February 2022 they have undertaken, students, some new borrowings. So some new borrowings has been taken on 15th of February 2022. Now in the case of such new borrowings which has been made on 15th of February 2022, what is the position that you all will take in this regard? So the position, students, that you will all will take in this regard for the new borrowings that you have done on 15th of February 2022, will that be a forming a part, students, or not? Please tell me in this case. On 15th of February 2022, you have taken a new borrowing. Will that be considered as a part of your capital employed? Business commenced on January 31st, 2022. Borrowings done, long-term borrowing from 15th of February 2022. To that the answer is yes. Why? Because the long-term borrowing has to be considered as on the last day of the previous year in which the business of the company has commenced. So you have to go up till 31st of March. Is that clear to all of you, students? Yes. So you will, in the case of a company, students, in the case of a company, there are two level of comparison that you have to do, and the two level of comparison that you can see is, the first level of comparison is 5% of the cost of project is to be compared with the 5% of the capital employed, and take higher of the two. 5% of the cost of project is to be compared with 5% of the capital employed. Please take higher of the two, and of the higher of the two amount, students, thereafter you get the qualifying amount number 1. Thereafter you do the qualifying amount number 1, and of this qualifying amount number 1, thereafter you compare this with the specified preliminary expenditure of this qualifying amount number 1. Then you do the comparison with the specified preliminary expenditure, and then of the qualifying amount number 1 compared with the specified preliminary expenditure. Now in the specified preliminary expenditure, students, it will be now 3 items will be added to the existing 4. Which is the 3 items which are related to the companies? These 3 items are ROC fees, thereafter the printing of MOA and the AOA, legal charges for enhancing the share capital. Now from this you will reduce the amount as per the Supreme Court judgment in Rama Multi-Tech Supreme Court judgment covered in your ICI case law sheet. And what is that, students? What is that has to be reduced? Please be careful on this one, students, now. So in that, from the ROC fees, printing of MOA and AOA, legal charges for enhancing the share capital, in that, students, you will reduce what? On the share application money, the assessee will have to deposit the share application money in the escrow account till the time the allotment is made. And after the allotment is made, the share application money along with the interest, will be received by the SSC company. Now that interest amount, students, which is received, this interest amount, students, my question to all of you is, will that be reduced or will it be charged?
under the head IFOs, that interest on the share application money, Supreme Court said that this is an incidental income arising at the time of issue of shares, and therefore this incidental income will be reduced from the share issue expenditure, which is about the ROC fees, printing of MOA, legal charges for enhancing the share capital. So this will get reduced from this particular amount, and the net amount is what will be your specified preliminary expenditure, and the net amount is what will be your specified preliminary expenditure, which will be compared with the qualifying amount, and the lower of the two is what is the final qualifying amount, on which there is a 1/5 deduction that will be available to all of you. Deduction that will be available to all of you. So company goes with two level of comparison. In the first level of comparison, you take the higher of 5% of cost of project compared with 5% of the capital employed, and the qualifying amount from step 1 will be compared with the specified preliminary expenditure 4 plus 3, and the lower of the two is what is the final amount which you will be allowed as deduction on the basis of 1/5. Now, so far as scientific research expenditure, students, is concerned, as you all are aware, scientific research expenditure, students, I think all of you are aware of this. One is the donation particular part. Now, as you all are aware, students, the donation that has been given, that donation is fully be allowed as deduction. But now the deduction is only 100%. Okay, so there, in the case of section 35, the donation that you have given to the notified by the central government, notified institution, the donation that has been given, that donation is fully allowed as deduction under section 35. Okay, and there is a part B to section 35. The part B to section 35 is in respect of the actual scientific research expenditure which has been incurred. The actual scientific research expenditure which has been incurred, which can either be a revenue expenditure or which can also be a capital expenditure. The actual scientific research expenditure, students, which has been incurred, which can either be a revenue expenditure or it can also be a capital expenditure. So whether it is revenue or it is a capex, it is also eligible for 100% deduction, but the capex will exclude the land. The capex, students, will exclude the land. I think all of you are aware of it. But supposingly the company has followed, the company has gone with the alternate tax regime, say under 115BAB or 115BAA as the case may be. So in that particular case, under section 35, the donation that you have done to the notified institution, on that donation you don't get any deduction. However, you get the deduction, or you continue to get the deduction in respect of the revenue expenditure or the capital expenditure as the case may be. That deduction is available, but what is not available is the donation that you have made in this regard. So this is what the position is there in this context, students, in this particular aspect. I hope that all of you are clear with this one. If you follow the alternate tax regime, then you don't get the deduction in respect of donation, but yes, in respect of the scientific research expenditure, which can be either revenue or which can be also capex, but capex should exclude the land. So that is also available even if the SSC has followed the, or the SSC has gone with the alternate tax regime. Now on that regard, students, on that asset, now one particular part, students, this particular thing in the blue, can you see that? Unabsorbed capital expenditure on scientific research. Unabsorbed capital expenditure on scientific research. As you all are aware, students, the unabsorbed capital expenditure on scientific research and the unabsorbed capital expenditure on the family planning, all these items, students, are considered at par with that of UAD. All these items, students, are considered at par with what? At par with the UAD. Unabsorbed capital expenditure on scientific research and unabsorbed capital expenditure on the family planning, they are all considered at par with that of UAD. And therefore, because they are considered at par with that of the UAD, students, so therefore their carry forward also would be for that unlimited period, just like the UAD is there, isn't it? So that is how the things has to be looked upon. Now coming on this particular part, students, over here, if you just be careful on this one, the SSC has purchased a scientific research asset on which it has claimed the deduction under section 35. Now, question to all of you is that, is there any lock-in period, the period for which the asset needs to be used for scientific research purpose? To that the answer is no, students. There is no such particular
lock-in period for which the SSC will have to use that asset for scientific research purpose, no lock-in period exists in this case. So there is no lock-in period, and you get a full deduction, students. You get a full deduction under section 35 in this regard, primarily. Okay, and there is no default, primarily. Unlike in the case of our next section, which I'm going to touch upon now, 35AD, wherein there is a lock-in period of 8 years. Also in the case of section 33AB, there is a lock-in period of 8 years. But here, so far as 35 is concerned, in respect of that capital expenditure that you have incurred, on that there is no lock-in period. So what could be done? After the SSC has purchased the asset for scientific research purpose, took a deduction under 35, the SSC thereafter could sell that asset. There could be only two purposes. One is either they could sell that asset later on, or after the scientific research purpose is over, they could transfer that asset from scientific research division to its business division, from its scientific research division to its business division. So there could only be two particular usage of this particular asset. Now if the SSC transfers this asset outside, then whatever is the sale proceed that the SSC has received, whatever is the sale proceed that the SSC has received, up to what? Up to the deduction that it got under section 35, up to the deduction that it has got under section 35, that much of the amount will be considered as deemed income under section 41. That much of the amount, students, will be considered as deemed income under section 41, and only the sale proceed over and above that, only the sale proceed over and above that will be considered as a capital gains item. So up to the deduction, whatever is the sale proceed is a deemed income under section 41. Any amount over and above that is what will be considered for the purpose of the head under the head capital gains. Now if you see the next particular part, which is about the transfer to the business division, students, the transfer that is done to the business division. Now if you transfer the asset to the business division, then in that particular case, students, you can see over here the WDV of the asset in the block should be considered as nil. Obviously, when the asset goes to the business division, in this case, the WDV of the asset in the block will be how much, students? Will be nil. The WDV of the asset in the block, students, would be how much? Would be nil. Because why nil? Because obviously you have got the entire deduction, and the deduction was not been revoked. There is no deemed income from that deduction later on. So therefore the deduction remain intact, and hence if the deduction has remained intact, no revocation has been done. So therefore whenever the asset is been used subsequently for business purpose, that asset will then enter into the block, and the value of the block would be nil. The value of the asset in the block would be nil. That is the point that has to be considered. Now coming to this section 35 AD, which I was talking about it, students, in this case. Now this section 35 AD over here, be careful on this one, students. Specified business is there. Now in the respect of the specified business, student, there is a list of specified business. You don't have to remember that, you just will have to simply go through it. In respect of the specified business, whatever is the eligible capital expenditure which has been incurred, whatever is the eligible capital expenditure which has been incurred. Now the capital expenditure, students, will exclude the land. It will also exclude the financial instrument. It will also exclude the goodwill. So these are the three particular capex that will be excluded. This is a three particular capex, students, that will be excluded. So you exclude these three capex, and whatever is the balance capex that has been incurred, whatever is the balance capex that has been incurred in respect of the specified business eligible for deduction under 35 AD, that balance capex, students, will that be allowed as deduction? And the answer is yes. And the answer is yes. So 35 AD deduction would be allowed. There are some conditions that has to be fulfilled, but that is okay. I'm not discussing on that condition. I'm just discussing on some calculation, important calculation part of it for your examination. Now students, supposingly now I took a deduction of rupees 100 under 35 AD. I took a deduction of rupees 100 of 35 AD. Now subsequently I have sold the asset. Subsequently I have sold the asset. So therefore if I have sold the asset, then in that particular case, irrespective of when I have sold, please be very careful of what I'm saying now. Irrespective of
when I have sold. When means I'm focusing on whether I have sold before 8 years or I have sold after 8 years. So irrespective of when I have sold, or irrespective of the amount for which I have sold. So irrespective of when I have sold, or irrespective of the amount for which I have sold, the entire sale proceed or insurance compensation or the scrap value, as the case may be, will only be charged under section 28(7), which is PGBP. Will only be charged under section 28(7), which is PGBP. So irrespective of what, students? Irrespective of the amount for which it has been sold, irrespective of the amount for which it has been sold, or irrespective of the years, irrespective of the year, students. Irrespective of the year, students, in this context. Both the cases, students, herein, both the cases, students, the answer will be the same. Both the cases, students, the answer would be the same. Is that clear to all of you, students? That is to say, the amount will be chargeable only under the head PGBP. Only under the head PGBP, students. Just a second, students. So in this particular context, students, if you all will see, if you have sold it, irrespective of the year, students, two things. What did I told you? Irrespective of when you have sold, so it can be within 8 years or after 8 years, and irrespective of the price at which you have sold, the entire amount would only be charged under the head PGBP. Is that clear to all of you, students? However, if instead of selling, you are using it for non-specified purpose, students, then now you need to check, students, what? Whether you have transferred from specified business to a non-specified business after the period of 8 years. So if it is transferred after the period of 8 years, students, in that particular case, can you see this? If you have transferred it after the period of 8 years, students, then please have a look over here. In that case, you will say that it will result into a deemed income under section 35AD. It will result into a deemed income under section 35AD. Answer is no. Just like you have section 35, which if you from scientific research you take to the business division, then there is no deemed income. But in 35 there is no lock-in period. But here there is a lock-in period of 8 years. So after 8 years, if you use it for non-specified business, then the position will remain the same as the position of section 35 that we have discussed. From scientific research to the business division, no deemed income, and the asset enters into the block at nil value. Same thing happens over here also. The catch point, students, is when you have started using for non-specified business within that period of 8 years. You have started using for that non-specified business within the period of 8 years. If you have started using for that non-specified business within the period of 8 years, then in that case, students, you will have two things. Number one, will there be a deemed income, students, under section 35 AD? So that the answer is yes. Now, how much is a deemed income under section 35 AD? The deemed income will be calculated as under the deduction under section 35 AD, and minus from that deduction under section 35 AD the notional depreciation that you would have got if you would not have taken the deduction under 35 AD. The notional depreciation that you would have got if you would not have taken the deduction under section 35 AD
that is what depreciation amount, notional depreciation amount that you have to reduce. So I've reduced the 2 years depreciation, which you can see, and therefore that is what will be your deemed income under 3580, and that is what will be taxable. At the same time, when you have got deemed income, it implies that the deduction has been revoked. The deduction has been revoked. If there is a deemed income, it implies that the deduction is revoked. And if the deduction, students, is revoked, then thereafter, students, the asset enters into the block. The asset will then enter into the block. Now the asset will enter into the block at an actual cost or WDV. So there would now be a value. You cannot say it is nil because your deduction has been revoked. Now here is a very important catch point. So here at what value, students? Actual cost is at 100. The actual cost, students, is at 100, minus from that the notional depreciation. Now be careful. Here the notional depreciation and the above the notional depreciation, this and this are different. Actually 90% of your answer may be the same, but in 10% case the answer can be different. Why? In the first case which I have discussed, where the notional depreciation has to be reduced, in that first case the notional depreciation that you have to reduce is for that particular aspect, students, the notional depreciation will be required to be reduced when what, students? When the assessee, be careful, when the assessee in this particular case, when the assessee, students, in this particular case, be careful, all of you students, in this context, be careful. So in the first case, the notional depreciation will be reduced when the assessee, instead of taking the deduction of 3580, if he would have taken the depreciation, then how much depreciation he would have got. That is the notional depreciation. Whereas in the second case, the notional depreciation that has to be reduced is that in the business in which, in the non-specified business in which the asset is transferred, in the non-specified business in which the asset has been transferred, if in that business the asset was being used from day one, if in that business, the non-specified business, if the asset was used right from day one, then how much would have been the notional depreciation that you would have availed up till now? How much would have been the notional depreciation that you would have availed up till now? That is the amount that will be required to be reduced. That is the amount that will be required to be reduced, students. And therefore in this context, you can see over here, this is the amount of the notional depreciation. That is what will be reduced in this context. So depreciation which has been there in this context, one. So why I'm saying so? Because the business in which you have transferred, which is the non-specified business, was a manufacturing business. So from this specified business, in my example, say for example, it is a hotel business, a specified business. From that, I've transferred to a non-specified business, and in that non-specified business was a manufacturing business. So I told you that the notional depreciation that now needs to be reduced has to be considered that if the asset has been used right from the day one in that non-specified business, then how much depreciation that you have availed up till now, that is the amount that needs to be reduced. So in that particular case, students, the depreciation that needs to be considered would be the normal depreciation, of 15, and the second one is the additional depreciation, and the second one, students, is the additional depreciation. So the additional depreciation of 3212A is what needs to be reduced, and that is what you will get you rupees 20. That is what will be getting you rupees 20, and that is what will be reduced. And so far as year number 2 is concerned, the normal whatever is the depreciation amount would be considered, and that is what will give you the WDV or the actual cost. I'm telling you, students, this would be only 10% of the case which you need to be careful about it, because the asset may be transferred to a non-specified business, and if that non-specified business happens to be a manufacturing business, then while calculating the notional depreciation that has to be reduced, you might have to consider the additional depreciation also for year number 1. You might have to consider the additional depreciation also for year number 1. Is that clear to all of the students? So this is how the things has to be looked upon in this context, students, in this regard. Now this
35 CCD and 35 triple C also, students, which is about the skill development and the rural this thing. Even the capex for the same, the capital expenditure for the same is allowed as deduction. So that is what I'm not touching upon it right now. It's a simple one. Now come to the profit link deduction, students, 10AA and 80IA, 80IB, etc. On the profit link deduction, students. Now profit link deduction, students, if you see 10AA first, let's have a look to 10AA first, students, over here. In this, student, by the way, profit link deduction has got one important case law which I have already discussed in my Super 50 question also. So just you have to be careful on this particular aspect in this context. So total income where the SSC has 10AA deduction, students, just be very careful on this point in this context. So over here, if you all see, for 10AA, PGBP, SEZ unit, a non-SEZ unit, SEZ unit and the non-SEZ unit. Now the PGBP, which is both SEZ unit and the non-SEZ unit, students, in this context, which has been there, and thereafter there is a other heads of income. So you will calculate the PGBP separately for the SEZ as well as for the non-SEZ. So please ensure in this context, please ensure, students, in this context, that both of them are being taken into account separately. Yeah? So there can be a question, they have asked in the past question wherein they have given you some data, PGBP data of the SEZ separately and the PGBP data of the non-SEZ separately. So please compute both separately. Yeah? That is one thing. If you don't do it, your marks will be deducted. And once you compute it, this is a combined PGBP. Then thereafter there is the other heads of income. You get your GTI, then the chapter 6A deduction, and then finally the total income before 10AA. Total income before 10AA. Now in this context, now you get the deduction of 10AA. Be careful, your previous year 21-22, you have to check it out whether this previous year 21-22, does it fall within the ambit of, does it fall within the ambit of, students, the first 5 years, or it is beyond 5 years. You have to count it, and if the question is silent, please consider it within first 5 years. But if the question is very specific, they have told you which is the first year in which it has commenced, so please from that year consider the current previous year 21-22 and see whether it is falling within that 5 years period or not. If it is the case, then 100%. If it is not the case, then 50%. Now this 100% or 50%, students, is of the qualifying amount, and the qualifying amount which is there is this amount. The qualifying amount, students, will be this amount, and this is about the profit which is derived from the SEZ unit into the export turnover divided by the total turnover. The profit which is derived from the SEZ unit into the export turnover divided by the total turnover. Now just focus on the export turnover into total turnover. Now the numerator, which is your export turnover, students, the numerator, students, which is your export turnover, the numerator, students, which is your export turnover, it is the amount realized in foreign currency by SEZ unit within 6 months from the end of the previous year. Amount which is realized in the foreign currency by the SEZ unit within 6 months from the end of the previous year. Okay, so you have to take this realized portion of the amount, students. You will have to take up the realized portion of the amount, and from the realized portion of the amount, you will reduce the telecom, freight, insurance charges. If the realized portion of the amount, comprises of, if the realized portion of the amount, students, if it comprises of what? Comprises of telecom, freight, insurance, technical services provided outside India, for that the fees. So if the realized portion of the export turnover comprises of these amounts, so please exclude these amount also, and that will be your eligible export turnover for numerator. That will be your eligible export turnover for numerator. Your denominator is your total turnover. Total turnover, students, comprises of both export turnover as well as the domestic turnover. Now here in the total turnover, which has got both the export turnover as well as the domestic turnover,
In the export turnover, students, you will have the accrued portion. In the export turnover, students, you will have both the the accrued portion as well as the, sorry, export turnover will be taken as the accrued portion. Unlike in the case of numerator where we take the realized one, here in the denominator we will take up the accrued one. Now in the accrued one also of your export turnover, if there is an accrued portion of your insurance, accrued portion of the freight, accrued portion of your telecom charges, or the accrued portion of the fees for technical services provided outside India, then those accrued portion also will be reduced from your export turnover for the purpose of determining the total turnover in the denominator. Is that clear to all of you? Fine. Now students, also your total turnover comprises of domestic turnover. Domestic turnover may have some taxes in it, GST like for example, and if it has got any taxes in it, then the total turnover will exclude those portion of tax amount. The total turnover will exclude those portion of the tax amount. So this is a proportion of export turnover divided by total turnover that you have to apply on. Apply on what? On the profit which is derived from the SEZ unit. Now by the way students, I must tell you that this particular paragraph of the profit derived from the SEZ unit, this is common for this. Also it is common for what students? Common for your all the other profiting deduction, be it ATIA, ATIB, ATIAC, etc. It is common for all. So this particular part is common for all students, and that is the reason why we are discussing this particular profit derived from the eligible business. Now the profit which is derived from the eligible business, students. The word derived is the key for all of us over here. The word derived, students, be careful. There is this particular important case study that is there, and this comes very frequently in the examination also. Just consider this particular point, students, over here. Supposingly, the word derived, we are trying to decode the word derived. The bank deposit, the assessee has to furnish the bank guarantee. To furnish the bank guarantee, the assessee has made a deposit with the bank, and the bank has furnished the bank guarantee to the contractors. Accordingly, students, in this case, from the bank deposit, there is an interest income. The interest income is chargeable under their PGBP, because as per the KN Code decision of Delhi High Court, it is said that this is an incidental business income. Because it is an incidental business income, therefore it will be chargeable under their PGBP. But whether this interest income, will it be a part of the profit which is derived from the eligible business? Whether it will be a part of the profit which is derived from the eligible business, to that the answer is no. It will not be a part of the profit which is derived, because the word derived narrows the scope of profit to be computed for the purpose of deduction. The word derived narrows down the scope of profit. It will only include those elements of profit which is commencing from the date of manufacturing. Only those element of profit which commences from which date? The date of manufacturing up to the date of sale or export. The date of manufacturing up till the date of sale or export. So only from this date till that day, that you need to consider it. Only from the date of manufacturing till the date of sale or export, that is the period that needs to be considered. That is the period, student, that needs to be considered. And in respect of that, the amount will be considered in this regard. So this is the PGBP, students. This is the PGBP. Will be the, like for example, between this period there is a transportation cost. Between that period, students, there is a transportation cost. Against that transportation cost, there is a transport subsidy that has emerged. Against that transportation cost, there is a transport subsidy that has emerged. So that transport subsidy is an income. That transport subsidy, students, is an income, students. Now if the transport subsidy, students, if it is an income, students, be careful on this regard. Be careful on this regard, students. This transport subsidies, which is an income in this context. So please tell me in this regard, students. The transport subsidy, which is an income, students, in this regard, is this transport subsidy, is it going to be taxed? Is this transport subsidy, students, will it be going to be taxed or not?
Under which head? PGBP. Whether the transport subsidy, will it form part of your profit derived from the eligible business? Again, the answer is yes. So this transport subsidy also will form part of your profit derived from the eligible business, because see from which point to which point I told you, from the date of manufacturing till the date of sale. So the transportation subsidy or the octroi subsidy or the freight subsidy is for the transportation of the goods. So up to the point of sale or export, this is the element which falls into it, and hence the transport subsidy family or the octroi subsidy or the insurance subsidy will definitely form part of the profit which is derived, and hence will be eligible for deduction. But after the sale or export, after the sale of export, what emerges students is the export incentives. What emerges students is the export incentives, and from the export incentives, like for example duty drawback is one of the examples. Export incentive example I have given to you is the duty drawback. Now students, the duty drawback in this context, you have the head of classification, and which is the head of classification? PGBP. The duty drawback students, the head of classification which I have given to you is the PGBP. Now that PGBP students, that PGBP, be careful now in this context. So the head of classification which has been given to you is the PGBP. That PGBP is there, but will it form part of your profit derived for the purpose of calculating the deduction? And the answer is no. And why the answer is no students? Because in this case, this particular export incentives which has been there, this particular export incentive students which has been there will not be a part of the profit which is derived, will not be a part of the profit which is derived, and the reason is something which you all are aware of. And the reason students is this one students, because it is after the export. This is after the export students, which is to be considered. This is the reason why it is not going to be a part of the profit which is derived. Okay, after export or sale, this is the element. So although it is chargeable under the PGBP, but it will not form part of the profit which is derived. I hope that all of you are clear with this one. So this is for the term derived, which narrows down the scope. The second one students is about the profit. Now so far as the profit is concerned students, just have a look over here. So far as the profit is concerned, now the profit for the purpose of deduction is, the profit for the purpose of deduction is the computed profit. Can you see that students? The profit for the purpose of deduction students is the computed profit, which implies that if supposingly there is any disallowances students, if supposingly there is any disallowances, then in that particular case those disallowances will enhance the profit, and therefore that enhanced profit is what will be considered for the purpose of computing the deduction. Secondly students, if supposingly there is any transaction between the non-eligible entity with the eligible unit, a non-eligible entity with the eligible unit with whom the SSC has the close connection, with whom the SSC has got a close connection, then that transaction, the profit for the purpose of deduction, the profit for the purpose of deduction shall be determined on the basis of the FMB value of the transaction. Shall be determined on the basis of what? On the basis of the fair market value of the transaction students. So the profit for the purpose of deduction shall be determined on the basis of the fair market value of the transaction. Is that clear to all of you? Point number C students, if you consider it, the concept of the legal fiction. The concept of the legal fiction students. So far as the concept of the legal fiction is concerned, now this is an important one, and on this basis students, there is a Supreme Court judgment which has been there. I'll discuss with all of you once again. Supposingly students, please be careful. Supposingly from your eligible unit, your PGBP is say 80. From your non-eligible unit, there is a loss of 20. Then IFOS says it is 30. IFOS say 30. So first tell me, what is the GTI students? Your GTI students would be 80 minus 20 plus 30, which is 90 then. So your GTI is 90. 80 minus 20 plus 30. So therefore your GTI is 90. Now your GTI with 90, you will get that chapter 60 deduction. From the GTI of 90 students, you will get the chapter 60 deduction, and the chapter 60 deduction would be 80. Why 80? Because for the purpose of the deduction students, for the purpose of the deduction, this business would be considered as the only business of the SSC, and therefore you will have to apply the legal fiction.
that this business will be considered as the only business of the SSE. So please apply the legal fiction and try to isolate this business with the other business, other non-eligible business. So in computing the GTI, you do the set off. That is fine. But when you have to compute the profit for the purpose of deduction, apply the legal fiction, and therefore this eligible business will be considered as if this is the only business of the SSE. And if it is the only business of the SSE, then how much will be the profit? That is the profit that will be considered for the purpose of determining the profit link deduction. Is that clear to all of you? So your deduction would be on 80. Your deduction, students, would then be on 80, and that is how the things has to be looked upon. Now in the set off topic, students, which has been there, please be careful on the big provision of the set off. And this is what it is, students. The last particular point, students, which is I'm going to discuss with all of you right now. Students, one point which I'll tell you tomorrow after your examinations are over. Be careful, students. After your examinations are over, you will already get a link. As such, those who can view the live lecture, please go ahead and take up the live lectures. Live lecture, students, tomorrow I'm going to start at 11:30 a.m. 11:30 or 12 a.m. 12 p.m. 11:30 a.m. or 12 p.m. I'm going to take up the live lecture. That is tomorrow. Okay. Now those who can do a live session, in that case, take up the live session. You say, but elective paper is there. Fine. Those who cannot take up the live, they can easily watch the elective. After the elective is over, they can watch the elective. Now in that particular case, what I'm going to cover: non-resident taxation, transfer pricing, apart from that TDS, TCS, then your the trust taxation. So all these topics I'm going to cover it up. And what I'm going to use is that I'm going to ensure to use your practicals, which we have considered in Super 50 or your RTP, MTPs and all. So not only that the discussion would be on the theoretical part, I'm mainly going to focus on the practical part also. So your revision would be a practical based revision, and also assessment procedure and the penalties, rectification, and those are the areas which I'm going to cover it up. So students, or what I can do is that I can split into two parts. 3 hours I'll do it, and 3 hours I'll do it day after tomorrow morning. So that way split also I can do it, so that it becomes easier on all of you to revise one thing and then try to finish it off the part, and thereafter revise the remaining thing and try to finish it off that part. So that way it will help you to really consolidate and conclude the entire thing, students, peacefully. And this is my entire strategy for all of you. Is that clear to all of you, students? Every one of you are clear with this one? Okay. So with that, students, you will cover up your entire syllabus, as I told you, comprehensively. You will cover up your entire syllabus comprehensively. With that, students, let's start. Loss of one person cannot be carried forward or set off by another person. Now, students, here there is also about ICDS and on depreciation. There is something on the ICDS on the depreciation. If you allow me, I will also cover up the depreciation in this written notes. It will take me 1 hour time, which I'll do it again tomorrow, because I think now you will get busy with your elective paper, those who have got elective. So thereafter, this is what I'm going to plan for all of you. So that way we will wrap up your depreciation and this particular part also carefully, and that way it will help you to really take it forward to the next level. Fine, students. So with that, now students, let's have a look to this section 72A and 78.2. So statutory exception 72A. In the 72A and 78.2, students, if you see very carefully, so first of all, the loss of one person, students, it cannot be passed on to another person. All of you agree to this one? Only the person who has incurred the loss is the one who will be eligible to carry forward that loss further. But there are two statutory exceptions, students, in this regard. There are two statutory exceptions, students, in this regard. Number one is, in the case of business restructuring, like amalgamation, demerger, succession, or the conversion of a private company into LLP. In these particular cases, students, what we will say? We say, students, in this scenario, that in this particular case, students, what is that we say, students? You should be aware of that. That the loss of the amalgamating company, the loss of the predecessor firm,
or the loss of the private company will be eligible to be carried forward by the successor SSE, isn't it? But the loss will not include, students, the loss will not include which loss? The speculative losses. So other than speculative loss, any other business loss, will that be allowed to be carried forward? And the answer is yes. The only factor is that the speculative loss will not be allowed to be carried forward. Apart from that, even the UAD is allowed to be carried forward, students. Just keep that in mind. Even the UAD is allowed to be carried forward, students. Let's keep that in mind. Is that clear? So that is one particular point which has been there. Now, students, tell me one thing. If the UAD is allowed to be carried forward, then what about the case for unabsorbed capital expenditure on family planning or unabsorbed capital expenditure on scientific research? Will that also be allowed to be carried forward? To that, the answer is yes. To that, the answer also is yes, students. The unabsorbed capital expenditure on family planning or the unabsorbed capital expenditure on scientific research, even that will be allowed to be carried forward, because we just have discussed that they are considered at par with that of UAD. So whatever is the treatment of the UAD, same will be the treatment for these particular items as well. Now coming to 78.2, it is about the succession of business through inheritance. Now this is an important one, students. Succession of business through inheritance. Now if you see about the succession of business through inheritance, in this particular case, what does it imply? It implies this, students. Be careful in this case. Succession of business, students, through inheritance. If you all see over here, supposingly there is a one Supreme Court judgment in Madhukant M. Mehta's case. Very popularly it has been targeted in the examination. And in which case the father was doing the business. After he died, he has his two sons. These two sons, they formed a partnership firm between the two, and they pursued the business further. The two sons has formed a partnership firm and they have pursued the business further. So therefore, in that particular case, the question that came up was that whether this particular business, students, whether this particular business, will it be allowed to be carried forward further in this case? And the answer is yes. And the answer is yes, students, in this regard. So students, in this particular context, if you see, and the answer is yes, students, in this regard. Succession of business through the inheritance, because they have taken the business through inheritance route. Because that they have taken the business through inheritance route, therefore this particular carry forward of the business loss can be done by the successor firm, because the business has been succeeded through inheritance. But supposing in the same question, apart from these two sons, there would have also been, apart from these two sons, there would also been, say, their friend, who has also been introduced as a partner in the partnership firm. Their friend is also introduced. So the business is now carried over by 3%, two sons and their friend. Will that be considered as a succession through inheritance? And the answer is now this is not an inheritance, because their friend has spoiled the party. This is what it will be considered. I hope that all of you are clear with this one. This is a Supreme Court judgment in that Madhukant M. Mehta's case, very important for your examination. Now, of this principle, loss of one person cannot be carried forward or set off by another person. Just to ensure that this principle is not abused, that there are two further provision which has been introduced just to ensure that this principle is not abused, and this is 78.1 and 78.2. Sorry, 78.1 and section 79. Now students, in the case of 78.1, what it says is that in respect of a partnership firm, whatever is the loss which is attributable to an outgoing partner as on the date of his retirement or as on the date of his death, whatever is the loss which is attributable to the outgoing partner as on the date of his retirement or on the date of his death, that much portion of the loss attributable to such outgoing partner, that much portion of the loss will get lapsed. That much portion of the loss amount, students, will get lapsed. Is that clear to all of you? That much portion of the amount of the loss will get lapsed. That is point number one. Second is section 79, students. 79 in the case of a closely held company.
Now students, so far as the closely held company is concerned, again there are two important points. What is that? Students, section 79A and 79B. 79A, what it does, students, 79A, what it does, it says that in the case of a private company or a closely held company, in the year of loss, business loss, students, by the way, these provisions is not applicable for UAD. UAD can be allowed to be carried forward, but where it impacts, the impact is on the business loss. So in the year of loss, whosoever are the shareholder, and in the subsequent year, because the loss you need to carry forward in the next year, in the subsequent year, there has to be a common shareholding pattern of more than 50% in both the years. There has to be a common shareholding pattern of more than 50% in both the years. So if there is a common shareholding pattern of more than 50% in both the years, then what we will say? We will say that the losses, will it be eligible to be set off? The losses, students, will it be eligible to be set off? And the answer is yes. But if it is not the common shareholding pattern, if it is not more than 50% in both the years, the common shareholding pattern is not more than 50% in both the years, then the business loss will get lapsed completely. Yeah? So business loss will get lapsed. But what about UAD? I told you just now, UAD doesn't have the impact. It will be allowed to be carried forward. That is the point. So this is the impact of the treatment of the loss. For a closely held company or a private company, as the case may be. Now, but students, you have to be careful on one point, and that is about the startup. For startup students, they have given one more added condition. And for a startup, now they need to satisfy one of the two conditions. And if the startup can satisfy one of the two conditions, then that startup will be eligible for, students will be eligible for what? Eligible for the set off of the losses. Now, what is that particular condition? Be careful, students, on now in this case. So for the startup students, in this regard, the condition is this. Be careful. First condition is the same condition. That is to say, that is, if the startup, which is a private company or a closely held company, if they want to set off the losses, then the common shareholding pattern in the year of loss and in the subsequent year should be more than 50%. But even if they don't satisfy this condition, still they would be eligible for the set off if what? If the existing shareholder, means the shareholder in the year of loss, whosoever were there, if they continue to hold the same number of shares, in the subsequent year, then the startup company will be allowed to carry forward their losses. So what may happen, students, is that in the subsequent year, the startup company may increase their authorized share capital, and they will issue new shares to the new shareholders in such a way that the percentage of the shareholding of the existing shareholder, may go below 50%. It may go below 50%, but do they continue to hold the same number of shares? Answer is yes. So for the startup company, they will be eligible for the set off in this particular case. So if they don't satisfy that more than 50% condition of both the years, still they would be eligible for the purpose of set off if they satisfy the condition through this particular route. Is that clear, students, in this regard? That is what, students, we have done up till the set off part. So students, now tomorrow, as I told you, we will be doing non-resident transfer pricing. Apart from that, trust taxation, TDS, TCS, equalization, levy, these are the topics that we are going to touch upon. And then even the partnership assessment, MAT, alternate tax regime quickly, dividend taxation, all the key points quickly we are going to run through them, and we are going to finish them one by one, students, so that with the practical, these are all the practical aspects, so that you don't have to worry about anything on that. You don't have to worry, students, anything on that one. Fine, students. So this is what would be the coverage. And finally, thereafter, on the day after tomorrow morning session, students, I'm going to do the assessment procedure, and the this one. Day after tomorrow morning session would be around 8 or 9 o'clock.
I'll be doing assessment procedure penalties. And that way we are going to finish it off so that you people can revise your whole syllabus at peace. Fine, students. With that now, I'll see you then tomorrow. Tomorrow live I'm going to do again. I'm repeating at 12 o'clock. Although you will be having your elective paper, don't worry. You can see it in the evening. Those who have got exemption in elective paper, they can watch live tomorrow in the afternoon at 12. All the best, students, to all of you. For those who are appearing for elective paper, I'll see you then, students. Take care.